Good morning and Jai Hind, and welcome back to day 2 of TEDxYouth at SunbeamBhagwanpur. 28 speakers from 5 different countries, over 2,000 registrations as of now, and over 20,000 people who have watched our event on some platform or the other. Today we're going to do 14 more speakers, as well as interludes by the stand-up comedian Manraj Singh and the Bharatnatyam exponent Urvashi Mohinani. Before we begin though, just a bit of housekeeping out of the way. If you want our event schedule at any point of time, go to our website. It is bit.ly/TEDxSunbeam, TEDx, Sunbeam spelled the usual way. Or if you want to ask when a specific speaker comes up, we have that option too. Go to the chat and ask there. Your questions will not be publicly visible, but they will be visible to our tech team and they'll get back to you in a matter of minutes. People watching on YouTube or Facebook, if you open the live discussion and type out a question, our tech team will get back to you typically within a minute. Chat is for technical and logistical inquiries. If you go down to the chat and open it up and write out a question, our tech team will respond to you and resolve your question. And Q&A is for when you want to ask a speaker a question that you want them to answer after their talk. If you have read the brochure, you know that we have extended Q&A scheduled with only one speaker today, who is Kalpit Veerwal, but we'll try to take questions for as many speakers as possible. During the talk, therefore, you should write questions in the Q&A bar. This is for the Zoom attendees. For YouTube and Facebook viewers, if you have a question that you'd like to ask a speaker, write that in the live discussion, and that question will be forwarded to the MCs. All right, that is all we have for that is all the housekeeping I can think of for now. Let us start right ahead with the day. We have our first speaker, Professor Brian Kaplan here. Professor, I'll just read out an intro and we can jump right into your talk. A specter is haunting the housing market, the specter of regulation. The metropolises of India, Mumbai, Delhi, Kolkata, have sky-high rents on one hand and sprawling slums on the other. Why is there such great inequality in what people residing within the same city borders call their homes? Our first speaker for the day, Professor Brian Kaplan, has an answer. A professor of economics at the George Mason University in the US. He's a New York Times bestselling author, a prolific blogger, but above all, a jovially nerdy man who's unafraid to state the controversial. Professor Kaplan, let us test your mic and see if you can screen share, and then we can start with your talk. All right, can you hear me, India? Yes, we can. All right, excellent. All right, yes, so I am Brian Kaplan, and I'm here to talk to you guys about the book in progress. So I've previously written a bunch of normal books, but I also more recently had a nonfiction graphic novel on the science and ethics of immigration called Open Borders. And that was my New York Times bestseller. So I wanted to go and try another book along the same lines. So this is the book in progress. Let me share the screen with you. Yes, right here. All right, yes. So this is my book in progress, Build Baby Build, the Science and Ethics of Housing. So let me just go right into it. So starting, what's wrong with the housing market? Now, in this book, I largely talk about the US market, but surprisingly, most of what I say has works very well for India too, because even though your per capita GDP is much lower than the US, you still have a pile of crazy housing regulation, which is really holding you back. All right, so just to think about the US, so over the last 50 years, US housing prices increased a lot more than inflation, especially in the most desirable parts of the country. So the areas of the US that you have heard of, like San Francisco, New York, they are much more expensive than they were 50 years ago. Now, supply and demand is the obvious story. I hope you've heard of supply and demand. So if you take a look at the areas with really expensive housing, you say, well, demand is high, supply is low. Not wrong, but it's very misleading just to say supply and demand, because it suggests the problem comes from natural scarcity. But there's a large body of research that very convincingly shows this is not the case, and I think it's very likely the case for India as well. Housing prices have drastically decreased a lot because regulation artificially constricts supply, strangling supply. All right, so just a quick tour of housing regulations. Over on the right, this is my artist's version of an aerial photograph of San Francisco, but it's very accurate. So San Francisco is a peninsula, right? And if you live there, they may say, well, there's just no room to build more.
till you look at the map and you say, wait a second, we only have skyscrapers on about 5% of the land, and the rest just has small 2- and 3-story houses. What's going on? And the answer is quite simple. It is almost impossible to get legal permission to build another skyscraper in San Francisco. There's about a 15-year period where we built 0, and now we build about 1 more a year. All right. So when you say that supply is low, well, we have the technology to build very tall buildings in desirable locations. And if that were allowed, then actually it's quite possible people could live very cheaply in the most desirable places because supply would expand so much that almost anyone can get it at a reasonable price. Some other regulations, some multifamily restrictions. So at least in the United States, a large majority of residential land is set aside for single family homes only, which means you cannot build apartments, townhomes, duplexes. All of these things are illegal on most residential land in the United States. Then we have another set of laws on minimum lot size. It is common to require builders to waste most of their land. All right, so let's see. You guys might not be familiar with acres. You guys wouldn't know acres, right? Do you know acres? It's like hectares. So anyway, it is very common to require people in the United States to use an enormous amount of land per house. And my understanding is this is a very strict regulation in India as well, where your basic regulation is that you can build only 2 stories in all your land. If you want to build higher, you have to waste proportionately more land. Minimum parking requirements, also common to require builders to build free parking for a large number of spaces, most of which will not be used, and much more. All right, so how much does regulation raise prices? Well, here's what's neat is we can go back to about 100 years and see how housing markets used to work. When regulation was looser, it was common for housing prices to go up and then go down. And sometimes they would go up and then they would go down. Over the long run, housing prices were very flat until the 1970s. That is when the regulations started to be very tight, squeezing in, binding, right? So now housing prices are about double what we could call the break-even level. This is the level that pays just for the land and for the construction costs, and much higher in desirable locations. So how do we know any of this? How do we know? All right, well, so standard method is to look at similar homes with slightly different amounts of land, then use this to measure the value, the pure value of land where you don't have permission to build, it's just a piece of land. Then you can combine this with standard measures of construction costs to see how much homes physically cost to make. And then we can take a look at the difference between the actual physical costs and the price. And then we can see what's going on. All right. Now, quick version is this. Let's see. So I think I will skip over some of this. But key point is that people spend a lot more on housing than on, say, gasoline. So when you double the cost of housing, this has very large negative effects on living standards, right? So, rough estimate, without regulation in the United States, cost of living would be about 10% lower overall, implying 11% higher living standards. And very plausibly, this would be a bigger gain in India. All right. Now, I do have a chapter in my book called The Panacea Policy. You guys are familiar with the word panacea? So you can nod, yes. Yes, you've heard panacea. It is panacea is a cure-all. It's a medicine that fixes all problems. And as you know, there are in the real world no true panaceas. And if someone says, I have a panacea, they are trying to take your money and rip you off. It says, but housing deregulation is as close as it gets in the real world to a panacea policy, a policy that simultaneously mitigates and alleviates a large number of social problems. So some of the main benefits of deregulation look forward to, besides just lowering the cost of living. Deregulation will reduce inequality. So right now we have a large amount of real estate that is where the price has been driven up very high, generally owned by very wealthy people, right? And if we would deregulate, housing prices would come down. And of course, it is also true that people that own are usually richer than those who rent, and people that currently own large homes are richer than those that have small homes. So it is very reasonable to think this would sharply reduce inequality if you could just build a lot more housing. Also improving social mobility. So at least in the United States, it used to be very common for people to
get a better job and to raise their living standard by just moving from a poor part of the United States to a rich part, from moving from, say, Mississippi, very poor part of the United States, to New York City, much richer part. This no longer works because housing cost eats up more than the entire gain that you would get in pay. Right. So basically, you have to be a very high skilled worker before you can expect a profit from migrating. Deregulation would once again restore this benefit. I know in India, you've had a lot of migration from rural to urban areas. But again, you have this large increase in the price of housing that you're going to be paying in urban areas versus rural areas. And again, so much of this is just because it is so illegal to build more stuff. So some other ones that that we talk about, or I talk about, poor prospects for working class males, low birth rates. So not such a problem in India, although your birth rate is declining very rapidly. But in the US, it is very common for people who live in areas with high housing costs to not want to have a lot of kids, and it's pretty obvious why. There's also research on the effect on crime of just letting people build where vacant lots are, because vacant lots are very standardly places where crime builds up. Now, by the way, I do want to go and mention a great story, true story of housing regulation in India. My friend Alex Tabarrok blogged this. So there is a building in India where every few years it gets torn down by order of the government. And then they immediately rebuild it. What's going on? Well, they can't get legal permission to build, but it's very valuable land. And so it actually pays to just build it illegally, rent it out, and then fight out the case in court for as long as you possibly can, knowing you will inevitably lose. But if you can just delay it in court for a few years, you can make back all the money. And then the court will finally make you demolish the building. And then you build it again. Right. And this in a country where I am sure all of you have seen people sleeping on the streets. You've seen homelessness, and to have a country like that where there are judges telling you to knock down houses is so crazy. And yet this is the world that we live in. All right. So why not? Why not? All right. So basic story is that housing regulation has broad support because people think that life would be much worse without it. It is not the case. This is regulation that's just put in by a few people. It does address a lot of complaints that people have, right? And what kinds of complaints? So at least in the United States, people complain about traffic. If we build more stuff, there's going to be more traffic. Parking. Where will we park if we build more stuff? The environment. We don't want to go and ruin the environment by building stuff. We have to preserve the character of the neighborhood. These are wonderful historic buildings. Preventing conflicting uses. We don't want to let someone build a pig farm next to a rich neighborhood. Right now, key rebuttals to all this. First big one, and yeah, this matters a lot for India. Gratis is not great. Gratis is not great. The fundamental reason why you have terrible traffic jams in your big cities is because it is free to drive during peak times. And this is a terrible idea. Right, just raising the price a little bit will clear things out and allow people to actually get the benefit of being able to travel on the roads. Right. Of course, it also provides money for building new roads, but the main thing is that what good does it do to have a road if you can't actually drive on it because it is that crowded? And yet in the United States, just like in almost every other country, we have such a deep aversion to charging people anything for using highly congested goods. Right. And then instead of actually addressing the problem of crowded roads or parking, people try to prevent people from building housing, which is very remotely related to the problem. Secondly, in terms of the environment, letting people live in temperate cities is actually green. So California has very strict regulation, very high housing prices as a result. And the consequence of that is that people are moving away from California to areas of the country where there are higher energy costs, because the houses are affordable. It would be far better for the environment if California allowed enormous amounts of building so that people would live in areas where energy costs are reduced. Right. And finally, market forces lead to a natural separation of uses. All right. How much time? So let me just check how much time I've got left. All right. Yeah, I've got 3 minutes. So great. All right. So, all right. Yes. All right. All right. So why not? All right, so what's going on? All right, so really, why not? All right, most economists will just say, well, it's obvious. Everyone's just trying to protect their property values, and most Americans own a home, so naturally, they want everything to stay expensive.
All right. This story, there's something to it, but it's greatly oversold. How so? Well, look, if this were really the reason why we had this regulation, then people would happily allow development if existing owners just got a property tax discount and the new owners paid extra property taxes. You could make a deal. You would say, hey, look, I want permission to build. How about we cut your property taxes? I will pay the taxes, and then we can build. Okay, great. Can we please? Yes, let's go. All right. So, in general, if it is just a matter of self-interest, then you go to the person and say, here's a bag of money. And maybe they say, I want 2 bags of money, but they don't just say, no, impossible. And yet the way regulation usually works is no, impossible. Again, think about that building they keep knocking over in India. Wouldn't it be far better if you could just go to the government and say, look, here is $1 million, or whatever the rupee equivalent of $1 million is? I don't know. But just go and say, here's $1 million. Now give me the paper that says I can build it and I never have to knock it down again. But the system does not work that way. It is so stubborn, so unreasonable. All right, furthermore, it is very common that owners want to upgrade or who want their children to live nearby. Regulations are bad for them. Also, we actually have good public opinion data in the US showing that renters support regulation too. Sorry, I think I have 2 minutes left. Is that okay? Yes, okay, yes, Professor. Please go on. Yes. All right, so alternate stories. What's really going on? So I think this has very little to do with economic self-interest and a great deal to do with irrational voting and irrational voter psychology. So my story. So first of all, status quo bias. People just think the way the world is fine the way it is, and that to change things is going to make things worse, even though we have immense evidence that the world improves over time. Right? I'm guessing even in India, there are people saying, oh, things were better 10 years ago. Right? Or like better before COVID's true, but better 10 years ago or 20 years ago or 30 years ago. Right? And it's like, no, they weren't. Things were much worse then. But there are people who will just look and find any little thing that has gotten worse and freak out about it. It's true here, and it is so embedded in human nature. It's something you've got to fight against. Right? Another big one, economic illiteracy, just denial of the most basic ideas of economics, like increasing supply reduces price. I've had people say, look, that's just wishful thinking. No, it's not. If you build 10 times as much housing, there's no way you're going to sell that without cutting the price, obviously. If you want to sell more lemonade, you have to cut the price of lemonade. If you want to sell more naan, you must cut the price of naan. It's obvious, it is undeniable, and yet people will sit there saying, no, oh, I don't believe it. Like, we'll believe it, it's true. All right, furthermore, so a general problem of innumeracy. So if you just think, what is $1 trillion minus $1 billion approximately? The approximate value of a trillion minus a billion. And the correct answer, of course, is approximately a trillion. Taking away a billion from a trillion barely does anything. Yet when people talk about housing deregulation, they'll often say, well, yeah, on the one hand, price of housing falls 50%, but I've got 10 problems. So yes, but those are 10 small problems. So they could all be true and this would still be a great idea. And yet in a debate, if one person has one argument in favor that's worth a trillion and the other person has 10 arguments worth $1 billion each, the person who has those 10 small arguments wins the debate because he went on for a longer time and inflamed people's emotions more. And then a last one, paranoia. It's the tendency to just think the absolute worst case scenario is going to happen. Say, look, maybe they'll build a skyscraper and will collapse and destroy, 100,000 people will die. I guess it's possible, but it's highly unlikely, and it does not make sense to base policy upon these extremely fanciful worries. All right, so that's what I've got. I wish that we had time for questions, but my understanding it doesn't work with the format. So I am trying to get these books especially translated into as many languages as I can. So far for my Open Borders, which, by the way, I've got the cover on my t-shirt here. Yes, Open Borders, the Science and Ethics of Immigration. So I'm still hoping to get that translated into as many South Indian languages or South Asian languages as I possibly can. So if you know anyone who wants to, great. And if you know anyone who wants to do South Asian languages for Build Baby Build, that's great too. All right, so goodbye, India. Thanks for your time, and looking forward to a great future for India full of skyscrapers
and no and an end to knocking down perfectly good homes because a judge says that the law is the law. Goodbye. Thank you so much, Professor Kaplan, for the delightful and informative talk. Now, we understand that you have a blog too. So if you'd like to plug that for all of our listeners from India. Sure. So I blog for Econ Log. And also, if you just Google my last name, Kaplan, for the last time I checked, I was still the #1 Kaplan with a C in the world. Good going. Yep. There's an actress, Lizzie Kaplan, who's kind of #2, but I've managed to keep her in that #2 slot. So let's see if we can keep that happening. Yeah. All right. I sure hope so. Thank you so much, Professor Kaplan, for your time. Yeah. Our next speaker for the day, then, ladies and gentlemen, after that delightful talk, is a theoretical physicist from Stanford. After gaining All India Rank 1 in the IIT JEE 2006, he went to IIT Bombay to study computer science, but found his calling instead in physics and migrated to MIT. His other passion is social impact, be it building cheap composting toilets for people in Africa or working with a political party to draft its election manifesto. Today, this brilliant physicist changemaker will reveal how a mystery at the heart of our understanding of physics reveals important details about politics and rationality. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to welcome Dr. Raghu Mahajan, who is joining us all the way from Stanford. Dr. Mahajan, if you could switch on your video and they will spotlight you. Yeah, can you see my video and can you hear me? Yes, Dr. Mahajan. Are you planning to screen share? Yeah, let's try. Sorry, 1 second. It needs. It's asking me to quit for a bit before it can allow me to share. So just give me a minute. I'll be right back. All right. Now, a bit of housekeeping until Dr. Mahajan joins us back, which is that Dr. Mahajan will take questions in the middle because his talk is about physics. And if you have a technical question, this is a physicist at your disposal to answer them about the contents of the talk, you should put them in the Q&A for our Zoom viewers. And for people watching on YouTube and Facebook, you should put them in the description. So between the talk, he will answer your questions if you have any. And then he'll power right ahead until the end. And if we have time left at the end for questions, we'll take those too. Now let us wait. Can you see my screen now? Yes. Okay, and do you still see the full screen? Yes, we do. Okay, great. Hi, I'm going to talk to you about a physics puzzle, and my name is Raghu. I'm a theoretical physicist at Stanford. I grew up in Chandigarh. My family is Punjabi. I did my high school in Chandigarh, but I was in IIT Delhi actually for 2 years, not IIT Bombay, just for the record. But anyway, now I'm at Stanford. I do physics. That's my passion. And yeah, today I'm going to tell you something about how just even high school physics can teach us about rationality and keeping our heads straight in this world full of information and crazy information overload. Okay, so the Constitution of India has this Article 51A, which talks about certain fundamental duties of the citizens of India. And one of them really appeals to me. It says, "It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform." I think this message really gets to the heart of my talk, what I want to convey to you guys. So basically, the plan of my talk would be to use this example from high school physics to explain to you in a bit more detail what I think of when I think of the phrases scientific temper and the spirit of inquiry. Okay, so let's just get right into it. Here's the solar system. So we'll talk about the solar system. There's the sun, there are the 9 planets, or the 8 planets and Pluto, and there's various objects that we won't talk about, but it's basically, we know, we've seen it in science books, and all the planets execute some circular motion about the sun. And since they are executing circular motion, including the Earth, we can ask some basic questions about the orbit. You could ask,
how big is the orbit radius of the Earth? How far, that just means how far away is the sun from the Earth? And you can ask, what's the speed? How fast does the Earth go around the sun? And let's say you know those two numbers. The orbit radius of the Earth is 150 million kilometers. Orbital speed of the Earth is 30 kilometers per second. Okay, that's one planet. Let's look at another one. Let's take Mars. Let's say I tell you what the orbit radius of Mars is, but I don't tell you how fast Mars goes. Can you figure that out? That's the question. We can, of course, measure it, but is there a physics theory that will compute it, just given these numbers? And similarly, you could ask, for example, for Jupiter. Jupiter is further out. Its orbit radius is even bigger, 780 million kilometers. What is its orbital speed? So, of course, many of you high school students who have taken physics would know how to do this, and you would know well that these have been measured also. But let me just make a few comments here. So, of course, the answer is that there's a force of gravity. The sun exerts a force of gravity on all the planets. And an important point is that almost all of the mass of the solar system is in the sun. Sun is huge. Even Jupiter, which is the largest planet, is only about 0.001 times the mass of the sun. Thus, to a first approximation, the only substantial force of gravity on any planet is just coming from the sun. You can ignore all the other planets. If you want to talk about the motion of the Earth around the sun, you can forget about Jupiter and just, might as well just focus your attention on the sun. So the sun is at the center. It exerts a force of gravity on all the planets, and which execute circular orbits around the sun. Okay, so what's the answer to the question I posed on the previous slide? Given the orbital radius of any planet, what's its orbital speed? And here's a plot. So on the x-axis of this plot is the orbit radius in millions of kilometers. And on the y-axis, there is the speed in kilometers per second. So you can see Earth goes at about 30 kilometers per second, and it's at about 150 million kilometers. And Mars is further away, and it moves slower. Jupiter is even further away, and it moves even slower. And I haven't written out the names, but these other three dots are Saturn, Uranus, and Neptune. And the two dots up here are Mercury and Venus, which are closer to the sun and consequently move faster. And there's actually a very precise relationship between the speed and the radius. It's just speed is proportional to this power of r, 1 over square root of r. And you can just go out with a telescope or whatever equipment you have, measure the speeds and distances, and you will find this precise law. Okay, and we have known all of this, and we even have a very good theory for all these facts. It was discovered, all these things were known to Newton and to people before him, but Newton really gave us the theoretical foundation of how to understand these facts. And so this stuff is 300 years old, and it's really old stuff. And the scientific theory agrees with the objective measured experimental facts, and there is no room for personal feelings. So I want to highlight that we do know a lot about the universe, like predicting, 9, 8 numbers is a big thing. I can just sit with my pen and paper, predict some number, go and measure it, and it will agree with what my theory predicted. So this was about gravity and the solar system, and I have a blank slide now to pause for questions, if there are any at this point. Doesn't look like we have any technical questions for Doctor. Okay. All right. So I will go on. And the next thing I want to consider, bigger than the solar system, is the Milky Way galaxy. So of course, our solar system sits somewhere in the Milky Way galaxy. And there I have shown you sort of, if you are looking at the Milky Way galaxy from the top, like from the North Pole, how would it look? So there's a disk of mass, of gas, of stars, like all these orange bright things are clusters of stars. We know now there's a supermassive black hole at the center of the galaxy, yada, yada, yada. It's just some collection of objects that we see here. And basically, the question I want to ask is, again, the same thing about orbital radius versus speed of various objects in the galaxy.
So just like the solar system, most of the mass in the Milky Way galaxy is concentrated at or near its center. It seems like it. And there are stars that execute circular orbits around the center. So we could just look with the telescopes at various objects in the Milky Way and study their speed radius curve, plot the radius on the x-axis, speed on the y-axis, and see how it behaves. And if we understood things in the solar system correctly, we should see that when we go very far out from any visible matter in the Milky Way, the speed should go down. The speed of objects far away should be smaller. Like we saw in that plot, the speed of Jupiter is smaller than the speed of the Earth, and so on. Okay, so we predict something from our theory, but now let's go and see what the data tells us when we actually go and measure it. And surprise, look at the far right region of this plot. It's the same plot. The x-axis is distance. Now it's not millions of kilometers, but light years, and it's tens of thousands of light years. And on the y-axis, I still have velocity in kilometers per second. Look at this far right area. The gray line is what we would expect, the speed to decrease as we go far and far away. Whereas these blue dots are the actual data. When you do the experiment, you put a telescope in the sky and measure it. The speed is getting higher and higher and higher. That's completely the opposite of what we expected from Newton's theory of gravity. So did we get it right? I mean, we think we understood this 300 years ago. What's going on? It's really a puzzle, and we don't know. So the theory is not agreeing with the facts, and we seem to be in a soup. What are the options? Like, when you're confronted with a puzzle like this, you can say, Newton's theory of gravitation is maybe wrong, or maybe the Newton's laws of motion are wrong. But they're probably not wrong because they work in like 99 other problems. Like, why did they work for the 9 planets in the solar system? Right? If it is wrong, then it should be wrong everywhere. And if it's right, it should be right everywhere. Another thing that you might say is that, gravity works the same way for maybe apples falling on Newton's head, moon going around the Earth, and the Earth going around the sun. But maybe when you get to big enough scales, it stops working somehow. Like that Newton's law of gravitation is not inverse square, but inverse cubed or something like that. But then you can ask, where exactly is the boundary where it breaks down? So neither of these options seem very, very convincing. And I'm going to just tell you that today, what scientists believe the simplest explanation is simply the fact that not all the mass of the Milky Way galaxy is concentrated near its center. So it's not like the solar system. It's not like the sun, that the sun has all the mass of the solar system. It's in the center, and we see some decrease of the speed as we go further and further up. Rather, and this is the key point, there is lots of mass distributed out in a spherical fashion. You start at the center and you distribute mass spherically outwards up to very, very large distances, as far away as you were seeing the velocity increase in that curve. And this extra mass is responsible for the extra force of gravity that you need to give these objects the higher speeds that they have. So this is the most likely explanation. But we don't see this extra mass. Like you say, okay, if you say there is an extra mass, then I should be able to detect it somehow, see it. However, this extra mass does not emit or absorb any light. That's why we call it dark matter. Dark matter is just a name. It's the most likely explanation that is some matter out there which exerts a force of gravity, but not electricity or magnetism, because light is electromagnetic waves. So, and dark matter cannot be made of electrons, protons, or neutrons, the stuff that we are made of. Like I'm made of electrons, protons, and neutrons, because these particles have charge. The neutron has charged quarks inside it, and these charged particles emit and absorb light, and that's how we see each other. But this dark matter just does not interact with light at all. It does not emit or absorb light. And the only force it sees is the force of gravity. Okay, and essentially the only thing we know about dark matter
is that it makes up about 26% of the energy in the universe. And that's pretty much it. So we're pretty ignorant about this stuff. I just want to emphasize that this is an old puzzle. This puzzle goes back to the 1930s. The speed radius curve was first talked about in the 1930s. The data has been refined since then, but it's been almost 100 years. And no one has any clue what dark matter is made of even today. And that's how science is. It might take you a century or more even to figure out the right answer to certain problems. It's really fundamental. It's 26% of the universe, and we don't know what it is. And we would really like an explanation. And several smart people have spent their whole lives trying to solve this puzzle, and just there's no luck. And that's life. Okay, so this is also a good point to stop for questions. Dr. Mahajan, there's an interesting question in the chat, which is that why asteroids move in circle around Mars? I think we can extend this to why do planets move in circles at all? Right. So they move in circles because that's what when you solve the equations, Newton's law of gravity with the Newton's law of motion, that's what you get. Actually, they're not circles, they're ellipses. So it's like a slightly deformed circle, but you can quantify how different an ellipse is from a circle. And all the orbits of the planets in the solar system are ellipses. So the Earth is actually not a circle, but for the purposes of this talk, I simplified it. It's almost a circle. So, but you can just mathematically, given the Newton's law of gravity and the Newton's law of motion, just solve for the fact that when a light object like the Earth goes in an orbit around a heavy object like the sun, the Earth will move in an ellipse. Actually, it's more interesting. It depends on the energy. Like a comet, which doesn't do an orbit like a round orbit, just comes in and goes out. Like it is very fast, comes in, goes out. That will follow a curve called the hyperbola, not an ellipse, because that's like an unbounded orbit. So there are three types of orbits depending on the energy. But anything which sort of stays close to the Earth makes a round orbit, like closed and goes back and forth, will be an ellipse. I'm actually, to pick up a question, it says, why is dark matter so hard to find? And I want to emphasize that it's hard to find precisely because it does not emit or absorb light. Hi, I think I lost people. Are people still there? Yes, but we can't see your screen share now. Okay, the chat went away. Sorry, hold on. Right, so I wanted to answer that question in the chat, which said, why is dark matter so hard to see? And it's hard to see because it does not emit or absorb light. Almost anything we see in the universe, except the recent gravitational waves that have been detected, is through light. Light, I mean visible light, infrared light, X-rays, UV rays, gamma rays. It's mostly light. And this dark matter, that's why it's called dark, does not emit or absorb any light. So you can't point a telescope in the sky and hope that there is some light that this dark matter is emitting that your telescope will capture. And that is just doesn't interact with anything, with any other force except the force of gravity. And gravity is a very weak force. I mean, to give you an idea of how weak the force of gravity is, the entire Earth is huge. 6 times 10 to the 24 kilograms is pulling down on you. It's trying to crush you. But just the electromagnetic forces between your chair and the seat of your pants is enough to, prop you up. Like the normal reaction force, it's between two small objects, the chair and yourself, is enough to counteract the gravitational pull of the whole Earth. Because gravitational forces are so weak, it's hard to have a detection of dark matter, but we can feel its effects through the kind of curve that I described. Okay, I think I would like to move on and just conclude with a few general lessons. And this is the part where I connect this to society. And I just want to say that the universe and the world around us is complicated and subtle.
Human beings are complicated creatures, and human societies are even more complex constructs. Science teaches us to be humble and patient. We looked at this example. For 100 years, we don't understand something as basic as what our universe is made up of. And so in our hunger of trying to find explanations for things that happen in the natural world or in human society, we should not rush to conclusions. And this is the main point, that one of the main points I want to emphasize, that it takes time to understand things right. And I think that this lesson is extremely relevant to a society that is hooked to social media and seeks very quick gratification and rewards. The second general lesson is that religion and God are some human constructs that offer us some quick fix, dogmatic answers to some of the hardest and the most troubling questions about the universe and human life and death. Why are we here? What's the purpose of human life? And so on and so forth. But I feel that clinging to a dogmatic answer is exactly the opposite of what a scientific temper and the spirit of inquiry means. So a person who possesses a scientific temper and the spirit of inquiry, when they're confronted with something they don't understand, they say something like this: I don't understand this phenomena or anything that happened around me in society or in nature. Perhaps such and such is a candidate explanation, but it's definitely not the complete answer. And if I'm interested in that problem to pursue it further, I will continue to try to find an answer that is both logically consistent internally and it is consistent with all the known facts. Like, that is the rational scientific temper and the spirit of inquiry kind of approach. And we see it in the example I presented to you. The solar system, something looks like some pieces of rock orbiting some huge chunk of gas, the sun, and we understand there's speed orbit curve. You can even compute more precise things and stuff like that. But when you go to the next level, to the galaxy, you suddenly are faced with this monstrosity of dark matter. Anyway, so I will leave you guys with this fundamental duty from the Constitution of India once again. It shall be the duty of every citizen of India, and I think every citizen of the world, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Thank you very much for having me. Thank you very much, Dr. Mahajan, for that wonderful talk. This generated a lot of questions, both from YouTube and Facebook and the Q&A, and we're delighted that you could answer some of them. Thank you very much again for giving us your time. Our next... do you have some time now for more questions, or is it time up? It's time out, Dr. Mahajan, unfortunately. All right. Thank you very much. We would invite you to join the audience, and thank you very much again. Okay. All right. See you. Bye. Dr. Anamika is one of the most brilliant bilingual talents writing in India today. She teaches English literature at the University of Delhi and has won what is probably the highest literary honor in the country, the Sahitya Akademi Award, for her Hindi poetry. In addition, she's one of the most powerful feminist voices in India, having written a trilogy on the sideline characters in the women's rights movement in India. We'll get to her talk in a short while, but first, I would invite Pratima ma'am, our Assistant Director, to moderate a short pre-talk chat with the dignitaries. Over to you, ma'am. Thank you, Ishan. Anamika ji, thank you so much for being here with us. It is wonderful to have you with us today. And right from the moment when you said yes, that you would be wanting to be a part of the TEDx Youth Talks at Bhagwanpur, I have been for one rooting for you and your talk, because having read some of your poetry, you know, you have a huge fan in me. May I take this honor and privilege to introduce you to our director, Mrs. Bharti Madhuk. Bharti ma'am is also an ardent advocate of feminism, and with 2 women's colleges under her belt, she is someone who feels that people like you definitely are meant to be heard. Ma'am. Thank you, Pratima. You have set the tone, and a very, very warm welcome to Dr. Anamika. And ma'am, yes,
what I've been reading about you and I'm told about you through Pratima ma'am is like you have done so much work for not only giving a decent place to the ladies, women in the society's mind, but their own mind also. The most important thing which all of us we are dealing with is the self-esteem of women. And most of us, most of the women, we suffer from hi main bichari. So I'm sure that the kind of work you have done to take the women out only when they believe in themselves that they will be able to perform. So thank you so much. And I'm sure my college girls, because they are of that age, they are 20 years and they are setting the tone of rest of their life. So when they will listen to you, I'm sure they will have a clearer picture from what they exactly want from their life. With these words, I would like to thank you for sparing your valuable time. And I hope that, whatever you will be speaking in next 18 minutes will change the course of the way we women think. Thank you, ma'am. Thank you once again. Ma'am, if you could please unmute yourself. Thank you so very much for making me a part of the great art of underlining the magic of responsible music of magic of art. And how does this magic work? It works through so many channels. You understand that? Through cinema, through architecture, through music, painting. In poetry, it works through words. Interesting linguistic puzzles that shake you up and work at the level of consciousness. Linguistic subconscious is something that we are dealing with today. I've been asked to speak on behalf of women poets and talk a bit about women's poetry all the world over. So, especially in the conflict zones, how the rocks that hands that rock the cattle are now rocking the world of poetry by fighting what Madam just said, the good girl syndrome, the poor Lisa complex, all kinds of things that we've been burdened with all these centuries. Now, Anamika-ji, I'll just hand you, Anamika-ji, I'm just going to hand you over to Ishan and then we will start the formal talks. Okay. Actually starts then. Okay. Thank you so much once again for being with us today. And Ishan, without further ado, I think you should give ma'am the stage and let's get to it. Absolutely. We should not waste any more time. Dr. Anamika, please go ahead with with your talk. Yes. Should I start then? Thank you so much. Thank you so much for this great opportunity of joining hands with you in underlining the magic of poetry in the women's world. So you know already that all the world over, especially in conflict zones like Sub-Sahara region, the Arab world, Latin America, and Southeast Asia, women are playing the great role of initiating the art of mothering the earth in a world which is crumbling under the pressure of hyper-masculinity, war, and terror. Women are the ones who are working through silent language games, working magic on your linguistic subconscious and trying to initiate the samyak drishti and the sthita pragyata part of being, the equipoise that we've been talking about, or in most of the civilizations, especially in India, but elsewhere also.
So this whole art of curbing down the hyper masculinity of war and terror, grabbing the lion's share in whatever resources are there with us, and also the hyper femininity. I mean, this is also very important. Neither do we want hyper masculine macho men, nor do we want hyper feminine Barbie dolls, on some kind of a spiritual dieting all the time, somebody who's still on the staple diet of poor Lisa complex, somebody who is still bogged down by the good girl syndrome. They are all trying their best to ignite the balance, the equipoise in you. You remember the story in the Mundo Upanishad, where two birds are sitting on the same branch. One is eating the fruit of karma, and the other one is just observing it. With the kind of equipoise that should rule the world today, curbing of instincts, curbing of excesses is something that poetry advocates, especially women's poetry. I've been asked to give you a perspective of what is happening, especially in the conflict zones, in the world of poetry, by reading out some of my own poems and then talking a bit about the techniques of the curbing down of excesses that is the seed word, not only in poetics, but also in ethics and aesthetics. This is very interesting to observe that, the ruling principle of not only poetics, but also of aesthetics and ethics is equipoise. I'll take the example of hinsa, violence. It's both aesthetically frustrating and ethically frustrating. And poetics, the other person, who spoke prior to me was talking about the galaxy. He was talking about the orbit. So there is a kind of orbit in poetry, in the nebulous of poetry, where aesthetics and ethics join hand and work, sing and dance like nine planets in some kind of an equipoise, kicked out of the womb of security. These women from different classes, different castes, different races have just one thing to say. Even men can have a mothering instinct, and this is the time to curb the hypermasculinity and evoke the mother in you. Be a mother to the earth. Now, I'll just take a break of some 7 minutes or so to read out something from my own work. And then I'll take you to other voices in other regions, how they have joined hands, and their hands that rocked your cradle once are now rocking the world of poetry also and awakening the best in you. Now, through intelligent language games and through humor, that's very important. No sob stories now. Humor is, we believe in egalitarian ethics, and humor is a great leveler. So we are trying our best to awaken the ideal man, the Manchita Purush in you, by appealing to your sense of humor. And how does humor work? The physicist was talking, so I've just struck me that, in humor, some kind of a mild electric shock is generated by connecting the opposite wires, the personal and the political, the cosmic and the commonplace, the sacred and the profane. A good poem is a poem that reflects the
ethical concern in its aesthetic structure, the style. So what is the ethical concern? Egalitarian world. So what is the aesthetic structure of a poem? Snap down the hierarchy between the commonplace and the cosmic, the political and the personal, the rich and the poor, etc., etc. And gender, and to curb down gender biases. All kinds of biases, I must tell you, are some kind of a cataract. If you have aging grandparents at home, you would know what a cataract is. It blocks your vision. It blocks the vision not only of aging people, but also of aging civilization. It creates a fog. It doesn't let you see. In the Bible, we have a line, seeing they don't see, hearing they don't hear. So if a cataract of bias is formed, stereotypical responses form against class, against caste, against gender, against a race, then, not only is your vision is blocked, but it's also distorted. Like a laser beam, women's poetry is trying to dissolve this cataract of stereotypes and biases. See for yourself how it plays through humor and makes you sit up by generating this mild electric shock of defamiliarization. So the first poem that I've chosen is called Darwaza, and I'll be very particular about reading it in my mother tongue, because I'm talking of the mothering of the earth, and mother tongues are a part of the evening. So, मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया, मैं उतना खुलती गई. अंदर आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र. चक्की चलती है तो चरखा रुकता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई. गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू. तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर. The second poem is called नमक. नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी. धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़. कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी टूट जाता है, बढ़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर. वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक. जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक. जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर. दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर. गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी. दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक. ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया. And I'm here in a network which has many schools and colleges. So there is a point that I've picked up from one of the school lessons, and it's called बेजगह. अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून.
अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है वैसे, यह देख सीखा था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंस कर बाहर आए केशों से एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे। छूटती गई जगहें परंपरा से छूटकर अब यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूं। चाहती नहीं लेकिन करने बैठे कोई इनकी मेरी व्याख्या सप्रसंग। मुश्किल सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर मैं पहुंची हूं। ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। एंड द लास्ट वन is called एक औरत का पहला राजकीय प्रवास. This also is humor in a subtle way. It titillates you. वह होटल के कमरे में दाखिल हुई अपने अकेलेपन से। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, घुप अंधेरा था कुएं का उसके भीतर भी। सारी दीवारें टटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाजा। बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेहरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी, बाहर खड़े ही खड़े दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्र दल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डंलप पर लेटी, चटाई चुभी, घर की अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी ऊपर भी उसको चुभ जाता है कोई मटर दाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतरराष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। ये IST वाले दिन थे। फिर अपने सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँग गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां
अलग अलग उसने कहीं ऑफिस में खिन्न बैठ अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी मां से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने तीन तीन लोगों से कैसे ये कहा, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। ये तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं किया, नहीं कहा। So this is something, this is just a starter, my dear people. I mean, the main crores of women's poetry you can have even on YouTube. It's just a click away. I'll just give you some names. Note down: Rafiq Zaidi, Zaida, Niami, Shiraf. They are both from Palestine, and whatever is Palestine going through is evident. Now, Maya Angelou and Amanda Gorman, they are from Africa and Sub-Sahara region. Again, a land, dark land of oppression, colonial oppression and oppressions of all kinds, negritude and whatever. Then come to Latin America. There we have Joy Harno, a native Indian poet. Come to Iran, we have Farozad. All these conflict zones are generating beautiful women's poetry because, you know, there is a very, very important relationship between suffering and creation. Your mother also would not have given birth to you without killing kind of a labor pain. So whenever something is born, the ground actually swells with pain, it cracks with pain, and political suffering of all kinds have generated the best of poetry also in South Asia. I mean, if I go on taking name, it will be too much. So I'm just directing to you a few links. Just go to them and see for them, for yourself, how this jhapti, this juxtaposition of opposites is built, generating the kind of humor that will make you sit up and look within, because the answer to most of the questions lies in the twilight zone of your own being. And two things it's trying to do. It's trying to minimize, if not do away with, the politics of might is right. The politics of grabbing the maximum for only by the dominant forces. And the second level is cracking the biases, breaking the stereotypes. Now, what do these translate into? This basically translate, I mean, your life is a rough draft. It's like a, you know, identity also, like history, culture is like Suleiman's document, an old Bhojapatra, cracked all over, brittle. There is something written on it, scribbled on it, but you have to redo the text, just the rough draft of your being. This is this life you've been granted to fare out, the way you fare out your homework, what is given, what your classwork. You make a fair copy of the draft. Everything is fluid in the world. Nothing has come to stay, and nothing has been nailed forever. So you can write your own life again, write your identity again, write lives not only for your own self, but the people around you. That's very important. In Indian philosophy, we have this concept of chitta vistar, widening the horizon of consciousness. This is what poetry helps you do.
So if you could rewrite yourself and translate this world of hyper masculine and hyper feminine imbalance and this world of sick hurry and divided aims into a world more green and serene, you will have a real, poetry pulsating through every object around you. The way there are seeds of Buddhahood and Devatva in all of us, there are seeds of poetry in all of us. You all are a potential poet. So work, learn a few techniques, and the rough draft of life is already there. You have to just learn to make a fair copy of whatever has been given, and you can see the change. I mean, all the best for a very poetic kind of a life, for bringing out the mother in you. I really wish you well and pray to the universe to generate in you the eyes of a mother. Even when, my boys, you are capable of, getting on to that mother self. Bye. Thank you very much, ma'am, for that lovely talk. It was a delight to have you here, and we look forward to hosting you in person sometime next year, probably. Thank you very much again for your time. Our next speaker today is Kalpit Veerwal. He has been an extraordinary student throughout his life. He has aced the NTSC, the KVPY, International Olympiads, but most notable of all, at the age of 17, he achieved All India Rank 1 in the JEE 2017 mains among 1.2 million students, and is the only person in history to hit the full score of 360 on 360, a feat that is registered in the Limca Book of World Records. He holds a BTech in computer science from IIT Bombay. He finished the degree a semester early and is now an entrepreneur and runs the EdTech tech company, AcadBoost and Kio. In his free time, he likes making education videos on YouTube. This was a very humble bio he sent to me. I will mention that his YouTube channel has 2.5 lakh subscribers. So something Kalpit does in his free time has this kind of impact. I will not take away any more of your time. His talk is titled Becoming an Extraordinary Student, My Journey and Lessons. Throughout this day, we have had only one Q&A, but we promise that there will be 20 minutes of Q&A after Kalpit's talk. So keep those questions coming on YouTube, Facebook, and Zoom, and the Zoom Q&A. And Kalpit, on with your talk. Looks like Kalpit is having some network issues. We'll wait for him to join. But until then, please forward these YouTube live stream links to your friends so that they can join in. Hello. Yeah. Hi, Kalpit. We can hear you. Yeah, apologies for the delay. There was a internet connectivity issue here. So 4 years. Yeah. Should I? Yeah, Kalpit, go ahead. Yeah. 4 years back, something happened in my life which changed it forever. Never in my wildest imaginations had I thought that one day I would become the first person ever to score the full marks in an entrance exam so coveted as the JEE. It was beyond my wildest imaginations, and I was really happy on that day. 4 years after that event today, I stand here as an entrepreneur, CEO, and founder of AcadBoost Technologies. And through all of this journey, as a student to a JEE aspirant, to an IIT, and to an entrepreneur, there have been several ups and downs, some of which I have shared and some of which I have not. And today I'm going to share with you my journey from the starting till the end, share with you whatever lessons I've learned and a few tips which every student here can follow that will help them become a better student themselves, and not just better students, but better individuals in general. So I'll talk about my initial years when I was in class 9, 10th, 11th, and 12th. One characteristic thing I noticed around myself, especially in my coaching class, was that almost everyone was more worried about getting the best possible marks, getting the best possible rank, getting the highest top score, and proving to everyone that I am the big deal. And not many people were really worried about the content, what is actually being taught, whether it's useful or not,
whether we can apply that knowledge in the real world or not. Okay. And I was the kind of student for whom this was the first priority. Whenever I began any chapter, began any subject in my school, I used to wonder what is the application of this, whether it can be used or not. And that naturally helped me to study it better because I was able to understand it in a much better way. Around myself, I noticed in my coaching that almost every student, none of them was worried about this aspect. They just wanted some hack, some short trick to score more marks with less effort. I did not find it the most encouraging thing in my surroundings, but I was hopeful that once I go into IIT, I think things will change. But once I entered IIT, after 2 years of grueling JEE preparation, I found out that it was not really the case. So even in IIT, there was another rat race going on. Most students, I'm not going to say all, but most students there are just worried about getting the best possible grade, getting the best possible campus placement, those newsletter, those newspaper headlines which you hear, 1 crore package, 2 crore package. Most people were worried mostly about that and not really, trying to accomplish a higher purpose in their lives. I took almost a year to figure out that IIT was a place of great learning. It was a place of great knowledge. There was amazing students and amazing professors there as well. But it was not the place where I could achieve the entrepreneurial or the higher aspirations which I had from my life. And at this juncture, I began to question what actually is education and what actually is studying. Okay, is it just about getting the top ranks? Is it just about getting into an IIT? Is it just about becoming a national topper? No, it is something much bigger than that. Can you help with your education? Can you help others achieve their potential with your education? Can you light the light for others to follow along with your studies as well? And with this purpose in mind, I started to share my knowledge of different exams, JEE preparation, whatever knowledge of computer science I had in my 2 years of studies at IIT Bombay with the world as well. I started writing content. I started making YouTube videos, which help people understand about whatever I knew. And I started growing a bit of social following on all these platforms. And never did I imagine that it was going to be one of the best investments of time I've ever made. This small step of helping others slowly became a larger army. It grew from a few hundred people to thousands of people to lakhs of people. And I was at certain point mentoring lakhs of students online for school, for their college exams, for interview preparation tips, and everything which I could think of. This was finally helping me accomplish the higher purpose, which I thought something beyond myself, which I thought of before entering IIT. I was also managing my studies along with this. And at this juncture, I had a difficult question to ask to myself. My placements were coming up, and I had to make a call whether I should take up the traditional IITian engineer route of going to the US, getting the highest possible package, or should I continue with this thing which I had set up? Should I continue with my efforts of mentoring students, my efforts of building a huge academic community? And I decided the latter. It was, in hindsight, a lot of people at that time called it foolish, including a lot of people who cared a lot about me. And I had to prove myself this time, because if you are taking such a huge financial decision, because I am from a very middle class family, and for me, for us, people like us, getting into an IIT itself is sort of a guarantee of financial freedom, and I was foregoing that. So I had to make sure that whatever I was going into, the career option which I was making also made financial sense for me, along with the sense it was already making at a community level. But thankfully, things worked out. We grew into a company, and right now there are thousands of students studying with us from different schools and colleges. We are helping them prepare for their entrance exams. We are helping them learn different skills like coding, machine learning, business, finances, etc., which are helping them get great careers for themselves. And I'm finally able to not only get a better financial return, but I'm also able to get the goodwill aspect of it, which a traditional career would probably not have given me. So this was my journey from a student to an IITian to an entrepreneur. And from this, I have learned quite a few lessons. The first lesson which I have learned is
that it is very important to take risks and stand out from the crowd. Okay, at times your choices will not seem the most rational to you. It will seem that what you're doing is folly, and everyone is advising you against it. But if your gut says, if you feel that you can make it, then you should take the risk, you should take the bold steps, and don't be afraid of what the society will think of you, what others will think of you, if you think it is the right step for your career progression or for your own self progression. The second lesson which I learned was that that sometimes you have to let go of your materialistic desires, materialistic pleasures like money, in order to serve a bigger purpose. And funnily enough, this is how life works, that whenever you chase things like money, they don't come to you. But whenever you chase a higher purpose, you will get all sorts of wealth chasing you, and you will not have the time to, you will not even think about that. So this is where this thing had it. I started my company just before the COVID pandemic, and after COVID pandemic, students were facing a lot of issues in their studies. Both college and school students, like both colleges and schools, had shut down at that point, and there were no coaching centers, no colleges running at that period, and everyone is having a lot of trouble learning online. At that point, AcadBoost grew a lot. We were able to enroll a lot of students. We were able to help a lot of students accomplish their learning goals, and it helped us in providing a larger value. Had I taken the option of going for a traditional placement, yes, I would have made a lot of money in the short term. But by doing what I did, I was able to help a lot more students. I was able to provide a more meaningful value in a lot of students' lives, and even the financial returns, which is obviously the secondary thing, were also better than what the traditional career would have provided. So this is what my journey has been like. Now, one question which some of you might have here is, how can you achieve a lot of continued success in your life, be it as a student, be it in your career, be it in college? So I have a standard set of rules which I personally believe have helped me throughout my life for more than a decade. The first rule is that you should be early. Okay, whenever you're early, you are ahead of the crowd by a lot. Okay, I started preparing for different exams. I started studying different books of higher studies in class 7th, 8th itself. This was not for any particular exam. I was not aiming for anything. I was just curious, and I wanted to learn more. So by doing this, I was able to get much ahead of other students who were starting their studies in class 12th or so, when they were actually going beyond their comfort zone. Even if you ask me why I was able to skip the placements, it was because I had the confidence in the career option which I was building for myself, the community which I was building. And that was because I started it early. I started it at the age of 18 and 19, whereas a lot of people who opt for traditional career paths, they start going beyond their comfort zone of a 9 to 5 at the age of 25 or 26, if at all. So I was with a 7 to 8 years advantage over others who would try to venture into any other field beyond their traditional training. And that helped me a lot. The second principle which I have, and this is probably the single biggest takeaway from this video, from this session, is you don't have to work very hard, but you have to make sure that you put in a little bit effort every single day. If you are a student, study a bit every day. Okay, it doesn't matter if it's your birthday, it's Diwali day, it's Christmas day, it's Sunday, it doesn't matter. Just do 15 minutes study, 30 minutes, whatever, do something. This builds a habit, and you don't get left behind. Okay, I'm not asking you that you study for 15 hours on your birthday, but do something. It should be just like brushing your teeth or taking a shower. You should build a habit that without it, you cannot finish the day. Okay, never have I worked more than a certain number of hours in my life, but I work every day. Every day I wake up, I check up my emails, I check up if there's something I can improve in my platform. I check up if there's some way in which I can improve myself, if there's something I can read. Every day I try to do a little bit. It doesn't have to be a lot, but small steps add up. This is how the concept of compounding works. And this is applicable your knowledge, be it your career, be it your exam preparation, whatever it is, this is going to actually help you. Okay, so this is what I wanted to say. And with this, I ask you a question, the question which I asked myself at the end of my first year of college. What is education to you? What is studies to you? Is it about getting the best possible career? Is it about getting the best possible marks? Is it about getting the best possible ranks? Or do you have a higher purpose with it?
can you put others before yourself? Do you have what it takes to put the benefits of the society, the larger cause above yourself? And if you have that courage, I can guarantee that you will over the long term get a much bigger value from that community than what you have provided to it. But the first step is to put the lives of others before yourself, and to always be grateful to your family, to your to the God, and everyone who has helped you along the way. And yeah, thank you. I would like to conclude this talk now. Thank you to the entire community for inviting me here. I'm honored. Thank you very much, Kalpit. Your talk generated a huge amount of questions, and we'll be in here for a long time. We'll be in here for 20 minutes. Let's do this Sure. Q&A until 11:45, and then we can give a short break for 10 minutes. All right, perfect. Okay. First of all, a question from Zoom chat by Kaustubh Shukla, which is, I am a regular viewer of Kalpit Bhaiya's YouTube channel and a JEE aspirant. My question is, what are his views on the digitization in education, including all the entrance examinations? Perhaps it could also include how the digitization affects the coaching versus in-person coaching. Okay, so let me clarify. Are you asking about the learning part, or are you asking about the coaching part, like the testing part, about the online exams which are being conducted, or the online learning which is happening? Let us do learning first and then exams. Okay, yeah, I'll answer both. Happy to answer both. Yeah. So speaking of learning, I think there are some obvious advantages of learning online, and there are some disadvantages as well. The biggest advantages, according to me, are that so if I talk about my time in college, okay, almost all the students who are studying in any college, they study on some kind of a YouTube video. They, like, just before, a few days before exams, they search on YouTube and they find out a video and they study from it. So online learning has been going on for quite a while. Okay, so it is not something very new. What is new is the live learning aspect, and I think it is great for students who don't have access to valuable coaching options, valuable or more developed schools in their localities. But what it is not good for is attention span. So you have to be very careful that whenever you are attending any kind of a live class, you are paying a lot of attention, and you can take help of your parents. You can ask your teachers for more efforts on this area. But I think this is where online studies are not very good. Live interactions are where students tend to get a bit lazy, because in class you are with your friends, you are with a teacher, and there you cannot get bored. You pay attention in some way or the other. Okay. But in online classes, I think this is a big drawback. This is one of the reasons why we personally don't offer live classes. All our lectures are recorded and they're offered to students so that they can study at the comfort of their own time, whenever they want to study. I have personally followed this approach all my life, and I find it more useful than studying live. So I think live learning needs a bit of fixing. Speaking of online tests, this is something that even we conduct online live tests. And what I believe about this is that there should be better monitoring. Okay, there have been many instances of online exams which are leading to unfair means, and it is really bad for students who put in a lot of effort into the exams. So there should be better monitoring. There should be better technology developed for monitoring of these online exams. And I think that is the only thing to be solved. Otherwise, online exams are okay. I personally say that both in-person learning has its own advantages, and even off-person, like online learning, has its advantages. And it's better to have a combination of both once things are back to normal. Right. David Ong from Singapore, who is probably looking to get into the IITs, asks, you mentioned that IIT wasn't great for developing the entrepreneurial mindset. Could you talk a bit more about the startup scene in IITs and Indian institutes of engineering more generally? Yeah, there is actually a lot of infrastructure in IITs, at least in IIT Bombay, for entrepreneurship as well. What I'm talking about is the student community. A lot of students there are not really motivated for entrepreneurial ventures, at least from what I've observed. You will find a small percentage of people there, but you will find them. Okay, so there are some cells dedicated. There are some events organized in IIT on a regular basis where you can even get funded. You can get co-founders. You can connect with investors. So there is a lot of opportunities for the startup ecosystem as well. And if you have the mindset, and if you're determined that you want to go for an entrepreneurial route,
then I would say that IITs are probably the best colleges you can find in India for that. I cannot think of any other college where you will find more opportunities than IIT Bombay or IIT Delhi. Maybe IIMs would be a good options as well, but yeah. Kalpit, on that, what do you think? How do you think BITS Pilani and the other top private universities compare with, you know, the oldest IITs and the new ones that are coming up? Yeah. So see, the thing here is that colleges do not matter for the sake of, it's not like if you get into IIT Bombay, you will be taught something which will help you become a better entrepreneur. It's not about that. It's about the credibility and the network that it provides. So if any investor is approaching me, then they will see that this guy has been an IIT and this guy has been a JEE topper. So that naturally has an inclination that, okay, this person is he's competent in some field. So there's chance that he will be worth my time. Okay, that is how the investor will think. So if you're from any top college, I think it's good enough. I've heard that a lot of colleges like BITS have a great entrepreneurial alumni, and I think that is great as well. So it doesn't matter, the name of the college doesn't matter as long as it's a top college. Being in an IIT gives a bit of an edge because people know IITs more. If you ask a lay person that what is BITS, they probably might not know, but they have probably heard of IITs. The colleges are the same, the networks and alumni are more or less the same, but an IIT gives you a little bit upper edge. It doesn't mean you can do the same in BITS. You can, and there have been some amazing companies coming out of BITS and other top colleges as well, like NITs, triple ITs. So all of these are good. But if you had the chance, I would say you should definitely opt for an IIT. It could be my bias, but I think that it will help you much more. Yeah, perfect. Suleiman, who's joining us from Pakistan, is asking, you found studying for the JEE pleasurable. However, some of us have to grind at the studies. Do you have any tips for them? Yeah, first of all, you have to understand what is meant by pleasurable here. It's not something that you are actively enjoying, but it's something that you are not actively hating. That is what I would say, because no one likes preparing for an exam like JEE because of the kind of studies it involves. Okay, you cannot truly it's like learning is enjoyable on its own, but it's, if you do it at the scale of the JEE advanced, then it probably might not be for a lot of students. Okay, what my advice would be for you is to start out with what you find interesting. Okay, so some students, a lot of JEE aspirants, for example, find physics very interesting. Some people find mathematics interesting. Some people don't like chemistry, but I think physics, at least everyone likes. Okay, so maybe start with physics. Even if you start liking one subject and you score some marks, you will realize that, okay, I'm getting marks, maybe I should study more. So this is how you create a positive feedback loop for yourself. Start studying chapters. Start studying chapters which are interesting to you. You will slowly score better marks, and that will itself motivate you to study more. And at the end of the day, see, different people like different things. Okay, it is very possible that someone doesn't enjoy preparing for entrance exams, and it is perfectly understandable. So you have to put in the grind. There's no, one pill solution to it. I will give you a pill, you take it and studies will become interesting to you. This was just a suggestion, the physics one which I gave. Otherwise, you have to put in the boring hours as well. Okay, that is what I would say about it. Yeah, Kalpit, I think that prompts the question, which is, instead of making the student like the process, what if we ensure that the process is suitable for the students themselves? So the idea I'm driving at is that US college applications focus a lot on extracurriculars, on things that the student is actually passionate about. Do you think IITs should dish just one exam that decides your fate and go for a more holistic review instead? Yeah, actually, that question is not just, it is not a very unidirectional question. See, there are a lot of dynamics going on. You also have to look at the economic aspects of the nation. So if you look at a country like USA, where the average person is much better off, even if you adjust it by the price value of how things are priced at in US and India, the average person is way better off in the US than in India. Okay, and they are in a situation where they can afford to get extracurriculars, whereas for a lot of parents in India, studies is the only option. Okay, and it's not that they don't want their student to pursue extracurriculars. It's just the necessity. That is the kind of competitiveness we have in the country.
So that is the number one reason why a lot of people who might want to do extracurriculars might not still want to go for it. The second answer which I have to say is IITs are much more engineering driven colleges compared to some of the other colleges. So if you look at, let's say, Harvard is more of a liberal arts college than an engineering institute. So there you can have a preference for other things, but if you are going to study engineering, you need to have a great understanding of the core concepts of sciences. And for that reason, I don't think the J should be scrapped off. Okay. About inclusion of other activities, I think it can be beneficial in some ways. In some disciplines, it can be beneficial. And there are some efforts going on in that direction as well. There are some colleges which enter students on the basis of their board exams. And board exams have a lot of subjects like, they have a lot of subjects which are a bit off the path. So I think that there are decisions being taken which are in favor of what you just said. And I think we will get there in a few years' time. Yeah, hopefully. I think this is a nice segue into the next question, which is on the Zoom chat. Satyam he's a student at SunbeamBhagwanpur, is asking, why did you want to study in IIT? Why not in foreign universities? They have more opportunities for entrepreneurs and job seekers. Yeah. So I am, so first of all, I did not have the finances. That is probably the number one reason. Even if I wanted to, I'm from a very middle class family. And I'm the first person who established a business, who started an entrepreneurial venture in my entire lineage. So that is the number one reason, okay? Because even if you get free admission, even if you get scholarships, there is a lot of living cost in the US involved. Now you can ask me, why didn't I go to the US for after my graduation? And that is because I want to do something for the country. It is not very sensible for me. Like, at least my moral compass doesn't allow me to take education from India and then apply it to grow a company in the US. That is not what my conscience would permit me to do. That is another reason. And the third reason is that probably a lot of people romanticize US more than it should be. India has great opportunities and you can build a great future for yourself even here. You don't necessarily have to go to the US to do that. Okay, there are disadvantages both from a cultural and economic point of view. In the US, your costs of living and all of those things really skyrocket if you are in, let's say, California, compared to if you are in Udaipur or Bhagwanpur, let's say. Okay, so that is the answer to the question why I didn't go for foreign education. We have two more questions on Zoom chat and they're kind of related, so I'll mash them up. Siddharth Chavare is asking, you said that practical knowledge and its application is important and more important than marks or the percentage you have. And we have another question, which is, how is AcadBoost and Kio different from the other online edtech services? So perhaps you could tie them in and answer. Yeah, okay. So what I've seen happening in a lot of educational companies is that they are focusing on one particular vertical. Okay, so some of them are targeting students in class 1 to 12. Some of them are targeting students of class of J. Some of them are targeting J aspirants. Some of them are targeting college students. Whereas education does not stop at one juncture. It continues throughout your life. Okay, you cannot say that, okay, I'm going to serve just students of class 1 to 12 and know nothing else, because and it might be because some of the companies are driven by a profit motive, which is completely understandable. But what we try to do at AcadBoost, our JE division is not going to be different from someone else's. Our skill division is not going to be different from someone else's, because the skills and the JE preparation is the same. You cannot say that I'm going to teach you some different kind of coding. You cannot say that I'm going to teach you some different Newton's laws of motion. But what we do offer is an ability where if you are someone who is in class 9, 10, you have an option that you can study with us after your 9, 10 for the J. And once your J is over, we also help you get career success in college as well. We don't leave your hand at any juncture, even though you are free to do that as well. What I started as Kio even is that is focus on your lifelong education. If you look at the kind of videos and content which we put out, and we are soon bringing out programs, our app and all that as well, those are in the making right now. There we are focusing more on the aspects of education which are not really spoken about. There are so many issues which students have to deal with right now, and even adults, like mental health, financial knowledge, physical fitness. These are things which you need to be educated about as well. You cannot live a good life without
a purposeful or meaningful life without understanding of these topics. And that is what Kio is all about. So if you look at what we are trying to do is we're trying to build out these small different verticals which help in the education of a person at different stages of their life and in different aspects of their life, and not just sticking to one particular division just because it delivers more profit. Some sections of what we do offer more revenues, more profits than some other sections, but that does not mean we are going to shut them down. We are still running them. You are free to you're free to access whatever we have to offer. But from our end, I'm committed to providing holistic education to everyone who wants to take it. Glad to hear that, Kalpit. Our next question is by Shreyansh Kumar, who is asking on YouTube, are there research opportunities at IITs in the basic sciences? Perhaps you could also tie in the research opportunities in IISc. Yeah, I don't have too much of knowledge of IISc, but I can vouch for IITs that IITs are one of the best places for research in India. From my friends at IISc, I've heard that that is also very similar. So let's talk just about one of them, IITs, because I'm from there. So there are some very highly accomplished, very highly awarded, very highly recognized professors in IIT Bombay, some of who have even taught in colleges like MIT, Stanford, etc. So you can have the best possible research options, not just in India, but even one of the best globally. Obviously, a place like, let's say, MIT or Stanford would be better for research purposes. But if you're doing your research in IIT, you are not missing out on much. Okay. Apart from that, if you want to go for a master's or a PhD later on in your life, then IITs will offer you that platform from where you can jump and you can onboard the US PhD doctorate train. So I would say if your motive is research, by all means, go for an IIT. That is great. Kalpit, tying into that, the MTech program in the IITs is not as regarded as the BTech program. So what do you think about the PG education and research opportunities there? Yeah, see, it is not about the level of education. Okay, what a lot of people think is that MTech students at IIT are not that good, or it is not about that. It is mostly about social conventions which are set up around that. So someone who is joining IIT for BTech, they are one of the smartest students in engineering you can find. Now, Yeah. all of them are not going to do their MTech from IITs itself. They will go abroad or they will take up a job, right? So the smarter cream of students has now left. Now what we are left with are people who probably couldn't make it to IITs in their JEE. So now they will try for GATE. So it is not like that these students are not smart. Even they are smart. Some of them have worked really hard during their college. Some of them have covered up for their lack of preparation in JEE times. So even those people are smart. That program is not bad. You can join it. But the reason why you don't see the IITians joining MTech is because they are opting for a US education. Okay. So what you hear is mostly rumors. The MTech program is also really nice. Some of my closest friends in IIT are from the MTech program. And yeah, that is what I would say. Yeah, Kalpit, we have the late class 12th question that students often think of in the last months before their JEE, which is, will the IITian tag really guarantee one's future? Yeah, actually, if I had to say it in one word, I would say yes. Okay. If you're an IITian and if you don't mess up in college real bad, okay, if you are someone who is going to be like, okay, now I'm not going to do anything in my life, I will just be an IITian, then obviously you are not going to go much ahead. But even if you put up decent efforts in college, you maintain a decent GPA, you pick up a decent career, you are going to make a good living. You are going to have a good life overall. So I would say IITian tag equal to success to a huge extent, yes. But you have to keep working hard for it. It doesn't guarantee you success, but the probability of big succeeding is very good. This question is very similar to asking in US, is a Harvard graduate going to be successful? Chances are that yes, probably he is going to be. So yeah, that is what I would answer. And just give your best if this is your last time for the exam, because trust me, you're not going to regret preparing for the exam in the long run. Yeah, looks like we have time for one or two last questions. Manya Prakash from Facebook is asking, people do say that it's possible to crack IIT through online coaching. But as someone who has done it and knows, is it really true? Yeah, I would say that, see, almost 90% of preparation for JEE or pretty much everything in life is about yourself. Okay, how much effort you put in.
Okay, it doesn't matter if you have studied from Kota or Jaipur, or studied from your father, mother, you have studied from your brother, you've done self-study. It doesn't matter if you studied online, offline, whatever. That is probably 5 to 10% of the preparation. 90% is about you doing your own practice, you trying to understand the topics. That is what most of the preparation is about. So as you can clearly guess from what I've said, yes, you can. It doesn't matter. There are students who have done great achievements from online. There are students who have achieved greatness through offline. Online coaching is a very recent phenomenon. It started mostly in 2020. And before that, I don't think many people were actually studying online. So we are yet to see long term if this works out, but according to me, it should. All right. Thanks a lot for your time, Kalpit. That will be all. Thank you very much for joining us. It is really nice that you, despite having achieved so much, you're so humble, you're so grounded, and you're so kind and detailed in your answers. Thank you very much for your time. We'll break for a short while now, and we'll be back in 10 minutes. We'll play something in the background. You don't need to quit the Zoom webinar if you're here. You can just keep that away. Go stretch your limbs a bit. Go grab something to eat. Recharge yourself for another session. If you're on YouTube and Facebook, please watch whatever we put up on display here, or don't watch. Go grab something. Recharging is as necessary as whatever we have, whatever the talks we have to offer. Thank you very much. We'll be back. Tiger, burning bright in the forest. What immortal hand or eye could frame that fearful selection? In what distant deeps or skies runs the fire of thine eyes? All what waits there has fire. What's the hand? There sees the fire. Oh, and what shoulder and what art could twist sinews of thy heart. And when thy heart began to beat, what wet hand and what wet feet? What the hammer, what the chain? In what fondness was thy brain? What the anvil, what red brass? There is there's glass. When stars shoot down their spears, and waters happen with their tears. Did he smile his hope to see? Did he who made the lamb? Maybe. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful reflection? Thank you. Have you ever wondered what would the scene scenario of Varanasi in 1804 when Rana Bahadur Shah was standing here and was seeing the building temple, which was the replica of Pashupatinath temple in Nepal? Can you imagine what was the feeling at that time? Let's explore it. This temple was started by Rana Bahadur Shah, the king of Nepal, and was completed by his son. This temple is devoted to Lord Shiva. Can you tell us that from how many days you're coming and visiting this temple? I can speak in Hindi. Please, sure. Okay. अपने बचपन के समय से हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं क्योंकि मैं एक लोकल यहाँ पास में रहने वाला हूँ, तो ये बचपन से आते रहे यहाँ। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। How you are feeling at this Nepali temple? It's wonderful. It's very nice to see the intricate architecture. Yeah, very special to be in Varanasi. We're very grateful. Ma'am? I'm feeling very peaceful here at this temple. It's very beautiful and calm here beside Ma Ganga. It's very nice. Ganga. Ganga. Thank you. Thank you.
wonderful. See the kind of finishing in these designs. This is great. And can you guess of what all is made of? Which material is used? I think wood. You are right. This all is made up of terracotta wooden stone. Wonderful. But Raghav, why this temple is known as Mini Khajuraho? That's the point. Actually, the sculptures here are resembling to the sculptures in the Khajuraho group of monuments. That's why this temple is also known as Mini Khajuraho. Okay, this is wonderful. But see the roof also. It's amazing. Yes. Here the hard work comes in. The hard work all the Nepali people have done. The hard work the king has done. The hard work which was done to make this temple. Seriously. This makes it alive. This makes it look like the Pashupati. Wait, are you missing something? Yeah, surely. Can you notice that gate? The design? It's amazing. That's wonderful. Varanasi is in the race of modernization. We should never forget the rich culture and heritage of our holy city. So it's our responsibility to take care of these heritage sites and preserve it for the upcoming generation and tell the whole world that what is the richness of the holy city Varanasi. Thank you. What will happen in 2030 when we will not have a single drop of water left? We have to do something about this. We then took our problem to our class teacher and ma'am promised to help us. We all sat together in a Q city and discussed our problems, and we got wonderful solutions. Some of the ideas were: turn off the tap while brushing, use buckets instead of shower while bathing. We have also started some of the practices in our school. We use sanitizer for our hands. We always fill our bottle to half levels. But we have to also spread the message to others. Let's save our future. We need to act now. Water is the second most important element after air for the survival of life. But beware, soon it will become the first and very, very rare. Let's save water. Varanasi, the holy city which is said to be balanced on Lord Shiva's trident, has its own cultural and religious importance. Today, I, along with my partner, are here at one of the padavs of the Panch Kroshi Yatra, the Panch Pandava Mandir. Right now, I'm standing with the head priest of this temple. इस मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है? यहाँ पड़ाव पंचकोशी में पांडव यहाँ आए थे, पंचकोशी करने यहाँ रुके थे, इसी से यहाँ पांचों पांडवा उनका नाम रखा गया। वैसे तो आपके पंचकोशी जो यात्रा परंपरा है उसके चौथे पड़ाव के रूप में इसकी मान्यता है। यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करके यहाँ पे रात्रि निवास करके फिर 5वें दिन आगे विश्व ध्वज के लिए आगे बढ़ते हैं। One of the most striking features of this temple is the chronological emplacement of the Shivlings, starting from
the eldest brother Yudhishthir, moving on to Bhim, Arjun, Nakul, and the youngest one, Sahadev. Temple was established around Dwapar Yuga, when the Panch Pandavas had visited Kashi during their Agyatvas. They had come here and emplaced 5 Shivlings, which has its own significance, and a kund, which is now situated across the road, and at that time it was just in front of this temple, and that kund is known as the Draupadi. द्रौपदी कुंड के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं कि राजा टोडरमल के पुत्र, राजा टोडरमल जो अकबर के दरबारी थे, उनके पुत्र गोवर्धन जी ने इस कुएं का फिर से नवनिर्माण करवाया था। इसमें उनका एक लेख भी था जो कि अब उपलब्ध नहीं है। Right now, I am at the Draupadi Kund and temple. Let me tell you all that when the Panch Pandavas along with Mata Draupadi had visited Kashi, in order to quench the thirst of Mata Draupadi, Arjun had created this kund with the help of his Dhanushban, and thus this kund has been created since then here in Varanasi in Shiva. Besides its relation with the Panch Kroshi Parikrama Yatra, this temple has an immense significance of its own. And not only this temple, I am sure that the other 4 padavs of the Panchakroshi Parikrama Yatra are equally significant. So, I recommend you all to visit all the padavs of Panchakroshi Parikrama Yatra and explore the unexplored. Thank you. Hello. Good morning, Ramji. I can hear you. Hello, you're nice and audible. Hi. Good to see you. Same here, ditto. So I just want to sort of try screen sharing first before we go live. Is that okay? Yeah, sure. Ishan? Yes. Yes, sir. Please go ahead with your tech check. Yeah. Is that coming? Yes, absolutely, Ramji. You're good. I'm not getting out of this. Yeah. All right. Perfect. We'll do a short intro, and Mr. Walat, then we can go ahead with a short chat with our dignitaries, and then on with your TEDx talk. Ladies and gentlemen who have come back from the break to join us, thank you for giving us your time. Our next speaker for TEDxYouth SunbeamBhagwanpur is Ramji Walat, the man present on the screen before you. Ramji has delivered over 100 inspiring and empowering talks for corporates as well as academic institutions. What makes his speeches relatable is every life-changing lesson is bound by a personal commitment, a personal story. As a person, he suffered from a crippling autoimmune disorder that left him immobile. He risked a risky procedure, a surgical procedure that would have a risk of debilitating him for life. However, he came back strong, having grown on a diet of a scientific temperament and PG Wodehouse. Ramji, it is our pleasure to host you. I would invite Pratima ma'am, our assistant director, to go ahead with the plenary session, and then we can jump right into the talk. Thank you, Ishan. I would just want to take this opportunity to formally welcome and thank Ramji for agreeing so instantly to join us for TEDxYouth at SunbeamBhagwanpur. And in fact, when I started talking to him, Ramji, it is our pleasure. Yeah. So in fact, when I spoke to him on the phone, the very first
I was struck by his positivity, and that is why I felt that for someone who sounds so absolutely vibrant and positive on the phone, hearing him speak would indeed be a pleasure for all of us. I see Dr. Deepak Madhok. Sir is not keeping well today, Shan. I just came to know that sir is not keeping well. So sir is probably joined in and would be listening in. So I suggest that, sir is here with us. Sir, it gives me great pleasure to introduce you to Mr. Ramji Walad, who's joining us from Bangalore. And he is a motivational speaker. He is also a corporate trainer, and altogether a very positive person. That's Dr. Deepak Madhok, Ramji, Chairman. Namaste, Deepak. Hi. Hi, hello. Hi, good morning to you and warm welcome. Thank you so much. And I also want to tell you that now he tells me that he's come out with his third book, isn't it? And this one is about parenting. So, of course, it would be very useful to all of us who are dealing with education and with children. So I've asked him to send us copies of his book for not just for our libraries, but also for our parent fraternity. Ishan, if we are doing good with time, I would just ask you to go on and go ahead with the talk. Absolutely, without delay. Ramji, please go ahead with your talk. We're all ears. Thank you so much. Hi, everyone. So as you know, I'm Ramji Walad. I'm the happiest and most positive individual I have ever met in my life. So that's my introduction. I come from a small village background in Kerala. I did my studies in a rural government school in Malayalam medium. Even English was taught in Malayalam in my school. And the school had about 20% pass percentage. However, I managed to get into IIT with a very good rank, completed IIT, then went out to do my MBA at XLRI. And then my career took off really well. In a matter of 7 years, I became the country head of a multinational corporation handling operations for India and South Asia region. I was very ambitious, very driven. And my focus at that time was to add maximum value to myself. And I wanted to be a global CEO of a Fortune 500 company by the age of 45. I was driven by that ambition. And it is that ambition which, when telecom operations really took off at that time, new circles were being set up by all operators. I joined Airtel as a sales head for a new circle, which is in Tamil Nadu. And again, once there, I was determined to prove myself. I was driven. And I set our circle a target. And my target was in terms of number of new connections I could bring in as a sales head. I said that in the next 3 months, we are going to get 100,000 new connections. And in those days of telecom, I don't know how many of you guys remember, it was extremely difficult to get even 10,000 connections. And operators who've been there for years would have got about 100,000 connections. But we said we are going to do it in 3 months. And I was determined to do that. I pushed my team really hard to get to those numbers. We pulled out all plugs. And typically in a telecom operation, it is not just good enough to get the connections. You need to ensure that the customer is happy and stays with you. Then only you will get revenue from the customer. I was not bothered about any of that. I was bothered about my numbers. And in 1 year's time, at the end of the 1 year, when we should have been more than 100,000 connections, we ended up with 20,000 connections because most of the customers who came on board were unhappy with us. And many of those customers had been given free connections just to increase the number of connections. And they tried out the network once, they were not happy, they didn't like the customer care, whatever the reason. Many of them returned the connections. And we had to actually write off about 90% of the revenue that we earned for that year. And at the end of the year, our net loss was 10 times more than the revenue that we had earned. It was a complete mess. And I was squarely responsible for the mess. So
putting a personal goal of maximizing value for myself did not work. And that's when my boss actually showed a reflection, a mirror to me, and told me to look at that and figure out what is wrong. And I realized that I needed to focus on also helping others in the organization to succeed in their jobs. Then only the organization can succeed as a whole. So my focus then became slightly different. Instead of focusing on how to maximize value for myself, I started looking at how can I maximize value for the organization that I'm working in, which involved actually reaching out to people in other functions, supporting them, helping them, nurturing great relationships so that we all work together, hold hands together and advance as a one to actually reach the goals of the organization, instead of every individual working towards achieving their individual goals. Now, that was a big learning for me. And that possibly led to my becoming the youngest chief operating officer or youngest circle head in the telecom operation in the country at the age of 34. And I was actually well on the way to my goal of achieving the goal of reaching the CEO of a global Fortune 500 company by the age of 45, because I had changed my personal focus from how to add value to myself to how to add value to the organization. This actually helped me in my career throughout, this new focus. I worked in 2 other companies after that. And in each of those companies, I faced tremendous amount of ups and downs in terms of businesses, in terms of the responsibilities, in terms of roles. But I was not really bothered anymore about my own personal achievement of what is the next salary hike I'm going to get, or what is the promotion I'm going to get, or is the next guy getting a higher salary than me or getting promoted before me. When you forget those aspects, which is typically the aspects that most professionals actually focus on, and when you start focusing on how do I add maximum value to the organization by picking up things which nobody else is doing, but which will actually help this organization succeed. And that's really helped me in my career throughout. However, career was not the only thing that was happening. I was also going through a physical challenge at that time, and it started when I was 34. And over a period of 7 years, it became worse and worse. And it started with a small tremor in my fingers every time I tried to hold a pen or a fork or a pencil, and a slight loss of balance every time I tried to step up or downstairs. And the condition kept getting worse. And at 41, I had a fever which completely spiked this condition, and I was completely paralyzed. I was wheeled into the hospital, unable to move my hands or legs even 1 centimeter. I couldn't keep my eyelids open. I couldn't even speak. And then the doctors figured out I have an autoimmune disorder. An autoimmune disorder is where your own immune system attacks your own body. And my immune system was attacking the nerves of my body, which in turn meant that the electrical impulses or the messages were not going from the brain to my hands and legs. And without that, the muscles had become completely useless. And about 70% of the muscles in my palms, etc., had completely wasted away by that time. I was put on some very expensive medications. Each of those doses of 1 dose of that medication would cost 6 lakh rupees. And unfortunately, it is not working. So every 2 months, I had to go back. I couldn't afford that kind of money. So I had to have what is called steroids, which are far worse. And they have a lot of side effects. So I put on about 16 kilos of weight. And this is when I would like to share my screen. I put on about 16 kilos of weight, and I was looking like that in those days. Life was terrible. Every time I tried to walk, I would lose my balance. I had to have a crutch. Even with that, I would every once in a while trip and fall. I would try to put on the buttons of my shirt. It would take me 90 minutes to put on the 6 buttons of my shirt. And none of the medications were working. So finally, I found a treatment in the US, a clinical trial, where I was the 18th patient to go through a very risky trial. But it worked for me to a certain extent.
And I came back and started rebooting my body through intense 4-hour workouts every day, building back each and every single muscle in my body. At the end of 6 months, I was feeling much better. But what really transpired was a change in my entire outlook towards life. During this entire phase of great difficulty, there were so many friends and relatives and people who had reached out and supported me. And I realized that what I need to focus on is how can I add value to all those people? How do I how do I repay the kindness that they have given me? Now, it was not possible, right? I mean, so many people have helped me in so many ways. I could not reach out to each and every individual and, hey, you've given me this kindness now, I want to return this. But what I could do was I could figure out other people who needed my help and reach out and help them. So I would actually, I started devoting time to helping people who would reach out to me. And I could help a lot of people because I had friends in very high places who could support and help so many people. And all I had to do was spend some time connecting people and supporting them. I'm also one of the few people who have gone through this treatment in India. And also I had in-depth understanding of all kinds of autoimmune disorders because I love science and I research a lot. So I had a lot of people with different kinds of autoimmune disorders reaching out to me. I could help them. And I realized that helping others made me feel wonderful. It made me feel really, really happy. So it was a purely selfish intent. I was making myself happy by helping as many people as possible. The best part was lying in the hospital bed in Chicago, I had written my first book. And the book was a completely wacky, crazy science fiction for children. It had some really wacky characters. And I started being invited to schools to talk about this book. And I realized that I could make kids laugh so much that 1 hour they would be like fixated to every word I would say, and they would be rolling around laughing. And I realized that making other people laugh and making them happy was the best way to make myself happy because I would feel so charged up at the end of each of those sessions. And the more charged up I felt, the more self-confidence I got. Because helping others is the best way to feel that you are valued. Your self-worth goes up and your self-confidence goes up. So I became very happy. I became very confident. And that is the reason I wrote my second book, which is called From Ouch to Oops, which is an autobiography, which talks about how to convert downturns in life into successes. It's my life story said in a very humorous way, and it became a bestseller from day one. People started reaching out to me from across the country and telling me that I have touched their lives positively. So I had a new target for myself. I said, I want to touch 1 million lives positively. And that was my goal. And that was perfect for the next stage of my life. From adding maximum value to myself, I had moved to adding maximum value to the organization. Now I wanted to add maximum value to humanity. And this transformation in my personal goal transformed my life. Single thing I have done since that has been in a single-minded focus towards achieving this goal. I've delivered over 100 talks and maybe about 50, 60 corporates, 50, 60 schools, maybe 100,000 plus people have attended my talks. And I help them inculcate values or traits such as self-belief, ownership, total end-to-end ownership, resilience, happiness, positive thinking, growth mindset, things which make people really successful in life in the truest sense of the term success. And when you actually go towards achieving something great for the rest of humanity, instead of focusing on yourself, then the universe actually conspires to give you the opportunities to add value to others. And this is what happened to me. Macmillan, the publisher, textbook publishers, reached out to me and said they are bringing out a new English textbook and they wanted me to write a chapter on my own life for the 8th grade textbook. And I wrote that. And suddenly, out of the blue,
hundreds of thousands of children are reading about my life and feeling positive and happy and feeling inspired. The greatest happiness I get is when one of these children actually from small towns in India reach out to me and say, Uncle, I felt inspired after reading your story. That is wonderful. And when I was almost close to reaching my 1 million target to be touched positively, I also got another opportunity. I've been working in Azim Premji Foundation as editing a science magazine for school teachers because I love science. And when the pandemic struck, they wanted somebody to lead the healthcare strategy for pandemic response. And Azim Premji Foundation had put in huge amount of money in supporting about 70, 80 districts across the country to combat the pandemic. And I became one of the key persons who designed the strategy on how to make this happen. I was so humbled that I was in the right place at the right time to be able to contribute to this great effort by a huge team, which was actually working selflessly to make this happen. I had my little bit of effort into that. And it was a wonderful experience. So in one fell swoop, I have crossed way more than 1 million lives touched positively. So now I need to look at how do I touch 10 million lives positively. And that's when, in the last 3.5 years, I've been working on the next plan, how to touch the 10 million lives positively. I realized that if I want to change the world to become a better place, I need to start with the younger generation. But in person, there is only so many people I can talk to, so many children I can talk to. What I can do is I can arm parents with the right kind of tools to make children to be really successful people in life. And in my definition, success is socially conscious, happy, authentic, resilient, and purpose-driven individuals. So the book, which has taken 3.5 years to actually write, is about making children to be SHARP, sharp children, and arming the parents with the right tools to make that happen. This book is getting launched in the next 5 days. I hope this actually helps me in reaching the 10 million lives positively now. Life has not been very easy. I've had a couple of relapses. I've had about 50 falls in the last 5 years. And each time I fall, I either fracture something or I twist something. I've had about 10 fractures. I continue to be the happiest and most positive individual I have ever met in my life, because I have cracked the secret to success, a secret to happiness. And that is by adding value to everyone that I meet. So today, I have realized that adding value to self can be done so beautifully by adding value to humanity. Instead of focusing on yourself, if you just start focusing on using all your strengths to support people around you and the larger humanity, the larger society, nothing can give you more happiness. So I want to leave you with a final word. It is that each of us, human beings, are made up of about 1 trillion cells. So it is this incredibly complex, incredibly intricate dance of collaboration between these 1 trillion cells that is work to gift you the greatest gift the universe can give, which is your life. Ask yourself this question: am I using this greatest gift possible to the best possible ability? Am I using it only to add value to myself? Or am I adding value to myself and happiness to myself by helping as many people using my strengths as possible? I would definitely look at the latter as the way to go. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vallabh, for that wonderful talk. We learned lots from this, a lot about how to live a happy, a meaningful life. Yesterday, Dr. Divya Jetli came and talked about how to find meaning in your life. You completed the triangle today with how to find happiness in your life. Kalpit was the third wheel
he told us how to find success in our lives before this break. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Yeah, thank you very much. Our next speaker today is Mohit Sharma. He's the founder of a company called Oy Rickshaw. After getting his BTech in mechanical engineering from IIT Delhi, Mohit Sharma gathered industry experience in the automobile industry by working at Hero Motorcorp. And then he went on to found Jangid Motors. There, he developed India's first indigenously developed electric rickshaw. In 2017, he founded Oy Rickshaw with a goal to address a very specific problem. You see, in metropolises like Karnal, Noida, Gurugram, people use public transport to go from home to office. However, the first and the last mile, when you're going from your home to the metro station or the bus station, is a problem because taxi services and rickshaws are highly unreliable in these metropolitan areas. How to solve this issue? How to make the first and the last mile as easy as the miles in between? Mohit Sharma, the founder of Oy Rickshaw, is working to make that first and last mile as easy as possible. How? Let us find out. Hey guys. So before I begin, let's try to imagine a new world. A world where there is a lightweight electric vehicle with relatively small battery unit, which can actually go and pick up charge from anywhere in the city, which necessarily doesn't have to go to any of the gasoline station, gas station, even plug that vehicle in to gain charge. Also, Elon Musk famously said, in order to have a clean air in city, the only solution that we should go electric. Hi everyone, I'm Mohit Sharma, founder and CEO of Oy Rickshaw, a shared electric micro-mobility marketplace redefining how the real Bharat commutes. Before talking about Oy Rickshaw, let us discuss the evolution of electric vehicles in our country. In 1996, the first electric vehicle, a three-wheeler, was invented by Scooters India Private Limited. Approx 400 of such vehicles were made and sold in our country. Then in 1999, Mahindra & Mahindra Limited launched its first electric three-wheeler and also launched a new company based in Coimbatore in 2001 to specially make and sell electric vehicles named Bijli. Then in 2000, BHEL developed an 18-seater electric bus, which became popular too. Then approx 200 of such vehicles were made and sold. But because of the high cost of the maintenance of the batteries and the low life, those vehicles were discontinued. Then in 2001, Bajaj Auto Limited Pune also demonstrated their three-seater electric rickshaws. However, the product was not commercially launched. Then in 2007, Hero Cycles, in partnership with UK-based Ultra Motor, launched a series of bikes. These electric bikes became popular among other companies named Electrotherm India, TVS Motors, Hero Electric, etc. And Tata Motors, Maruti Suzuki, Toyota, and other companies started entering Indian market with their battery and hybrid electric vehicle products. After that, became a period of huge setback for our industry. Between 2005 to 15, almost people lost belief that electric vehicle would ever work. And that was largely due to poor health quality and lack of services and maintenance centers of these EVs, and thus customers were not happy with the electric vehicles. And also, India had virtually no charging network, what is typically the backbone of any EV industry. But after 2015, fortunes started to change. There came an era of electric three-wheelers. The significant popularity of electric rickshaws dominated the entire market. And in 2016-17 alone, 5 lakh e-rickshaws were sold in our country. And now, as we all know, era of electric four-wheelers has finally begun. The major players like Tata, Mahindra, and multiple external like MNCs, which are establishing their bases in India. And finally, we all have believed that now the electric four-wheelers are going to pick up.
And also companies like Reva, Hero are trying to establish their charging station network, though with limited success, but they are doing their part. Now, as we know, the major EVs are of three types: two-wheeler, three-wheeler, and four-wheeler, electric bike scooter in two-wheelers, e-rickshaws and tempos in three-wheelers, electric cars and electric mini trucks in four-wheeler category. Now, let's try to understand why we chose e-rickshaw as the form factor for providing our services, and also understand why they become so popular in our country. And today, we have close to 2.5 million e-rickshaws in our country, and just 20% of them are in tier 1. Remaining 80% is tier 2, tier 3. Tier 2 approximately has about like 45%. Remaining is in tier 3. The main reason behind that adoption is the kind of capex required to buy an e-rickshaw, which is 40% lesser than an auto rickshaw, but has the same earning potential. An e-rickshaw driver partner can have, similar earning as of an, auto rickshaw. E-rickshaw has 4 seats for accommodating customers in a shared way comfortably, as against 2 to 3 people, which typically sit in an auto rickshaw. Similarly, it can carry more load as well, carry up to 500 kg. Rides are affordable at rupees 0.9 or 90 paisa per seat kilometer, owing to low fuel and the maintenance cost. Now let's see what segment of society an e-rickshaw driver partner belongs to, where they come from. Majority of them are males. They have poor financial educational background. They are migrants. They are part-time e-rickshaw drivers, not necessarily the owners of the e-rickshaw. They are sole earners of their family, mostly belong to the age bracket of 20 to 35 years. They are not tech savvy. They are Hindi speaking. Now, let's try to understand what are the problems of an e-rickshaw once the e-rickshaw is sold off the shelf. First, low vehicle utility. They're highly dependent upon the daily commute of like 8 to 11 a.m. in the morning and then 6 to 8 p.m. in the evening. And that too with the limited discovery of around a bus stand or a metro station. And then high cost of charging and parking, because vehicle requires 10 hours to charge. A driver partner needs to pay for the parking as well, which is like close to 10% of his income. Then the range anxiety means a driver partner can go just 70 kilometers on one charge, which is pretty less. So e-rickshaw helps solve all these bottlenecks that e-rickshaw driver faces. Let's see how. We have built a 24/7 ride and delivery demand platform for e-rickshaw driver partners and have created a battery swapping network to reduce their operating cost. So by using our platform, a driver can expand their reach and provide affordable and seamless rides to commuters. They can also increase the utilization, make use of idle time by doing delivery. And instead of spending hours on charging, they can actually use our battery swapping network, which typically takes about 5 minutes to swap the battery, and they're good to go for almost 24 hours in a day. Then a driver app, there is one driver app, which is a solution to all these problems of the driver partners. It has just 20 minutes onboarding process. In 20 minutes, you're part of the e-rickshaw, of the e-rickshaws platform. The second is the access to 24/7 demand on the platform. Then we have T+1 settlement structure. A driver can actually get the money the very next day. And the full visibility with earnings. He can actually decipher of how he has made that amount of money. And then there are various driver welfare schemes, just like insurance, the medical insurance, health insurance, life insurance, and also the child education, which is there on the platform, which driver has access to. And then attractive referral benefit. A driver partner can bring in more driver partners and also bring in new riders on the platform. They can actually refer. There are promoters on the ground. Next, we'll talk about 3 vertical ride delivery swap in a bit more detail. So let's first hit ride. So what are the typical e-rickshaw users? There are over like 100 million people in our country who travel to school, colleges, and offices, nearby travel. And that too happens on almost daily basis. And since we are solving for daily commute use case, we are seeing the traction on the platform. Our riders are taking about like 40 rides per month on our platform. Plus, we make the ETAs very much predictable for them. They can actually hop in our service at much lesser time,
had they elect to sort of go offline to hop onto these rides. And till date, we have completed 6 million plus rides. So that's give us a lot of picture about how this market actually operates. And with the sheer data, we are propelling our story forward. Then, during the non-peak hours of the day, a driver partner can actually spend time onto doing the delivery services. They can have access to these customers onto our platform. They can, debut themselves or their vehicle to fulfill, duties which are there on the application, and they can make additional 300 to 400 rupees per day. And on the customer side, the proposition is simple, means we have a network of supply which we can deploy to do their first and last mile deliveries across the country, all tiers at 20% lesser cost. And we have the lowest e-rickshaw supply deputation tax. So we turn around in the minimum time, like just 2-3 days onto doing deliveries with any of the customers. Next, battery swapping. To cater to increased utilization on ride and delivery, driver needs more kilometers per day, which provides access to the energy as a service network. Here are some of the benefits we are using, driver partner using from our swap system. They have to pay 20% less per kilometer cost. Second, there is a 40% reduction in vehicle weight. Third, there is zero driver capex. Driver doesn't have to invest into the batteries. Fourth, there is zero downtime of the vehicle because swap is a 5-minute process. And then there is 50% increase in vehicle utilization because driver can do more runtime in a day now. So, and also the ride and deliveries are happening faster because of the reduced weight of the vehicle. They can actually move faster. And now our aim is to build India's largest energy network with swap first focus. We will shift to fast charging when opportunity arises though. Overall, our approach has shown to increase the driver daily net take home by more than 70%. It has also led to increase in occupancy GBV per day per driver, kilometers driven, and reduce cost per kilometer. And overall, our mission is to solve for this first and last mile commute and logistic issue, plus increase daily income of these 2.5 million e-rickshaw driver partners. And every day we are moving closer towards achieving our mission. Here are some videos and feedback shared by our driver partners, riders, and delivery clients. Let me play some videos for you. टाइम टू टाइम होता सारा काम, जल्दी काम करो, अपने घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर फिक्स है सर काम, तो ये लेकिन ये काम नहीं घर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, रोज काम होता है रोज। मेरा नाम विशाल है, मैं ओई रिक्शा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी फिलहाल डिलीवरी में लगा हुआ हूँ। उड़ान कंपनी में मैं डिलीवरी करता हूँ। डेली की 15-20 मैं डिलीवरी पॉइंट मारता हूँ, उसके साथ ही साथ राइड भी करता हूँ। मेरी पहले की इनकम 500 थी, अभी 600, 700 और 1000 के करीब पहुंच जाती है। में मैं काम करता हूँ उड़ान में, उससे पहले 500-600 काम करते थे, अभी 1000 रुपये या 1100 रुपये हो जाते हैं। और इसमें राइड भी मारता हूँ 30-40। मेरा नाम तापस, मैं कम से कम 1 साल में 9 महीना हो गया मेरा को रिक्शा चलाने। तो मैं अभी आजादपुर में काम कर रहा हूँ, जो कि ना पहले राइड बिजनेस किया था, उसके बाद आप जियो मार्ट हुआ है, जियो मार्ट में काम कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा जो पहले जो कमाई, जब वही रिक्शा था नहीं तो उस टाइम मेरा कमाई हुआ था मुश्किल से ज्यादा 500-600 रुपया कमाई था। अभी जो वही रिक्शा आया है, वही रिक्शा साथ में काम किया, राइड बिजनेस किया, राइड बिजनेस करने के बाद मेरा कम से कम 700-800 कमाई हुआ। उसके बाद जियो मार्ट में डिलीवरी बिजनेस चालू किया, तो उसमें कम से कम 20 से 25 में ऑर्डर में कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा और बेहतर से कमाई आ गया। तो ज्यादा कम से कम अभी 1300-1400 रुपया मेरा कमाई आ जाता। तो झाईपुर के बीच A few of the My name is Poonam Mustaki, and ये जो सर्विस है ये बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर लेडीज, बिकॉज बिहेवियर रिक्शा वालों का होता है वो इतना कई बार हम्बल होता है, कई बार नहीं भी होता और सेफ भी नहीं होता, पर इनके फेयर भी सही है और as such I think कि behavior is also very good with ladies and everyone. And few of our delivery clients, they have these things to say about us.
So some places we are making the scale up easier in the case of the Udan. And also we are planning to expand to further, many tier 2, tier 3 towns. And if we talk about big basket, we have accolades in terms of the reduced face time and, that we can carry more goods, more parcels on per trip basis, and also have reduced their cost significantly. So thank you very much. Thanks for bearing with me. And you guys can write me at mohit@oeriksha.com, even post this session, and also happy to listen to any Q&As that we have. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, we're running a teeny bit ahead of behind schedule, and so we'll jump right into the next talk, which is again an entrepreneur and again someone who was covered by Forbes. Ladies and gentlemen, please welcome Amandeep Pawar. He is the co-founder and CEO of Bharat Rohan Airborne Inventions. While in the final year of his aeronautical engineering degree, Amandeep and his co-founder Rishabh were testing drones in our very own Uttar Pradesh's Barabanki district, where they heard from the farmers who could not predict crop outbreaks, pest outbreaks, nutrient deficiencies in advance, and therefore were bleeding money like anything. And Amandeep developed technology that could literally predict the future by looking at what the state of the crops was and predicting what would happen to them in the future. This has been life-changing for many more farmers than you can imagine. And Amandeep will detail the technology he used, the know-how he used, and how he is changing the life of so many farmers. Thank you, Ishan. Hello, everyone. This is Amandeep Pawar from Bharat Rohan. So what is the first thought that comes to your mind when you look at this photograph? I asked this question from many people in my network. Most of them gave answers like harmful chemicals getting sprayed onto our food. Sometimes health becomes cheaper than appetite. And I realized that we as consumers feel unsafe when we get to see scenes like this. And more often hold a perception of the farmer being entirely responsible for the overuse of chemicals in the crops. But during my conversations with the farmers in the last 6 years, I have learned that farmers do this because there is a long cycle that originates from the consumer and ends at us, at the consumers. I will explain this in next 30 seconds. Annual agriculture crop losses in India due to pest attacks and diseases amount to rupees 50,000 crore, which is about 30 to 35% of the annual crop yield in the nation. Imagine such massive losses in a nation that is growing at an annual rate of 1%. The pressure surmounts on the farmers to grow more per acre. If a farmer stops spraying today, not only would the food security be put in jeopardy, but even the income levels of these communities would drop significantly. To maintain their same income levels, the prices of the commodities that we consume would have to be increased to about 35 to 50%, which hardly is going to happen considering the trends. Data showed that gross value added for agriculture and allied activities in 2018 to 19 remained flat at 3.8%. This also suggests that farm product prices, which rose by 1.1% in 2017 to 18, showed a 0% rise in 2019. On the other hand, the Food Safety and Standards Authority of India has conducted a study. The various spices samples such as cardamom, black pepper, and cumin were collected and analyzed. 54% of 1,242 samples were detected with pesticide residues. Most of them detected with residues of non-approved pesticides. Not saying this to scare you, but pesticides are potentially toxic to humans. They may induce adverse health effects, including cancer,
effects on reproduction, immune, and nervous systems. So what do we do? Should we stop farmers from spraying chemicals, or should we stop eating food to remain safe? Neither of them are the right solutions, basically. So this is exactly the question that bothered us. And when I and my friend Rishabh started the company called Bharat Rohan. And as it happens, the question that bothered us helped us to devise a solution. We found out that to remain sustainable, farmers, if they suddenly stop using pesticides, what they can do is not just suddenly stop using pesticides, but can certainly maintain a pesticide residue level and keep them below a threshold limit called maximum pesticide residue level, which basically is the maximum concentration of pesticide residue to be legally permitted in or the food commodities. Our interaction with the farmers located in numerous states have helped us understand that farmers need today is a support system that can help them in diagnosis of crop issue in early stages, and then provide them with an advisory to enable them to take an action so that crop issues can be controlled well before in advance. So to do this, we are using hyperspectral imaging, which is basically a spectroscopy method, which helps us detect the minuscule color changes occurring into a plant when it is subjected to different kinds of stresses. Those stresses could be when the plant is infected by a pest, or it is infected by a disease, or even when it is subjected to some micronutrient deficiency. So as human beings, we can only see three colors, which are red, green, and blue. And all the colors that we see are the combination of these three basic colors. What hyperspectral imaging enables us to do is to see beyond human perception. See more than 145 colors, and then the combination of these colors are represented to us in a form which enables us to detect very small changes through which the plant interacts with the nature and demonstrate the state of environment of that particular plant. This basically means that even before the plant turns yellow or brown when it is subjected to a disease or a pest infestation, we can detect that this plant is subjected to a particular issue and then provide alert and advisory to a farmer regarding what action should be taken to resolve that diagnosed issue. And when they can make actions in the right time, they can control the amount of pesticide that they are spraying on the field, reduce the frequency of the pesticides that they are spraying on the field, and overall reduce the usage and overall content of pesticide residue in the end product, which we as consumers end up consuming at the end of the day. What we are doing is partnering with the farmers right from the stage of pre-sowing, before even farmer takes the decision to grow a particular crop. We identify what kind of nutrients the soil would need using our drone-based models. We identify what are the pH levels in the soil so that we can suggest what kind of conditioning would be required in the soil that could enable them to grow the crop in a better manner. Then we monitor the deficiencies that are prevailing in their soil, followed by delivery of certified seed that they would need for the crop growth. Then we periodically provide advisory to the farmers and forecast about what kind of weather they can expect and what kind of actions they can take to follow the advisory. Then when the crop attains a particular height of say 10 to 15 to 20 centimeters, we start with our drone-based monitoring, which is basically an unmanned aerial vehicle equipped with a hyperspectral camera, which is a special type of camera that can see beyond perception, as I explained earlier. And then provide alerts to them about what kind of action would be required to be taken to resolve that issue. What kind of biochemical or chemical is required to be sprayed, in what amounts, and in which location in their farm. And when the crop is ready for the harvest, we
provide an indent to the farmer for the purchase of that commodity. And then when crop is harvested for us, and then we supply it to a larger buyer, which are basically the large hypermarkets, supermarkets, or FMCG companies that provide food to the consumers like us. What we also end up doing is provide end-to-end traceability, which means that every step of the crop growth can be managed and can be monitored by the food companies who are supplying farm ingredients and food products to the consumer. And by this monitoring, they can basically ensure what kind of practices are being followed, what kind of pesticides are being sprayed, and what are the frequency and amount of the pesticides that are being sprayed. So this basically helps us to control the amount of pesticide in the crop at the end. So the total solution that we are providing is the crop monitoring right from the stage of sowing until the harvest, diagnosing different issues like pest attacks, disease outbreaks, and nutrient deficiencies to ensure reduction of pesticide residue. Then an end-to-end outgrower program, which is anchored by technology to support farmers in growing better and make better decisions in the right time. Then complete traceability of the farm produce to ensure all the practices that are being followed on the ground are monitored and could be regulated based on this consumer requirements. And then supplying the safe farm products to the buyers like FMCG companies and to the export markets that could make the product ready for the consumers like you and me. We also provide an end-to-end monitoring platform, which basically means a planning, scheduling, and cultivation of to the farmer profile that these companies can basically monitor. And also there is the agriculture input management module where they can actually understand what kind of agriculture inputs are being implemented on the ground, and can completely monitor and observe the recommendation and that are going into the field, and also estimate the yield well in advance so that they can prepare better for the consumer requirements. So what we can do as consumers is to create a spur amongst the community and demand products which are traceable, which are free from pesticide residue, and which are basically we are aware of what is going into the field and what farmers are following in terms of the agriculture practices. And only then we can solve this problem where the pesticide residue levels can be monitored and managed and could be made safer for the human consumption. And at the same time, farmers are able to grow better with better profitability and are able to implement technology-based solutions on the ground to keep on feeding the world. That's all from my side. Thank you so much. Wow, that was a brilliant talk. Amandeep is touching the lives of 6,000 farmers across 10,000 acres of land. All the entrepreneurs who came today, Kalpit, Mohit, Amandeep, have a passion to change the world, and it is really inspiring to see that. It is time now to take a break from the relentless onslaught of idea-rich TEDx talks. So here's the first Instead session of the day. If you watched us live yesterday, you know that Instead sessions are live performances, interviews, and other kinds of fun activities in between TEDx talks so that you can recharge yourselves and be entertained. This is Manraj Singh. Manraj, let us switch on your video and we can spotlight you. Hi everyone. Hello Ishan. How are you doing? I'm doing awesome, Manraj. How are you doing? I'm doing great, buddy. I'm doing great. All right, let's do a short intro of you, and then we can have a little bit of a chat, and you go ahead with your performance. How does that sound? All right. So hi guys, this is Manraj Singh. This is your Manraj Singh, and I'm a poet, writer, storyteller, and a stand-up comedian. And by now, I'm an advocate as well.
So I'm an advocate at High Court of Nainital, High Court of Uttarakhand, Nainital. So यार इंट्रोडक्शन मतलब मेरे को ना बहुत फॉर्मल सा लगता है क्या ना, फॉर्मल अपने बारे में क्या ही बताना, दुनिया को अपने काम से जानना चाहिए ना, दुनिया अभी परफॉर्म करेंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग नहीं भी जानते होंगे they'll get to know who मनराज सिंह is and हम यहाँ पे क्या करना है. चलो बढ़िया. देन बस इतना डिस्क्लेमर दे दे, मनराज सिंह एक वर्सेटाइल शायर है, and he's a poet, he's a storyteller, he's an MC, but above all, he's a super talented guy. He loves TEDx. He has performed at 12 TEDx appearances. This is his 13th. Best of luck, Manraj. Carry it forward. थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच यार, तुमने पता प्रेशर डाल दिया. सी सो गाइस देखो, मैं ना स्टैंड अप कॉमेडी हूँ, मेरे से ना थोड़ा सीरियस बातें एक्सपेक्ट मत करना. आई नो कि TEDx इज अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म, बट द थिंग इज कि आई लाइक यार शेयरिंग स्माइल, खुशियां बांटनी चाहिए. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई रिमेंबर कि आई स्टार्टेड वो अलोन. मेरे को मैं हमेशा ये कहता हूँ ना, स्टार्टिंग में ना लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, धीरे धीरे होती है भीड़, ठीक है ना, जब आपका कंटेंट धीरे धीरे लोग पसंद करने पड़ते हैं, और उसके बाद होता है काफिला. तो ना ये जो लोगों से काफिला तक का सफर है ना, इसी के बीच में जिंदगी मिल जाती है. और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस कुछ कुछ पोइट्री सुनाऊंगा और आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा. तो आई एम श्योर जितने भी लोगों, प्लीज चैट बॉक्स में स्पैम करते रहना आपको जैसा भी पोइट्री लग रहा है. तो बिकॉज हम लोग स्कूल में हैं, और मेरी एक पोइट्री थी जो मैंने कभी अपने स्कूल के टाइम पे लिखी थी, तो उसका नाम है बचपन. तो जितने भी लोग मजे लेंगे प्लीज चैट बॉक्स में स्पैम करना, अच्छा लग रहा है आपको तो शुरू करते हैं कि आज मैं आप सबके लिए कुछ तो लाया जरूर हूँ. इस बारे में बात करने के लिए आज मैं बहुत मजबूर हूँ. जो मैं सुनाऊंगा आज वो तुम्हारा भी तो किस्सा है, एक यही तो है जो खुदा का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत हिस्सा है. हम उसे भूल गए हैं, वो हमसे बहुत नाराज है. उसकी यादें कहीं दिल में बसी हैं हमारे, और वो कहीं तो आबाद है. कल रात को जानते हो, जब मैं सो रहा था ना, तो मुझे एक सपना आया. उस सपने में कोई अपना नहीं लेकिन फिर भी एक अपना आया. कहा उसने मुझसे कि तुम भूल गए हो मुझे, मैं तुम्हारा ही तो हूँ. तुम भूल गए हो मुझे, ऐसी एक फरियाद आई है. मुझे आज फिर से मेरे बचपन की याद आई है. वो बचपन के दिन ना जाने हमें कितने याद आते हैं. चलो मिलकर कुछ देर के लिए सही हम दोबारा बचपन में जाते हैं. कैसे हम रईसों की तरह नानी माँ की गोद में सोते थे, और पापा की डांट सुनकर हम माँ की गोदी में छुप छुप के रोते थे. कुछ डरावने बाबाओं के किस्से भी तो थे, सब हमारे ही बचपन के हिस्से ही तो थे. गुल्लक जो थी ना हमारी, वो भी हमेशा करती रहती थी खन खन, और नहीं रहती थी हमें ज्यादा कभी किसी से कोई भी अनबन. वो दिन जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी माँ के घर को जाना होता था, और अगले दिन स्कूल न जाने का हमारे पास एक रोज नया बहाना होता था. बारिश होने पर बने तालाब में कागज की कश्तियां चलाते थे, या फिर तेज हवा चल जाने पर हम पतंगे ऊंची उड़ाते थे. 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे को यहाँ पर कितनी शान से लगाते थे. यह है मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान, हम जोर जोर से चिल्लाते थे. हर रोज स्कूल जाने से पहले हम अपने बस्तों को सजाया करते थे, और शाम को माँ की डांट सुनकर ही हम खेल छोड़कर आया करते थे. झूठ मूठ के खेलों को हमने कितनी सच्चाई से खेला था, जब हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन लंदन या यूएसए नहीं, बल्कि हमारे ही शहर में लगने वाला मेला था. न स्कूल था, न इंटरनेट था, ऐसा वो फसाना था. बचपन तो अपने आप में ही एक खूबसूरत जमाना था. छुपन छुपाई के खेल से लेकर घर घर के में मिलो दिलों के मेल से लेकर खिलौने की सेल से लेकर चोर पुलिस की जेल से लेकर बहुत कुछ पीछे छूट गया. आंख खुली और मेरा सपना आज फिर से अधूरा छूट गया. उम्र हमारी छोटी थी, लेकिन हम सपने बड़े देखते थे. हम हमेशा सख्त में सिर्फ अपने ही तो देखते थे. कुछ लोग जिंदगी से आकर चले गए, तो कुछ लोगों को जिंदगी से हमने निकाला है. ये जिंदगी के आस्तीन में हमने न जाने कितने सांपों को पाला है. बहुत खुश होकर हमने जिंदगी का एक पल भी खाया है, और कभी कभी थोड़ा मुस्कुरा लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में भी एक बचपन आया है. और खासकर जब स्कूल की बात करते हैं ना, तो आई एम श्योर एक जो लड़के और लड़कियां होती है ना, उनके कुछ कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं स्कूल में. तो जब स्कूल की बात करते हैं ना, तो एक फरियाद आती है. और जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो मेरे स्कूल की बहुत याद आती है. कैसे वो दिन थे, कहता था वो प्यार, जब हफ्ते में 6 दिन इंतजार करने के बाद आता था इतवार, और सपने होते थे हमारे लड़कों के कि सुबह सुबह इतवार को क्रिकेट खेलने जाएंगे, या फिर हो गई किसी दोस्त की किसी से लड़ाई, तो उस लड़के को पेलने जाएंगे. और स्कूल तो हमें रोज ही आना होता है. वो शायद पढ़ाई नहीं, बल्कि हमारी क्रश को देखने का बहाना होता है. और कभी खुद की क्रश तो कभी दूसरों की क्रश पर एक ट्राई तो बनता है. और जो क्लास में लड़का होमवर्क करके आता है ना, वही असल में गली बॉय बनता है. न जाने क्या हुआ ये
ये कैसा अफसोस है। और भाव भी हमेशा उसी को मिलता है जो दिखता एकदम थानोस है। हंसते हंसाते स्कूल के ये दिन बीत जाते हैं। सुनना भाई, मिलना जरूर, कॉल करना मुझे। ये बातें बहुत सताते हैं। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि जो चीज जितनी पास है उतनी दूर होनी चाहिए। जो चीज जितनी पास है उतनी दूर होनी चाहिए। चाहे व्हील चेयर पर गुजरे बुढ़ापा तुम्हारा, लेकिन जवानी मशहूर होनी चाहिए। जवानी मशहूर होनी चाहिए। और आई एम श्योर ये पहली एक पोइट्री थी। एंड स्कूल से ना हम सब एक सपना देखना शुरू करते हैं कि हम लोग एक्चुअली में क्या बन रहे हैं, हम लोग लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि हम सबको पता है कि हमें एक्चुअली में क्या बनना है। बट क्या वही सपना जिंदगी है हमारी? वो शायद हमें लाइफ में आगे जाके जब हम व्हेन वी मूव ऑन, हमें तब रियलाइज होता है। तो सपनों पे कुछ इस तरह लिखा था कि यूं ही अंधेरी रात में देखा हुआ सपना सपना नहीं है। यूं ही अंधेरी रात में देखा हुआ, थोड़ी मोटिवेशनल पोएम है तो इसको पकड़ना कि यूं ही अंधेरी रात में देखा हुआ सपना सपना नहीं है। सपने तो वो हैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर कहें कि देख, मेरे सिवा तेरा कोई अपना नहीं है। सपने वो जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा वजूद है। सपने वो जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा वजूद है। सपने वो जो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहें कि देख देख, जिंदगी के सफर में तेरा सच्चा हमसफर तो खुद है। सपने वो जो तुम्हें कभी चैन से सोने ना दे। सपने वो जो तुम्हें सपनों के सिवा किसी का होने ना दे। सपने वो जो तुम्हें कभी संभव तो कभी असंभव लगे। सपने वो जो तुम्हें पूरा करने में न जाने कितने दिन लगे। सपने वो लेकिन जब कभी मुकम्मल हो तो लगे जैसे तुमने पूरा आसमान पा लिया हो। ऐसा सुकून मिले जैसे मानो तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान ने तुम्हें गले से लगा लिया। यूं ही सपने यूं ही संभव हो जाए, इतने आसान ये मंजर नहीं होते। शहर में जैसे बने हुए सभी मकान हमारे घर नहीं होते। जब जिंदगी के सफर पर चलोगे ना तो देखना, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, उनसे लड़ना होगा, उनसे पार पाना होगा। तुम्हें हार को हराकर जीत के आना होगा। अगर यही हार को हराने और जीत के आने का हौसला तुम्हारे पास आ जाए, सपनों को हासिल कर लेने का फितूर अगर तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा जाए, तब देखना आएगा वो दिन जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। जो तुम्हारे और तुम्हारे जिंदगी के सफर का इकलौता प्यार था। आएगा वो दिन जब एक दिन बेवक्त बेमौसम बरसात होगी। इस पल की गवाह सारी कायनात होगी। और बहुत खूबसूरत मंजर होगा वो तुम्हारी जिंदगी का, जिस दिन तुम्हारे सपनों से मुलाकात होगी। तो सपनों से मुलाकात तभी होगी जब आप लोग गए सपने देखोगे। एंड आई एम श्योर जितने भी 147 और पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, ये लोग सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं है, यू गाइस आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ टुमारो। तो मैं चाहता हूँ कि सपने गाइस तभी पूरे होंगे जब आप सब लोग मिलके सपने देखेंगे। और एक पोइट्री है मेरी हिंदुस्तान, मैं उसको कभी परफॉर्म नहीं करता हूँ, बट सिंस दिस इज द TEDx प्लेटफॉर्म तो मेरे को लगता है कि ये एक एकदम सही जगह है जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और बिकॉज यूथ लोग ज़्यादा है, तो इसका टाइटल है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान आप सबसे बात कर रहा है और प्लीज हिंदुस्तान का दर्द समझने का ट्राई करना। तो हिंदुस्तान कहता है कि फिर से आ गए तुम लोग मुझे सुनने के लिए। आ गए ना? फिर से आ गए तुम लोग मुझे सुनने के लिए, रोज रोज वाला वही तमाशा देखने के लिए। आखिरी में मैं अपनी पहचान बताऊंगा तुम्हें, तुम सबकी गलतियों का एहसास दिलाऊंगा तुम्हें। मैं वो हूँ जो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ जहन में बसा हूँ। याद नहीं मुझे कि आखिरी बार मैं कब खुल के हंसा हूँ। अरे शर्म आती है या नहीं तुम्हें अपने आप पर, या फिर तुम गर्व महसूस करते हो अपने किए हुए पाप पर? चलो आज बैठकर चलो आज बैठकर इन्हीं सब बातों का हम हिसाब लगाते हैं। शिकायतें एक दूसरे से आज हम बेहिसाब लगाते हैं। अरे मैं तो रणभूमि में सभी वीरों की शान हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का मेहमान हूँ। न जाने कितनों ने शहीदी दी और कितनों ने जख्म सहे। प्रणाम करता हूँ उन वीरों को जिनका लहू मेरी खातिर बहे। धन्य है वो माएँ जो अपना कलेजा बड़ा करके अपने बच्चों को सेना में भेज देती हैं, या फिर वो पत्नियां जो मुझे अपनी सिंदूर की बलिदानी रोटी देती हैं। वो बाबा जिसने अभी अभी कुछ देर पहले अपने बुढ़ापे का सहारा गवा दिया, या फिर वो बच्चा जिसने अभी अभी है जन्म नया लिया। मेरे सीने पर बैठकर तुम क्यों एक दूसरे को जलाते हो? रंग रंग के खेल में तुम किसको जिहादी कह जाते हो? तुम्हारे धर्मों ने रंगों को चुना है, क्या तुमने भी कभी किसी दूसरे धर्म को खत्म करने का ख्याल बुना है? कि भगवा हो गया हिंदू का और हरा हो गया मुसलमान का। कोई बच्चा है राम का तो कोई इस्लाम का, लेकिन दोस्तों इसके बीच में एक सफेद रंग भी तो है, जिसका मतलब अमनो चैन और शांति ही तो है। माना कि मैं 3 रंगों से रंगा हूँ,
लेकिन मैं तो तुम्हारा एक ही तिरंगा हूँ। तुमने अपने तिरंगे को नंगा कर दिया, अलग अलग रंगों का एक एक झंडा कर दिया। इन रंगों को तुम लोगों ने अपने धर्मों से जोड़ दिया, धीरे धीरे करके तुमने मुझे ही तोड़ दिया। मेरे सीने पर आरी चलाकर तुमने मुझे काट दिया। कि धर्म के नाम पे तुमने देश ही बांट दिया। कोई हिंदू कहता है मुझे तो कोई मुझे मुसलमान कहता है। रगों में लाल खून ही तो बहता है। किसी ने टोपी पहनाई है तो किसी ने हाथ जोड़े हैं। धर्म पे नाम पे तुम लोगों ने न जाने कितने बंधन तोड़े हैं। हाँ मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, हाँ मैं मुसलमान भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा तुम्हारा इकलौता हिंदुस्तान हूँ, इकलौता हिंदुस्तान हूँ, इकलौता हिंदुस्तान। तो थैंक यू सो मच यार जितने लोगों ने भी चैट पे लिखा है। एंड ईशान, आज की मेरी लास्ट पोएट्री, और जो कि सब लोग वो बोलते हैं, तो इसका टाइटल है काश। आई एम श्योर कई लोगों ने सुना रहेगा यहाँ पे। यस, यस हम लोग यस। फैन है काश के। तो काश की जो पोएट्री है, बिकॉज वो मैंने तब लिखी थी जब मैं खुद स्टूडेंट था। एंड जब मैं पोएट्री बोलूंगा ना, व्हेन आई विल रिसाइट द पोएट्री, आप लोग कहीं ना कहीं उसमें खुद को इमेजिन करना। और इस कहानी का ना, कहानी नहीं है, एक ना एहसास है। बिकॉज काश एक ऐसा शब्द है ना जो ना रिग्रेट को सिग्निफाई करता है। एंड आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में ना वो टाइम आता है कि जब हम सोचते हैं यार कि काश यार इस वक्त ये ना करके कुछ और कर लिया होता ना, तो यार लाइफ सेट हो जाती। तो इस एहसास तक जाना बस, और अपने आप को इमेजिन करना। और आई एम श्योर आप सब यहाँ से एक एहसास लेके जाएंगे मेरी तरफ से आखिरी 5 मिनट है। तो शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, ये तो मुझे भी नहीं है पता। तो चलो आज मैं आप सबको कुछ अपनी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद 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 अपने ही जीवन के बारे में मैं आज आप सबको बताता हूँ। बचपन से ही सबका लाड और प्यार मिला मुझे, एक बार नहीं 100 बार मिला। वो मैं इकलौता हूँ ना, सबकी नजरें मुझ पर ही रहती थी। इस दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं गुम ना हो जाऊं, इस वजह से सबकी धड़कनें सहमी सी रहती थी। लेकिन तभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जो आप सभी सामने बैठे हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर रचना होती है। घटना, घटना, घटना। आज भी आज भी वो याद करके दिल सहम जाता है। बहुत बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मन में वहम आ जाता है। चलिए घटना को यहीं छोड़कर चलते हैं थोड़ा पीछे, समय को मोड़कर। तो ये बात तब की है जब हम थोड़े से छोटे थे। अभी तो पतले दिखते हैं लेकिन तब हम थोड़े से मोटे थे। पिताजी ने कभी हार मानना सिखाया नहीं था, पर तभी तो हमने जीतने का हौसला बनाया था। मैं अक्सर अपने घर वालों से डील करता था, और डील करने के तुरंत बाद ही अपनी जीत की फील करता था। तो डील ऐसी रहती थी कि पापा कहते थे कि क्लास में कभी फर्स्ट आने पर कंप्यूटर मिलेगा, तो कभी स्कूटी, और कभी कभी मम्मी के छोटे छोटे काम करने पर मिल जाती थी मुझे फ्रूटी। जो मेडल्स मिले थे ना मुझे स्कूल से, जो मेडल्स मिले थे मुझे स्कूल से, वो पापा ने उस अलमारी में ऐसे सजाए थे जैसे मानो वो सभी मेडल्स पापा ने ही रेस में दौड़ करके पढ़ाई करके कमाए थे। पापा उन मेडल्स को देखकर बहुत खुश रहते थे, और हम भी उन्हें और खुश करने में, मेहनत करने में गुमते रहते थे। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कितना प्यारा फसाना लगता है। एक छोटा सा बचपन भी अपने आप में एक जमाना लगता है। उठकर गिरना, गिरकर उठना अच्छे से सीखा है मैंने, क्योंकि साइकिल भी कभी सपोर्टर वाली नहीं चलाई मैंने। तो ऐसे ही एक दिन मैंने अपने घर वालों से डील कर ली, और डील करने के तुरंत बाद ही अपनी जीत की फील कर ली। तो इस बार डील कुछ ऐसी थी कि पापा ने कहा, बेटा अगर 12वीं में तुम्हारे 90% आएंगे ना, तो मैं तुम्हें बुलेट लेकर दूंगा, बुल्ट। तो मैंने भी मन में कदम खाई कि पापा अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान आप पे वार दूंगा। दिन बीते, महीने बीते, बीत गए कुछ साल, या तो मैं लाइफ की पहली डील हारता, या बुलेट लेकर मचा देता मैं बवाल। 12वीं में मैंने सिर्फ परीक्षा नहीं दी थी, एक जंग लड़ी थी। इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल और अकाउंट की बैलेंस शीट मेरे कद से बहुत बड़ी थी। सोचा था बुलेट मिलेगी तो सबसे पहले पापा को ही पीछे बिठाकर घुमाने लेकर जाऊंगा। पापा सोचेंगे मेरा बच्चा समझदार हो गया है, ये देखकर थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊंगा। एग्जाम दिए, 1-2 महीने बाद परिणाम आने वाले थे। वो वही मई का महीना था जब आम आने वाले। रिजल्ट आया, नंबर भी थे मेरे 90%, लेकिन आंखें थी मेरी थोड़ी सी नम, क्योंकि उम्मीद से नंबर थे मेरे थोड़े से कम। वो क्या है ना कि बचपन से टॉपर रहे तो 90% भी कम ही लगते हैं। खैर अब तो जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं कि 60% भी अपने लगे। खुशी का माहौल था, चारों तरफ खुश थे, मम्मी पापा नानी सब लोग। उसके बाद घर में पूजा रखवाई, और उसका भी पड़ गया भोग। तब जल्दी तो रहती है मुझे, तो सोचा जिसके लिए इतनी मेहनत है, उसकी बात बिगड़ी जाए, पापा को बर्तन वाली बात भूली जाए, बताया जाए
कि पापा मैंने अपनी डील पूरी की है जिसकी फील अभी अभी परिवार में सबने ली है, बुलेट। बुलेट का मैंने पापा से जिक्र किया, पापा ने भी शायद अपने बैंक बैलेंस का फिक्र किया। पापा बोले ठीक है बेटा, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम्हें बुलेट मिल जाएगी, तुम थोड़ा इंतजार करो, तब तक तुम मम्मी से कम और पापा से ज्यादा प्यार करो। मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था बुलेट का, बुलेट का, बुलेट का नहीं, उस सपने का जिसमें मैं पापा को पीछे बिठाकर घुमाने लेकर जाने वाला था। वो सपना अभी कुछ ही दिनों में मेरा पूरा होने वाला था, लग रहा था ये जहां भी अपना होने वाला। तो पार्टी थी मेरे जन्मदिन की, पापा घर आए, पापा बोले मेरे शेर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा पापा वो सब तो ठीक है पर बुलेट का है? पापा बोले 1 मिनट रुको। पापा अंदर गए, वो जो वो जो मेडल्स मैंने जीते थे ना, तो पापा उन मेडल्स को एक बस्ते में डालकर लाए और बोले कि बेटा बेटा बुलेट तो देने के लिए नहीं है लेकिन ये है, तुम इस बार इससे काम चला लो। मैंने कहा पापा मजाक मत करो, मुझे मुझे बुलेट चाहिए। पापा जिंदगी में पहली बार खामोश थे और मेरे जहन में उमड़ रहा था तूफान, कैसे बताता, ये सिर्फ एक बुलेट नहीं थी, एक सपना था मेरा जिसे पूरा करके मिल जाता मुझे मेरा जहां। मैं बस्ते को वहीं छोड़कर घर से भाग आया रोते रोते, रोते रोते। शायद पापा ने मुझे फोन मिलाया, मैंने पापा का फोन काट दिया। हमेशा की जैसे अपना दर्द मैंने अपने आप से ही बांट। 2 घंटे तक फोन आने का और काटने का सिलसिला चलता रहा, फिर पापा के फोन आने बंद हुए और मम्मी के फोन आने शुरू। तो मैंने सोचा माँ की क्या गलती है, फोन उठा लेता हूँ। फोन उठाया तो माँ माँ रोते रोते बोली, राजा बेटा है ना तू, घर आ जा, देख देख सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा जन्मदिन है, हमें केक भी तो काटना है। मैंने अपने आप को शांत किया, मैं घर गया। मैं घर गया तो देखा देखा कि खुशी का माहौल अचानक अचानक गम सा हो गया। पूछा तो पता चला मेरे जाने के बाद पापा का दिल शायद थोड़ा थम सा गया था। तो ये था वो दिन जिसका राज है मेरे जहन में आज तक दफन, चुकी शायद उस दिन खरीदना पड़ता मुझे अपने पापा के लिए कफन। मैंने अस्पताल में फोन मिलाया, एम्बुलेंस आई, हम उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले गए थे। वो लम्हे मुझे पीछे कुछ साल ले गए थे। मुझे वो मेरी पहली डील याद आई जो पापा ने किस्मत ने मुझे अभी फील कराई। याद आए वो पल जब पापा मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। मुझे मेरे बचपन में पापा उनके बचपन की कहानियां सुनाया करते। याद आया वो मुझे मेडल्स का किस्सा जिसमें पापा भी समझते थे उनका भी बराबर का है। कभी सोचा ना था अनजाने में ही सही मुझसे से कर्म हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं डर भी सता रहा था कि सामने लेटे हुए बाबा कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सो जाएंगे। सामने लेटे हुए बाबा कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सो जाएंगे। वो बस्ता जो बाबा लाए थे अपने साथ, उस बस्ते को अपने पास लिया, उस बस्ते को खोला, यादों के मेडल्स के साथ उस बस्ते को टटोला। एक एक करके उन मेडल्स को मैंने बाहर निकाला। समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या कर डाला। दोस्तों जानते हो मुझे और शर्म तो कब आई, जब मैंने उसी बस्ते के कोने में बुलेट की चाबी पाई। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 चांटे अपने आप को ही मार दूं या फिर खुले मैदान में जाकर अपने आप को ही गाड़ दूं। आप सब वहां सामने बैठे हो और मैं खड़ा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ, बस शब्दों को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, थोड़ी सी सही लेकिन तुकबंदी बिठा लेता हूँ। आप सब मुझसे उम्र में काफी बड़े होंगे, लेकिन जब हम साथ में इस मिट्टी में पड़े होंगे कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं कहलाएगा। ये तो उसूल है जिंदगी का, जो आया है वो जाएगा। कुछ पहले तो कुछ बाद में जाएंगे। किसी को हम जलाएंगे तो कोई दफनाए जाएंगे। कुछ गलत नहीं चाहा था मैंने, फिर भी गलत हो गया था। मेरे अंदर का बच्चा भी शायद वो बस्ता लेते वक्त कहीं खो गया था। मैं जानता हूँ आप सबके अंदर का बच्चा भी कहीं खो गया है, या कहूँ तो आपके अंदर का इंसान ही कहीं से। और जानते हो कभी आप अस्पताल जाओ ना किसी भी वजह से, और आपको वहां कोई चिट्ठी पड़ी हुई मिले, तो इस चिट्ठी को उठा लेना। फिर मेरी तरह ही आकर तुम दुनिया को कहानी बता देना कि सब क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं नहीं जानता। सब लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे पापा ने मेरे लिए खूब पसीना दिया है। ये कहानी मेरी नहीं है, लेकिन अभी अभी आप सबके साथ मैंने इसको दिया है। अब सोचिए ये कहानी आप में से किसी की होती तो आप क्या करते। शायद उसी शिकस्त के साथ आप सब हर रोज मरते। ऐसा ना हो मरने के बाद तुम्हें जीने की आस रह जाए। जिंदगी को इसी लम्हे में जी लो, इससे पहले तुम्हारे होठों पर काश रह जाए। काश काश उस बस्ते को उसी वक्त खोल दिया होता। काश उस सपने के बारे में बाबा को बोल दिया होता। काश बाबा ने ही मुझे चाबी के बारे में बता दिया होता। काश इस बस्ते को खोलने का कदम मैंने ही उठा लिया होता। काश वो चिट्ठी उस दिन अस्पताल में पड़ी मुझे मिली ही ना होती। काश उस चिट्ठी में कहानी लिखी ही ना होती।
काश ये कहानी आज मैंने आप सबको सुनाई ही ना होती, काश किसी और बच्चे की दास्तां, काश मैंने आप सबको बताई ही ना होती, काश। ये काश एक ऐसा शब्द है ना जिसके साथ कितनी कश्मकश जुड़ी है। ये काश ही तो है जिसकी चुभन बहुत बुरी है। चलो काश किसी कश्मकश के साथ मैं आप सबको छोड़ जाता हूँ, आपके अंदर के बच्चे को थोड़ा बचपन की तरफ मोड़ जाता हूँ। कभी जिंदगी में कोई हारा हुआ शख्स मिले ना तो उसके साथ बैठना, बातें करना, उसको गले से लगा लेना, बच्चों वाली बातें करके तुम उसमें खोया हुआ बच्चा जगा दो। और कभी कोई इंसान को कोई खुशी देना तो उस खुशी को जरूर ले लेना, उस इंसान को उसके हिस्से का शुक्रिया भी जरूर दे देना। वो खुशी कोई बड़ा खजाना हो, कोई बस्ता हो, या महज एक गिलास पानी हो सकता है वो खुशी उस इंसान की आपके जीवन में आखिरी निशानी हो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच वनराज, आपने तो चैट देखा ही है, ढेर सारे हार्ट वाले इमोजीज आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, लवली पोएट्री। Now, I would just like to invite Pratima ma'am, our assistant director, to present a vote of thanks to you, and then we can break for lunch. Definitely. Ishan, sorry I'll butt in, but thank you so much. You just made our day. Thank you so much. इस समय पे हम आपके साथ हैं, ये हमारा नसीब है। प्रतिमा मैम आएंगी, शायद और शब्दों में ताना वाना आपको बता पाए, बट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। You made our day. Thank you so much, sir. My pleasure. वनराज, कुछ मौके होते हैं जिंदगी में जिनके लिए अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और भावनाएं जो है इतनी उत्कट हो जाती हैं कि अगर आप उनको व्यक्त करना भी चाहें तो शायद जिस शिद्दत से कहना चाहते हैं वो लफ्जों में बयां ना हो पाएगी। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पता नहीं कितनी दुआएं आपके साथ हैं, कितना साधुवाद आपको मिला है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जितने दिल आज आपने बटोरे हैं वर्चुअली नहीं, आप उनको सब अपनी झोली में लेके जा रहे हैं। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अगर बच्चों की बात करें, जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी बात करें, तो आई वुड से वो शायद कविता से और भावनाओं से और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रूबरू हुए हैं। आप दिल जीत के जा रहे हैं वनराज अपने साथ, और बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके हुनर के लिए। इसी तरह लिखते रहिए, इसी तरह बोलते रहिए और इसी तरह दिलों पे राज करिए। More power to you. This was absolutely riveting. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your kind words. Thank you so much, sir. Thank you, Ishan, for having me. And thank you, TEDxYouth Sunbeam. Huge shout out to you. You guys are doing an amazing job. काफी अच्छा lineup and all the best. Thank you, sir. वनराज, जाने से पहले एक और दरख्वास्त, जब भी समय मिले, जहां भी हो, अगर मौका मिले तो सनबीम जरूर आए, तो बनारस जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम जी, we would love to have you with us. Same here, ma'am. Thank you so much. Bye, everyone. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Manraj. To all of our attendees, we are a little bit behind schedule, but we know that this has been worth it. If you are watching us live, there's a feedback form that you can fill. Go to your browser bar, type bit.ly/TEDxFeed, TEDxFeed, bit.ly/TEDxFeed. This is a completely anonymous feedback form for the pre-lunch session. It is just one question long. Compliments will make our day better, but criticism will make our even better. So we will read your feedback. We will take action upon it in the post-lunch session if we can. Stay in the webinar, and we'll be right back at 1:45 p.m. Thank you so very much. Ms. B.K. Shivani, better known as Brahmakumari Shivani, Sister Shivani, or Shivani ji. Shivani ji, welcome to this session of talking, of course, with the Sunbeams and our viewers at large who have joined us on Facebook. Om Shanti. What many of us believe is that spirituality is something different from day-to-day living. That's, I think, it's the biggest myth. The biggest myth, the illusion that
ये दुनिया कुछ अलग है और वो दुनिया कुछ अलग है, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इस दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है तब आप उस दुनिया की तरफ जाते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ myths because we grew up believing कि spirituality is for when you are 70 or 60 plus, and so तब आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं. And that's probably because we do not understand what spirituality is. Spirituality is not about where you stay, what you wear. Spirituality is how you think. It's how you think, how you feel, how you speak, how you behave. So spirituality actually teaches us the art of right thinking. And if the thought is taken care of, then life will be taken care of. Thought is the seed of our life. So it's, if we look at the tree, the thought is the seed, and then comes the tree of our life. Whether it's our body, so physical health, whether it's our relationships, whether it's our education, whether it's our profession. सबका बीज जो है वो है मन है. मन है. Spirituality means a personality which is functioning from the consciousness of the spirit. Spirit means soul, atma. Atma matlab, when I will connect to you with the understanding that I am a being talking to another being, not a role, a position, a gender, a nationality, or a salary package. It's not an outer connection. It's a connection of a person to person connection. जो हम कहते हैं ना soul to soul connection. That soul to soul connection is spirituality. The spiritual personality मतलब जो आत्मा की मूल qualities हैं of purity, love, peace, happiness. जब हम अपने thoughts में, अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में वो original qualities of the soul of purity, peace, love and happiness जब हम उनको use करते हैं, then for those moments we are a spiritual personality. And all of us are a spiritual personality. So you don't have to wear a white dress to say that you are a spiritual personality. Each one is a spiritual personality. All that we need to check is how long in the day am I spiritual and how much time in the day do I move away from spirituality. Which means if I am calm, if I am accepting, if I am respectful, if I am powerful, in those moments I'm spiritual. If I am angry, agitated, stressed, worried, hatred, jealousy and the whole list, then in those moments I am opposite of spiritual. So that's spirituality. So whether you are an engineer, whether you are a doctor, whether you are a mother, whether you are a wife, whether you are a kid, whether you are a youth, spirituality is everyone's personality. It's only a choice that if you want to increase that personality during the day, if you want to shift from a life which says stress is normal, anger is normal, to shift to a life which says calm and stability, ease, even if there is a crisis outside, that is normal, then you make certain lifestyle changes. You practice something on a daily basis which allows you to increase your spiritual personality. That's all. Everybody is spiritual, but so there's no one who can say I'm not spiritual. It's not possible. Everyone is. You only need to increase the duration of that, because if we do that, then we will finish a lot of things from our life, and we will finish any mental health issue, we will finish any addiction, we will finish any stress and anxiety, we will finish conflicts in relationship, we will finish issues that are happening in the environment, because everything is from a mind which is not healthy. Not healthy. When we are not using our original qualities, everything in the world suffers. So spirituality is the foundation for healing the world. And so I think everybody just needs to increase the percentage of that within themselves. Okay, so a lot of myths just got busted here about being an academician and being a spiritual being. But I was just thinking that, you know, in our day-to-day life, as individuals, we essay a plethora of roles, as in you're a working woman, you're a mother, you're a sister, you're also an administrator, you're also looking after so many people. Now, does this multiplicity of roles ever overlap and cause the diminishing of spirituality? As in one dimension of myself, when I am being, you know, a leader of the people,
then certain values come to me and the practice comes to me easily. But in my own personal life, as a mother or as a father, I'm a different person. Does that happen? This contradiction of the spirituality content? No, it's just a choice. It's a choice. Spirituality means taking care of the sanskar. So let's say, as a principal or as an administrator, you have the sanskar of compassion. You have the sanskar of taking care. You have the sanskar of being very calm and peaceful. So, with all the children in the school, with all the teachers, and with everybody around you, you're very compassionate, you're peaceful, you are giving your best. It's not a put on, but you are genuinely giving your best to everybody. But then when we reach home in the evening, we feel we've come to our comfort zone. अब यहाँ तो I can just be whatever I want to be, and anyways I'm tired during the day. तो यहाँ पर मैंने छोटी सी बात में गुस्सा कर दिया. So it's not that I shifted in my spirituality, it's just that I chose to use my sanskar of anger, which I chose during the day not to use that sanskar. It is a sanskar. We have all the sanskars here. We choose like a child. A child cannot shout at a teacher, but a child can come out and shout at their friend. So the child is choosing whom to use the sanskar of anger with, and with whom to use the sanskar of keeping quiet, and with whom to use the sanskar of being respectful. Spirituality just means that you be that way with everyone always. So it's just building up your stamina. This is an emotional stamina, that, building up your emotional stamina to be your best health always. But otherwise, we're just using when to do, what to do. Okay. And then, since we are going to be talking about stress, now this is a much used word. Everyone is stressed. Today, a 5-year-old goes to the mother and says, "Itna online padhai kar liya, I'm stressed." The mother says that I'm working from home and I'm also managing the children. I'm stressed. The father says, there are so many expectations from my boss. I am stressed. And now, yeah, stress. आखिर होता क्या है? Is it external? Is it because of external factors or we stress ourselves? How do you perceive? तो वही तो बात है ना, हमें उस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, लेकिन तो भी हम उसको यूज करते रहते हैं सारा दिन. It's a word which we just picked up from each other and we started using the word. अब एक 5 साल का बच्चा ये कह सकता है कि I've studied a lot throughout the day on the screen. My mind is tired. I need rest. Perfectly fine. तुम रेस्ट कर लो. So थकावट तो हो सकती है, लेकिन the child was taught the word stressed by people around them because they came home from work and they said, I am stressed. They never said, I am tired. If the parent would have come home from work and said, hum thake hue hain. Today the child also, after finishing his share of the work, would have said, main thaka hua hu. But the parent came home and said, I am stressed. So who's going to teach the child the vocabulary? So the child is also saying, I am stressed. And so when everyone around says, I am stressed, you are stressed, we are stressed, it just becomes our vocabulary, and any word repeated many times starts becoming our reality. It's an affirmation we start creating. I am stressed, I am stressed, I am stressed. अब आज से अगर हम सिर्फ vocabulary को ही change कर दें और कुछ भी नहीं change करें, अभी सिर्फ vocabulary को ही change कर देते हैं कि I have finished my studies, so physically I'm a little tired, otherwise I'm very happy and fine. Just physically, I'm a little tired, so I need to take rest. Otherwise, I'm perfect. I am perfect here. I'm happy here. I'm peaceful here. I'm a little tired here. I will take 30 minutes rest and I will be fine. Only the child needs to start talking like that. सिर्फ बोलना है वैसा, because that is a reality actually. 5 साल के बच्चे को किस बात का स्ट्रेस हुआ है? कुछ भी नहीं है. स्ट्रेस इमोशन ही नहीं पता है actually. So stress is an equation. That stress is equal to pressure divided by resilience. That's an equation in science. Stress was a word in science. Actually, it's not a word in emotions at all. So stress is equal to pressure divided by resilience. Pressure is outside things. So जैसे वो बच्चे के लिए ऑनलाइन पढ़ना pressure, वो मम्मी के लिए पूरा दिन काम भी करना और घर का भी संभालना pressure, वो पापा के लिए सारा बिजनेस संभालना pressure. So these are all the numerators of all of us. But stress is not equal to the numerator. Stress is equal to the numerator divided by resilience. Today, COVID is a numerator. COVID is a numerator.
इट्स अ प्रेशर। लेकिन हमने कहा फियर तो नॉर्मल है, एंजाइटी तो नॉर्मल है, चिंता तो नॉर्मल है। नन ऑफ दीज वाज नॉर्मल। कोविड वाज देयर, लेकिन क्राइसिस बाहर था, बट इनसाइड वी कुड हैव बीन काम had we been taught to be that way and had we been taught now to be that way। लेकिन हम एक दूसरे को बोलते हैं चिंता तो होगी, सामने वाला बोलता है हाँ राइट बात है चिंता तो होगी, एंड फिर इकट्ठे मिलके हम चिंता और डर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एंड वेरी सून इट्स इन द एयर and the children start absorbing it and they start using the same word because they start catching the same emotion and they say मुझे भी डर लग रहा है, कोविड है ना मुझे भी डर लग रहा है। बच्चे को क्या डरने की जरूरत है, वो सेफ है, सिक्योर है घर के अंदर, वो कोविड घर के अंदर घुस के नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन डर तो घुस के आ सकता है ना। कोविड नहीं आ सकता था हमारे घर पिछले 6 महीनों से, लेकिन डर आ सकता था, चिंता आ सकती थी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, एंड रेजिलियंस मीन्स माय कैपेसिटी टू फेस माय प्रेशर। अब सारे 5 साल के बच्चे, ऑल द 5-year-old किड्स सारे ही पढ़ते होंगे, एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, सारे ही पढ़ते हैं। बहुत सारी की मम्मीज भी काम करती हैं एंड ऑलमोस्ट सबके पापाज भी काम करते हैं। सो दिस इज नॉट सम out of the world scenario, this is a common scenario in everybody's life. So the pressure, the numerator is in almost all the lives, but the denominator is different for each one, and that's why the stress factor will be different for each one. तो कोई बोलेगा आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, कोई बोलेगा आई एम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड, कोई बोलेगा आई एम हैप्पी, कोई बोलेगा आई एम परफेक्टली फाइन। स्ट्रेस किस बात का है, लेकिन पढ़ाई तो सबने की, काम तो सबने किया। सो इट्स द डिनोमिनेटर, इट्स द डिनोमिनेटर कि यहाँ की शक्ति कितनी बढ़ाई है रोज, दैट्स इमोशनल स्टैमिना। इट्स लाइक क्लाइंबिंग अप 3 flight of steps। सब चढ़ेंगे, लेकिन कोई फटाफट से चढ़ जाएंगे, कोई थकते थकते चढ़ेंगे, कोई हाफते हाफते चढ़ेंगे, कोई रुकते रुकते चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ सारे जाएंगे। लेकिन हाउ वाज द जर्नी? How was the journey of climbing those 3 flight of steps depends on the physical stamina of the individual. So what's the journey of crossing the situations in life depends on the emotional stamina of the individual. तो जिन्होंने अपने emotional stamina का daily basis पर ध्यान नहीं रखा, जैसे हम अपने physical stamina का ध्यान रखते हैं, हमें अपने emotional stamina का भी रखना है। अब जिन्होंने ध्यान नहीं रखा, वो हाफते हाफते अपने जीवन को काट रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन थका हुआ, मन थका हुआ, बिकॉज स्टैमिना कम है। और जो अपने स्टैमिना पे रोज काम करेंगे, वो भी उसी चैलेंजेस को क्रॉस करेंगे, लेकिन जैसे सीढ़ियां भाग कर कैसे कोई पहुंच जाता है ऊपर, बिल्कुल वैसे ही पहुंचेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर आई एम डूइंग एनीथिंग ऑन अ डेली बेसिस टू बिल्ड अप माई इमोशनल स्टैमिना। इमोशनल स्टैमिना कोई अपने आप नहीं क्रिएट होता, वी हैव टू बिल्ड इट अप because we are doing a lot of things to deplete it. 30 years back, we had to do nothing much to build up emotional stamina. वो अपने आप ही ठीक था हमारा स्टैमिना, लेकिन हमने 20-30 सालों में बहुत कुछ किया जिससे वो स्टैमिना घटा। We have done things which has reduced our emotional strength, and that's why we have to do things which can build up our emotional strength. Wow, so many takeaways for the parents who must, of course, change the vocabulary because children are listening and are obviously imbibing. Should never say I am, fill in the blank, should never have a negative word there. Should never have a negative word there. I am, fill in the blank, should always be a very, very positive, powerful word, because you are creating your identity. You are recording an affirmation here. You're recording an affirmation. So I am and you are, very important. So a lot of us as parents and teachers, we have to talk to our children, and often we say you are like this, you are like this, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। हमें लगता है कि वो reality है and we are talking reality, but our vocabulary is becoming their identity. Our vocabulary becomes their identity. Tomorrow they can be 20, 30, 40 years old, but they hold on to that line. I am slow. मेरे से नहीं होता है, मैं थक जाता हूँ, मेरे से चीजें टूट जाती हैं, मैं बातें भूल जाता हूँ, मेरे से चीजें गुम जाती हैं। क्यों?
because मेरे मम्मी पापा ने बताया था, वो बच्चे ने अभी तक पकड़ के रखा है. So what we say to them about them becomes their identity. So I am fill in the blank and you are fill in the blank should always be a very, very positive, powerful word. Where we are is where we choose to be. And we cannot generalize it. It's not general. It's very, very specific and very, very individual. It's an individual choice. Like we choose what to eat, what to drink, what to wear. Similarly, we choose what to think, how to feel, how to speak, how to behave. It's a choice. We cannot generalize it that mothers are like this or women like this, girls are like this. No, not at all. I would not agree with that at all. Not at all. Not at all. We have amazing women who are balancing their work, their home, their children, and they are doing a lot because we all have so much power and so much capacity that we can do a lot. It's only that we need to take care of our mind while we are taking care of everybody else. That's the only thing. It's about it's like physically. If I do a lot of work, but I don't take care of my body, if I don't eat well, if I don't sleep well, then I'll get fatigued. And then if I get fatigued physically, then I'm not able to give my best into what I want to do because I'm fatigued. अब फटीग्ड एक दिन कोई बात नहीं, फटीग्ड 2 दिन कोई बात नहीं, थके हुए 5 दिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 साल से थके हुए, अगर 10 साल से थके हुए, तो फिर कैसे कर पाएंगे? So same thing happens with the mind. Because we are not taking care of the mind on the daily basis, so we get stressed, so we get disturbed. और तब जब वो ऐसा होता है तो हमारे पास शक्ति नहीं होती, हमारे पास ताकत नहीं होती है रिश्तों में अपनी एनर्जी देने के लिए. रिश्ते means we have to radiate our energy into our relationships. Relationship is about energy. Relationship is not about things. Relationships is not about what we buy for each other. Relationship is about what we radiate to each other. But if I'm stressed, then I will radiate stress. If I'm worrying, I will radiate worry. If I'm calm and peaceful, I will radiate that. I do not need to buy anything to make anybody feel that I love them. I buy it because they need it. So my buying the object is not equated with love and happiness. Buying the object is based on the need or the requirement of that object. लेकिन क्योंकि हमारे पास शक्ति कम होती गई, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे थे, तो हमने खुद के लिए सोचा, बच्चों के लिए नहीं, हमने खुद के लिए सोचा that when I buy this, I will feel good. When I eat this, I will feel good. When someone gives this, I will feel good. Because I was looking for something to feel good. मुझे कुछ तो चाहिए था ना to feel nice. But वो feel nice उन चीज़ों में नहीं था. So then I thought I'll buy one more thing. I will get one more thing. It just went on and on and on because वो feel good उन चीज़ों में था ही नहीं. And because I did that for myself, I thought मैं अपने बच्चों को भी वो सारी चीज़ें दूँ by which they will feel happy. So we worked very hard to give them all. All that we need to do is spend some time on a daily basis to take care of that mind which is taking care of so many people during the day. हमारा मन बहुत कुछ कर रहा है सारा दिन, हमें बस डेली बेसिस पे अपने मन का ध्यान रखना है. जब हम अपने मन का ध्यान रखेंगे, हमारे पास रिश्तों में देने के लिए सारी शक्ति है. We have lot of power to give in our relationships. Then that emotionally strong, emotionally healthy soul. So what you experienced with when you met your grandmother, emotionally very calm and stable. She's very easy and pure in the sense she's not stressed, she doesn't have anxiety. तो जब आप उनके पास बैठे, आपको वो flow of energy experience होती है. Then we get that emotionally comforting feeling being in her presence, and that is a feeling which we need to radiate to every relationship, whether it's grandparents, whether it's spouse, whether it's children, whether it's friends, whether it's strangers. So it's like the fragrance. It's like the perfume we wear. The perfume you use is the fragrance which everyone around you will get. So when we take care of our mind on a daily basis, we will radiate a perfume of unconditional love and acceptance, and people around us will experience that. We will be able to manage all our roles, all our relationships with ease, with absolute ease.
provided we take care of the mind who's going to radiate the energy into that relationship. And how to do that? We'll talk about it aage, after the rest of the questions. Okay, done. Right. Thank you Thank you so much. I'm going to ask Tanisha Agrawal from SunbeamBhagwanpur College to please unmute herself and ask her question. Tanisha, if you're here. Tanisha Agrawal is here. All right. Then we will move on to Smriti Pandey of Sunbeam Bhagna College. F में इंग्लिश कौन ले रहा है और जी में जय हिंद मैम, ओम शांति। नहीं हो, मान लो अगर F में चंद्रिमा को बुला रहे हैं हम लोग, F अगर उसका Can I request everyone to please mute themselves? Yes, Priti. Jai Hind, ma'am. Om Shanti. Ma'am, since I get up early in the morning, sitting in silence in the morning at that time of the day, it seems as if I gain a better understanding of my own self and also a better perspective of everything around me. But this state of mind gradually fades away as I proceed for the day. So maybe, as you said, that is my spiritual moment of the day, maybe. So I would like to know, how is it possible to maintain that peaceful state of mind in the everyday, maybe rush of life? And if it's possible, then through what practices can I achieve that? Okay, very nice. One, congratulations that you take out time to be with yourself in the morning. That itself is a huge, 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 huge achievement. And it's an excellent thing to do right from this age, because once you create a sanskar of doing it now in student life, it will remain your sanskar forever. It will be always your sanskar. So now let's see what we're doing in the morning and now how to take this during the day. So what we do first thing in the morning, which all of us can start doing to take care of the mind, is first thing in the morning, don't check your phones. Everybody, whether it's children, but whether it's also adults. Emotional health. We're talking about emotional health here. Emotional health based on our emotional diet. And our emotional diet is what we watch, read, listen. What we watch, read, listen is who we become. So what happened 20, 30 years back when I was in school or college, at that time, there was no source of media and social media. You see? So by default, there was nothing much going in. There was nothing much going in terms of emotional diet, because our only source of watch, read, listen was parents, teachers, and a lot of good books. That's all. But then while we were in school, we got our first television. Then it was the first one episode serial which started on a Sunday. So we grew up at that time. And there was, of course, no internet, no computers, nothing. So not to say that they are not good, they are excellent. They've made our life very, very easy and very comfortable. But what happened to this era now, when we are now? Now we have information at every click. At every click, we have information, right? There is content. We are consuming content at every click. Now, if you want to become emotionally strong, then just check what you watch, what you read, what you listen. What you watch, what you read, what you listen. So what we watch, read, listen is the source of our thoughts. So what we will watch, read, listen will become the quality of our thoughts, and the quality of our thoughts will become our sanskar. Now, if I consume content which has aggression, which has anxiety, which has fear, which has jealousy, which has comparison, which has criticism, and the whole list. If I consume content which has lust, which has ego, which has anger, which has any of these emotions, then if I consume that content, then I start creating those emotions.
I start creating those emotions. It is just as simple as what we eat and drink, our body starts becoming that. So what we watch, read and listen, our mind starts becoming that. Now, just detach and check out the quality of content that we are exposed to today. The quality of content, whether it's media, whether it's social media handles, whether it is our digital platforms. So just watching, reading, listening, we are consuming those emotions, and that's creating our emotional diet. So first thing in the morning, we don't look at the phone for at least an hour in the morning, because the mind is like a blotting paper in the morning. Whatever will be the first layer of information in the morning is what the blotting paper will absorb. So everyone, especially the elders, maybe the children don't do it, but the elders definitely do it, that we do not check our phones for at least an hour in the morning, which means we do not consume the world, not even what's happening in the world. We don't need to know what's happening in the world first thing in the morning. It's not needed. We are not going to consume the world. We want to change the world. This world needs a lot of things which need to be changed. But if I keep consuming the world, then I keep becoming like the world. And the more I become like the world, the more the world will become that. The more the world will become that. Look what has happened in the last few weeks. And everybody will say, how could somebody do that with that little girl? But what have we decided today? What am I going to do on an individual basis so that I finished any crime related to lust from society? Forget only, just let's take one crime, that there will be no trace of abuse, rape, or any such crime in society. What is my contribution to that? Can I do something? Or am I going to just sit back and say, how could those people do something like that? And how am I going to get scared? Okay, oh, the world is not nice. The world is what we make it out to be. The world is what we will make. So when we hear that something like this happened, immediately we had to take a decision that we will eradicate lust from our lives. And which means even as children, we will not watch, read, listen a single piece of content, whether it's a joke, whether it's a movie, whether it's some message or some video which anybody is forwarding. I will not consume a single piece of content which has a single trace of lust. Promise yourself that you are empowering yourself. You are empowering yourself and you are radiating vibrations of purity. Day after tomorrow, we're going to start celebrating Navratri. It's purity, it's divinity, it's power, it's Shakti. So we need to radiate that. So first hour of the morning is extremely important, that don't consume anything. And last hour before you go to sleep. Last hour, what we consume is going to decide our quality of sleep. Then to be emotionally healthy, sleep right, which means sleep at the right time. Sleeping patterns are having a very, very deep impact on our emotional health, also on mental health. So which means depression and other things that are happening with mental health. A very big reason is sleep hygiene. बिकॉज आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे रात को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी रात को पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. 2-4 ने कहा, 5-6 ने कॉपी किया एंड बहुत जल्दी हम एक ऐसे ईरा में आ गए जो हमने कहा दिस इज द राइट वे टू बी. So we switched, we completely switched. So what happens in the night, our blotting paper is saturated. पूरे दिन का silence is there outside. Inside there is no silence because the blotting paper is saturated during the day. Scientifically also, the right time to sleep is by 10 o'clock. And if you sleep by 10, you will be awake by 4 or 5. Latest 5, 5 बजे तक तो उठ ही जाएंगे अगर 10 बजे तक सो गए हैं अच्छी नींद. एंड अगर आप 4-5 बजे उठकर सुबह पढ़ेंगे, then मेहनत कम and result ज़्यादा मिलेगा. Result means you will and emotionally strong होंगे. So set your sleeping pattern right. 1. Slept just before sleeping, no consuming anything, no consuming any content for an hour before we sleep. No consuming any content from the world first hour when we wake up. Now, at least 20 minutes of consuming a healthy emotional diet.
This is where spirituality comes in. 20 minutes of consuming, which means watching, reading, or listening what you want to become. Now, how do you want to be during the day? You want to be happy. You want to be powerful, high willpower, focused and concentrated. You want to be peaceful. You want to be able to accept and forgive people. What you want to be during the day, you will have to consume that in the morning. इट्स लाइक योर खुराक. आप सुबह सुबह अच्छा नाश्ता खाकर जाओगे तब आपका शरीर हेल्दी रहेगा ड्यूरिंग द डे. नहीं तो थका हुआ लगेगा दिन में अगर सुबह नाश्ता ही नहीं खाकर निकले थे. कुछ बच्चे तो नाश्ता खाकर नहीं आते तो उनको चक्कर आ जाते हैं स्कूल में जाकर. तो टीचर सबसे पहली चीज क्या पूछेगी? डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? फिजिकल हम सारा देखते हैं कि कैसे होता है. सिमिलरली, डिड यू हैव योर इमोशनल डाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? अगर नहीं खाया तो फिर सारा दिन में गुस्सा आ ही जाएगा, इरिटेशन हो ही जाएगी, चिल्ला भी देंगे कभी कभी किसी पर, कोई कुछ कहेगा तो बुरा भी लग जाएगा, रोना भी आ जाएगा. दिस इज ऑल इमोशनल वीकनेस. सो पुट इन एटलीस्ट 15 minutes as a student, at least 15 minutes of consuming positivity first thing in the morning. It's your nutrition. It's your nutrition. इसको खुराक देनी है. क्यों देनी है? क्योंकि सारा दिन में आपके चारों तरफ दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है. That's it. When I was your age, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. आज देने की जरूरत पड़ रही है because the opposite is in the air. The opposite is in the air. जब हवा polluted हो तो योगा प्राणायाम ज्यादा करना पड़ता है. जब हवा ही साफ होती थी तो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. So the more the factors outside change, we have to strengthen ourselves. So just put 15 minutes of nutrition in the morning for yourself. 15 minutes. कोई वीडियो, कोई किताब, कोई स्पिरिचुअल स्टडी बुक, आप कुछ भी चूज कीजिए, लेकिन 15 minutes कंज्यूम अ पॉजिटिव डाइट. कंज्यूम अ पॉजिटिव डाइट. थोड़े दिन जब आप कंज्यूम करने लग जाएंगे, विद इन 15 days or 1 month, you will start seeing a shift here. You will start becoming what you are consuming. You will start becoming what you are consuming. That is for certain. And last thing, during the day, just take little care how you respond to every scene of life. This is like a battery. आपने सुबह इसको चार्ज करना है और सारा दिन ध्यान रखना ये बेकार की बातों में वेस्ट ना होती रहे. ऐसे इसने कुछ बोल दिया, गुस्सा, इसने कुछ बोल दिया, अच्छा इसके साथ गॉसिप, फिर इसने कुछ कहा तो उसकी बात चारों को सुनाई. This all depletes my emotional health. So being with everybody, being good friends, taking care, cooperating, not engaging in negative conversations because that's a depleter for me, not listening from here and saying it over there, that's a depleter for me, not reacting when people are not my way, that's a depleter for me. So energizing the battery in the morning and taking care of the battery during the day, within a month, you'll be an emotionally different person. Within a month, it's not going to take longer than that. It will take only a month, maybe lesser than that, but maximum, only a month to start seeing the shift in the emotional stamina. फिर आपके जीवन में कोई भी बात आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, you will remain very stable and strong to face the challenges of your life. Face the challenges of your life. And that's the most important need of the hour. क्यों डिप्रेशन बढ़ रहा है? क्यों बच्चे मुझे जीना नहीं है और ऐसा कुछ करने की सोच लेते हैं? What is happening? Emotional stamina very low. Very low. जीवन में छोटी सी कोई बात आती है and we receive so many emails which said, oh, I was in a relationship. The other person said, no, now I don't want to live. ऐसी वाली emails आती हैं. Now I don't want to live. Not having the power to face a no from somebody. So this all power है. This is an emotional stamina. ऐसे नहीं है कि पहले लोगों को नो नहीं सुनना पड़ता था, या पहले लोग फेल नहीं होते थे, या पहले जो हमें करियर में जाना था वो हम नहीं जा पाते थे. Everything used to happen. Everything. आज तो लाइफ बहुत इजी है. So much communication, so many facilities. कुछ भी नहीं था. Can you visualize student life? Leaving in the morning to school, the parents cannot track you till you come back home in the evening. No internet, no phone, nothing. But emotional stamina ज़्यादा था, तो चिंता नहीं होती थी, डर नहीं रहते थे रोज सारा दिन कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ होगा कि नहीं, कुछ होगा नहीं. Emotional stamina. So we don't blaming the world. We're definitely not going to blame the world. We're just going to say, I'm going to build up my emotional stamina on a daily basis.
एंड जो तो आपने अभी इस एज से करना शुरू कर दिया, सो आप देखना, you will be always emotionally and mentally very, very strong. Doesn't matter what life has to offer. Doesn't matter what life has to offer. And then you will be able to radiate this power, your values, your qualities in your every role and relationship. So tomorrow you can be a leader, tomorrow you can be someone's wife, day after tomorrow you can be someone's mother. Roles and responsibilities will change, but all that power will radiate to everybody. And that's what is success. Then you can call yourself a successful individual. Only marks, performances is not success. That's only one part of life, a very teeny weeny one part of life. But then you're truly successful because you will be happy, you will be healthy, you will have beautiful relationships, and you will do very well at what you choose to work there. That's balanced. Every aspect of life, that is success. So achieve that success. Don't think success is only this one thing. That is only one leg of the table. There are 4 legs of that table. And that table will only stand if all 4 legs are same. Equally emotionally strong, equally physically healthy, equally socially good relationships, and professionally doing very well. तब वो जीवन की टेबल ठीक खड़ी रहेगी, नहीं तो वो ऐसे ऐसे ही होती रहती है. एक टेबल, एक पैर कभी ऊपर हो जाता है, एक कभी नीचे हो जाता है. That's success. So once we understand and prioritize that, we will achieve it. It's very simple. बहुत simple तो बहुत है, सिर्फ करना है. So Smriti, you've Thank got you so much. Yes, ma'am. being chartered. Please go to you. Thank you so much, ma'am. So after a month, that will be Diwali. Oh, I'll yeah. make sure that the transformation definitely happens for me. Thank you so much, ma'am. Welcome. But you choose today itself what you're going to consume tomorrow morning. Yes, ma'am. For Surely. 15 minutes in the morning, 5-7 minutes just before going to sleep. Put that as the last layer of information. फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होती है, सुबह उठ के पढ़ाई बहुत अच्छी होगी. Okay, definitely, ma'am. Thank you so much. Tanisha, some days back we were having a discussion about ego and self-respect. And you did have a question, if I remember about it. I would want you to put that question to Shivani ji today. Yes, ma'am. Jai Hind, ma'am. Om Shanti, ma'am. Ma'am, as you said in one of your interviews, happiness is not something to run after. We can find it within us. But still, each one of us experience multiple emotions in our lives, especially negative.
Aditya, you're not audible. Can't hear you. Prateek ji, if you have joined in, we could have a short tech check with you. Yeah. Yeah, Can you hear me? If you can, Yeah. yes. Yeah. I can hear you now, and the video is also clear. So while my anchor for the day is getting sorted with his tech issues, let me welcome Mr. Prateek Trivedi amidst us. Prateek ji, very warm welcome to, of course, TEDxYouth Bhagwanpur. And I would like to introduce you to the members of the Sunbeam board. We have with us Mrs. Bharti Madhok and Dr. Deepak Madhok, Chairman and Director of the Sunbeam Group of Educational Institutions. Thank you. Thank you. So we would also be welcoming amidst us Mr. Vishwanath Gokarn, who is here with us as one of the interviewees. He would be interviewing Mr. Rahul Dev in a short while from now. So I would want to extend a warm welcome to Mr. Vishwanath Gokarn also. Thank you Sir so much. and ma'am, we're eager to meet you, Prateek ji, and थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आप बोलें तो बस मैं शुरू करूं फिर. जी एंकर का टेक चेक अगर हो गया हो तो फिर हम शुरू कर सकते हैं. सर, इफ यू कुड से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ वेलकम टू मिस्टर प्रतीक. बस मैं तो स्वागत करना चाहूंगा आपका. और बनारस अपने आप में सिटी ऑफ लाइट है. मैं हर जगह बोल रहा हूँ आजकल तो. और वाराणसी से ज्ञान की बातें, वाराणसी से शिक्षा की बातें, कल्चर की, म्यूजिक की, ये तो कई युगों से चली आ रही हैं. और जूम की ये हमारी ये मीटिंग्स, इससे बड़ी एक सहूलियत हो गई है. हम दूर दूर तक पहुंच जा रहे हैं. ये 2 दिनों का जो TEDx हुआ है यूथ का, इसमें मैं समझता हूँ प्रतीक जी की 5 महाद्वीपों से सैकड़ों लोगों ने ये चीजें देखी हैं और जानी हैं. और विश्वनाथ जी, आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि हेलो, am I audible now? हाँ, यू आर ऑडिबल. कि पूरा बच्चों द्वारा मैनेज्ड है ये. और आज भी आपको सारे बच्चे ही हमारे सनबीम के बच्चों द्वारा, और इन्होंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है इसको मैनेज करने में. बहुत बहुत स्वागत आपका. आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आज आप सामने आए. और वेलकम टू सनबीम. थैंक यू सो जी, मैं भी आपका स्वागत करना चाहूंगी. और जिस फील्ड से आप जुड़े हैं वो इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है. जर्नलिज्म इज लाइक anyone who is daring will even dare to go into that field. So आपके इस जो बहादुरी या जो भी आप जो सच दुनिया के सामने लाते हैं, because if it is camouflaged, एंड आपको दिखाते समय या बताते समय ये भी ध्यान रखना होता होगा, बहुत चीजों का ध्यान रखना होता होगा कि उससे ऐसी कोई चीज ना हो कि जो हमारे कंट्री या उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं. सो मैं चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए और बताइए कि कैसे हाउ जर्नलिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड टू द होल वर्ल्ड एंड टू स्पेशली टू आवर कंट्री इंडिया सच दिखाने के लिए. बिकॉज मैं चाहूंगी कुछ ना कुछ हमारे स्टूडेंट्स जरूर जर्नलिज्म में जाएं
और ये एक बहुत मैच्योर डिसीजन होता है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स. एंड उन्होंने इतनी मेहनत करके 28 स्पीकर्स को जो 2 दिन में इतना मेहनत काम, इतना बड़ा काम जो उन्होंने कर दिखाया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन. सो ओवर टू यू प्रतीक सर. थैंक यू We सो would मच. like to listen from you. बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी, प्रतिमा जी, भारती जी, थैंक यू सो मच. और वाराणसी की वो जो भूमि है उसको प्रणाम करता हूँ. मेरी पहली, कहना चाहिए काखा गागा तो मैंने कहीं सीखा होगा किसी शहर में, छोटे से शहर में, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैंने उसी वाराणसी से शुरू करी, कोई 93 में. तो एक लंबा अरसा हुआ वहां पे, वहां से शुरुआत करी मैंने. 6, 7, 8 महीने वहां रहा सिर्फ, लेकिन उसके बाद मैं चला आया दिल्ली. तो मैं वाराणसी की वो जो सरजमी है उसको भी प्रणाम करता हूँ. आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ. अगर टेलीविजन की बात करें तो 23 बरस हुए टेलीविजन में. और बस मैं 1 मिनट के लिए कृपया आपसे माफी चाहूंगी. आई वुड वांट द एंकर आदित्य टू प्लीज इंट्रोड्यूस यू टू आवर व्यूअर्स एट लार्ज, और फिर आप अगर अपनी बात शुरू करें. बड़े दृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगी. नहीं, कोई बात नहीं. हमारे प्रोग्राम में तो कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है. Okay, ma'am, so I'm properly audible now? Yes, Aditya, all yours, and then I will request Pradeep. Sure. One of the premises of the power associated with the youth is its want and thirst for information and the capability to freely interpret it in the way they want. The biggest helping hand for this has always been extended by the media, a free media, fearless and unwavering in the face of imminent threat and danger as well. Pratik Trivedi is a celebrated journalist and news anchor who is best known for hosting the TV show Bhaiya Ji Kahin on News 18. Since then, Mr. Pratik has done many shows and channels, but has always stayed true to the essence of journalism. Before we dive into it, right now, I would request Mr. Pratik to start off with his ideas and opinions and begin his talk. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Aditya. Thank you so much. आपने जो मेरे लिए कहा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं कह रहा था कि 23 बरस हुए मुझे टेलीविजन में आए हुए, पूरे 23 वर्ष हो चुके हैं. और मैंने ये दिमाग में हमेशा रखा कि टेलीविजन में जो सरल है उसको कितना सरलतम किया जा सकता, कितना आसान किया जा सकता. अगर मैं बहुत आसान लहजे में बात करूं तो ये, और किस तरह तक आप तक पहुंचा जा सकता है. ये जो भैया जी कहीं प्रोग्राम करता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर मैं गांव-गांव तक गया, शहरों में घूमा, मेट्रो सिटीज में प्रोग्राम करता ही हूं मैं. लेकिन जो बहुत खास बात रही है मेरे प्रोग्राम की, जिसको कि मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूं, और वो ये है कि मेरे पूरी कहानी में या मेरे पूरी जर्नलिज्म की पूरी आत्मा में वो एक आम इंसान है. और वो आम इंसान वो गांव का, वो या हाशिए पे या अपनी बात कहने वाला एक साधारण सा इंसान, क्योंकि मैं फुटपाथ पर शो करता हूँ, गांव में शो करता हूँ, लोगों तक चला जाता हूँ. तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि उस आम शख्स में, उस आम आदमी में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खास बात है जिसको कि दिखाया जा सकता है, जिसके की पीछे भागा जा सकता है, या जिसके के लिए कहानी में जिसे कहते हैं कि रोचकता लाई जा सकती है. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. किसी भी चीज को कहने से पहले सबसे दिमाग में, सबके दिमाग में ये आती है कि हमको, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये भी है कि कितने लोग देख रहे होंगे. अगर नहीं भी हो रहा होगा तो दिमाग में ये भी बात आती है कि कितने लोग देखेंगे. तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये रहती है कि मेरा मास जो है, मेरा जो मासेस हैं, जो जिनके लिए मैं प्रोग्राम करता हूं, वो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है. जो कुछ भी अगर मैं कर सका, या जो कुछ भी छोटी सी पहचान बन सकी या छोटी सी पहचान बना सका, उसमें वही है, वो आम शख्स है जो बहुत मामूली सा इंसान है, जो बहुत पीछे खड़ा रहता है. 1,500 की भीड़ में वो मुझे दिखाई देता है और वो कहना चाहता है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. तो भैया जी कहीं का जो दिमाग में जो कंसीव किया, वो जो आइडिया आया, उसमें यही था. उससे पहले भी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, लाइव प्रोग्राम्स कर रहा था इसी तरह के, तो मेरे दिमाग में यही था कि एक आम आदमी जो है, एक आम शख्स जो है,
वो जो दिनचर्या में अपनी है, जो अपने रूटीन में है, उसको कैसे सेंटर फिगर में लाए और उसको एक सम्मान के साथ वो अपनी जिसे कहते हैं अधपकी सी बात, जैसे रॉ, अब आप मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं और बहुत गंभीर बात पे चर्चा चल रही है और वो आया और अपनी बात कहने लगा, और वो अपनी बात हो सकता है उस विषय पे हो या हो सकता है उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, उस चीज को गुत्थी या उसकी जो माला है उसको बना के पिरो के हम आपके पास तक रखते हैं, और यही मेरा एक काम है। ये बात सच है, सबके पास एक कहानी होती है, मेरे पास भी एक कहानी है जिस कहानी को लेकर मैं जाता हूं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी तरह से उसको सरल और बहुत सरल कर देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बातों को अपनी तरीके से जब कहने के लिए लोग कहते हैं कि आपकी बात, अपनी वेशभूषा भी आपने अपनी तरह से कर ली, आप अपनी तरह से बोलते हैं, अपने ढंग से बात करते हैं, वो जरूरी था। अगर आप भीड़ में खड़े हैं और उससे दूर है, अलूफ है, तो आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भीड़ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ का हिस्सा है, भीड़ से मेरा मतलब है कि उसके पास भी एक विचार है, उसके पास भी एक बात है, और उसके पास भी एक हिस्सा है, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है जो टेलीविजन से छूट जाता है। हालांकि सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग कोशिश करते हैं कि उस हिस्से से जुड़ा जाए, और यही बहुत अहम चीज थी जो मैंने अपनी जर्नलिज्म में इसको उकेरा। मिसाल के तौर पे मैं अभी बिहार का इलेक्शन कर रहा था, उसके बाद बंगाल का चुनाव किया, प्रतीक्षा में हूँ यूपी इलेक्शन में आने के लिए, जब मैं बनारस में भी शो कर रहा हूँ। बिहार में बक्सर में एक शो कर रहा था, छोटी सी जगह है, मामूली सी जगह। एक आदमी आया मेरे पास, भीड़ में कम से कम 1500-2000 लोग, हल्ला होता रहता है, और उस कम लाइट, ज्यादा लाइट, हल्ला, मुद्दे, राजनीति, शोर शराबा, इन सब के बीच में वो शो चलता रहता है। उसका एक अपनी ग्रामर है जिसको सारे लोगों ने डेवलप कर लिया है। वो शख्स आता है, मैंने देखा उसको, मैंने पहचाना, और मैं समझ गया कि ये बोलना, ये एक आर्ट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो शख्स कहाँ पे खड़ा है, वो बोलना चाहता है। मैंने उसको बुलाया, वो रिंग के अंदर आया, और वो कहने लगा कि मिसाल के तौर पर, छोटी सी जल्दी से बात बताता हूँ, कि मैं एक राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री वो जो घरों में काम करते हैं या जो घर बनाते हैं। उसने कहा कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नहीं चाहिए, ये फ्री में मुझे नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि राजनीति पे प्रोग्राम चल रहा था, इलेक्शंस पे प्रोग्राम चल रहा था, और वो बात कर रहा था बड़े होराइजन की, बड़ा कैनवस खींचता है। अब इस कैनवस को देखिए, बहुत छोटा सा एक रॉ सी बाइट आती है, जिसे हम टेलीविजन में बाइट कहते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में बात कहते हैं। वो कहता है कि मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शिक्षा, मुझे अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे दीजिए, बाकी तो हम सब छीन लेंगे। अब जब तक वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा। छीन लेने पे मैंने उसको बस रोका नहीं, टोका। मैंने कहा छीन लेने से इनका मतलब ये है कि खुद मिल जाएगा। यही मेरी बैलेंसिंग बीम पे खड़े होने का काम है। मैं बस आम आदमी के बीच में भी, और तमाम सारे चाहे पॉलिटिशियंस हो, उनके बीच में भी एक बैलेंस बनाने का कोशिश हमेशा करता हूं, और वही कोशिश है। तो चाहे मुझे वहां बिहार में बक्सर हो, और चाहे केदारनाथ का वो बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा इलाका जिसमें लग रहा था कि जीवित रहना ही, 2013 का जिक्र कर रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल था। उनमें भी अपनी साहस के साथ, जिस चीज को कहते हैं कि पत्रकारिता का जो बैलेंसिंग है, और जहां पे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टूट जाएगा, वहां पे अपने को बचाए रखना, बनाए रखना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे हमेशा समझ में आई है, जो मैंने हमेशा की, और वो ये है कि मेरे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेरी आइन है, जो मेरा किताब है, वही है। उसी पे उसको दिमाग में हमेशा रखा, उसकी चीजों को मैंने दिमाग में हमेशा एक कोने पे सेट करके रखा कि मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे इस बैलेंस को हमेशा खोना नहीं है। अजीब सा वक्त है, अजीब सा मैं कहता हूं, खराब नहीं कहना, अजीब सा मेरा मतलब है कि बदलता वक्त है, हमेशा बदल रहा है। अभी बोल रहा हूं, कल फिर कुछ सेकंड में भी बदल जाएगा। ये बदलता वक्त है। इस बदलते वक्त में लोगों के पास क्या है कि फॉलोअर्स हैं। जब मैं छोटा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हो रहा था, तब वो फॉलोअर्स जो थे, सुनते थे साधु महात्मा या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, या जिसके लिए कहा गया कि महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष, इन लोगों के फॉलोअर्स थे। आज
हर आदमी के फॉलोअर्स हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात है, मैं सोशल मीडिया के उसी एंगल पे कह रहा हूं। पत्रकारिता कैसे रास्ता बना रही है, कैसे के बीच में निकलती जा रही है। हर आदमी के फॉलोअर्स हैं और इस बात का उसको कभी कभी खुशी भी होती है, खुशी यहां तक चला जाता है कि वो दम्भ भी आ जाता है। उसमें लगता है कि भाई मेरे पास इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब इनके बीच में मुझे पत्रकारिता करना क्या, कि हम सारे लोगों के बीच में खेमे बटे हुए, हर आदमी खेमे में है और इसी खेमे के बीच में से मुझे अपनी पत्रिका, मुझे जब मैं कह रहा हूं तो मुझे अपनी, क्योंकि मैं आम व्यूअर के साथ में हूं, बिल्कुल एकदम रॉ, मेरे पास कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं, मैं स्टूडियो में नहीं बैठता, प्रोग्राम बाय इस समय कर रहा हूं कोरोना के टाइम पे, लेकिन मेरी जो पहचान है, जो मेरा काम है, वो आम लोगों के बीच में भीड़ में घूमना है, लाइव प्रोग्राम्स करने हैं। और वो कुछ भी बोल सकता है और वो कुछ भी बोल देता है, उसके बीच में वो जो बैलेंसिंग एक्ट है और वो उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको करेक्शन भी करना कि देखो भाई तुम यहाँ पे जो कर रहे हो कहीं संघर्ष नहीं नजर आना चाहिए। संघर्ष इसके लिए तो हो सकता है कि शिक्षा लेनी है, लेकिन शिक्षा लेने के बाद ये कहीं संघर्ष ना होना कि दूसरे को शिक्षा नहीं देनी है क्योंकि मैं ही पढ़ा लिखा रह जाऊं। तो वो करेक्शंस भी हैं जो इस समय है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेलीविजन में जो चमक है, जो ग्लेज है, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। खासतौर से युवा जो है वो क्यों आए टेलीविजन में, उसे क्या चीज खास है मिलेगी और वो क्यों आना चाहेगा इस टेलीविजन में कि उसे लगे कि यहाँ उसको रुकना चाहिए और ये आदर्श है। हम सारे लोग आदर्श ढूंढ रहे हैं, मैं खुद आदर्श ढूंढ रहा हूं। जिस वक्त में मैं हूं उसमें मुझे भी अपने एक आदर्श की तलाश है जिसको मैं कह सकूं कि मैं उसका फॉलोवर हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे जो फॉलोवर्स है वो तो हैं, वो उसी से आज सब कुछ तय हो रहा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसी से तय हो रहा है, उसकी ताकत हम सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता क्या उसूल, उसके मापदंड कुछ और हैं। वो यहाँ पे भी आते हैं, इस पे भी लगते हैं कि आप किस तरह से चीजों को बैलेंस करते हैं और किस हिसाब से चीजों को लेके चलते हैं। अपने विरोधी की भी बात सुनने की अगर आपके पास मादा है या शिद्दत से आप सुन सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले यानी अगस्त में ही मैं श्रीनगर में था और ये था कि 370 हटने के बाद कश्मीर श्रीनगर कैसा है उसको कवर करने गया था। मुझे मालूम है कि अगर वॉइसेस नहीं सुनेंगे आप, और वो डिफरेंट मुख्तलिफ वॉइसेस अगर आप सुनने का हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप फिर शो पब्लिक के बीच में नहीं कर सकते। आपको प्लेटफॉर्म उनके सुनना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि मेरी अपनी क्या सोच है, अपनी सोच मुझे मालूम है। वो सोच यही है कि देश के साथ जुड़ा हूं और देश के साथ बिल्कुल इंक्लाइन। तो अब वहां पे बात कुछ ऐसी भी आ सकती है जो मुझे लगता है कि शायद टेस्ट में ना लगे, लेकिन हाँ मुझे तब अगर लोगों को जोड़ना है और उनको एक प्लेटफॉर्म देना है और उनकी बात सुननी है, वो जब सुनेंगे तभी उस प्लेटफॉर्म तक वो आ पाएंगे। और वो प्लेटफॉर्म जब होगा तो एक कम्युनिकेशन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे लगती हैं कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीजें आती हैं। तो लाल चौक पे मैंने शो किया अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले। वो लाल चौक जहां पे लोग कह रहे थे कि शायद 5 मिनट खड़े होना भी मुश्किल है, मैं 4 घंटे वहां पे रहा और मैंने शो किया। शो जब शुरू किया तो मैं 10-15 लोग रहे होंगे, 5-6 गेस्ट थे और 10-12 लोग बस बैठे हुए थे। उसके बाद जब मैंने शो खत्म किया तो लगभग 1000 लोग थे वहां पे और वो आसपास के सारे लोग थे। लाल चौक श्रीनगर में बात कर रहा हूं जिसको लेकर तमाम सारी बातें होती हैं और ये पिछले 3 हफ्ते पहले की बात है। तो वो क्या था, वो ये था कि जब तक आप बात सुनेंगे नहीं किसी की, बात सुनने के लिए जरूरी यह है कि आप उसके पास जाएं पहली शर्त, और फिर उसको एक प्लेटफॉर्म दें कि हाँ तुम अपनी बात कहो। और फिर जब वो बातों का आदान प्रदान होगा तब एक कम्युनिकेशन बनेगा, और जब कम्युनिकेशन बनेगा तो बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं मुझे लगता है उनको दूर करने में या कहीं एक सोल्यूशन की तरफ पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन होता क्या है, जब मैं बता रहा हूं हुआ क्या है, हुआ ये कि आपके पास जब फॉलोअर्स हैं, आपको लगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप गए थे। मेरी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि हमको रिपोर्ट करना है।
हाँ, रिपोर्ट करना है, उसके बाद हम एनालिसिस के स्थिति में भी जाते हैं जहां हम खबरों की एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन हम खुद सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब होता क्या है कि अभी इस तरफ देखने को मिलता है कि आप गए और करते करते आपने रिक्शा ही चलाना, आप गए किसी रिपोर्ट के लिए, वहां रिक्शा वाला जा रहा है, उसको उतार दिया, आप खुद रिक्शे पे बैठ गए, तो पता चला वो जो बात कहनी थी वो तो छूट गई, कम हो गई, और रिक्शे पे बैठ गया तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों बैठे आप, उसका रेलेवेंस क्या था। अगर आपको रिक्शे वाले पे 4 सेंटेंस बोल तो रिक्शे वाले से वो खबर जुड़ती है या जोड़ सकने की आपके अंदर मादा है, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर आपको सिर्फ माखौल उड़ाना है तो फिर माखौल मत उड़ाइए। तड़का आप लगा सकते हैं, मुझे मालूम है तड़का लगाया जाता है, लेकिन दाल में हींग कितनी डालनी है, जीरा कितना डालना है, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो फिर मत करिए। आप जरूरी है या नहीं है ये एक डिबेट है, एक डिबेट हो सकती है, क्योंकि रोचकता का शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। अब क्या है कि कंटेंट क्या है, कथ्य क्या है, कथन क्या है, इस पे कम हो गया दिमाग, और आपने एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें आपकी बात तो जो कहना था वो पीछे हो गई, लेकिन एक माहौल सा एक ऐसा मजाहिया एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जिसका वो हिस्सा नहीं होना चाहिए था, और ये हो गया। तो पत्रकार, ये कुल मिला के जो पत्रकारिता का इस समय एक मुश्किल चीजें हैं वो ये हो रही हैं। सवाल ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैं उसको छोटे छोटे उदाहरणों में देके बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि यूथ जुड़ा है और उसके वो हमारा भविष्य है, और हम जो हैं जैसे बन गए या जैसे हो सकते हैं, सुधार हो सकता है, हमको भी सुधार करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके प्रोसेस में है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं बोलता हूं तो यूथ सामने होता है तो उसको बहुत सेंटर फिगर करना चाहिए, उसी के लिए है ये प्रोग्राम। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे याद है बड़े चैनल में वर्क करता था और एक प्रोग्राम का हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया, और डिसीजन था कि निकाह पे था, तलाक पे था, सॉरी हाई कोर्ट पे तलाक, आज से करीबन 16-17 साल पहले की बात है, तो फैसला था। अब तो मुझे चैनल ने बोला कि आप इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। टेलीविजन में क्या है, और टेलीविजन में ही क्यों, सारे क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, और अगर आप उससे बचे या उससे चूके तो फिर कब आएगी ये पता नहीं होता। और आपने अगर एक बार अप्रूव करने का इतना प्रेशर आप पे आ गया, तो ये मत सोचिएगा, आपके पास जितनी बेस्ट कैपेसिटी है आप उतना ही कर सकते हैं, और आपको उतना ही करना चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम उसमें किया, 16-17 साल पहले की बता रहा हूँ। वुमेन हॉस्टल था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, बड़े मुश्किल हालात में मुझे अंदर जाने को मिला, किसी तरह हिम्मत लगाई और अंदर पहुंचा, प्रोग्राम किया। 15 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन 3.5 घंटा चला वो प्रोग्राम। टेलीविजन के इतिहास में बहुत कम होता है कि कोई प्रोग्राम शेड्यूल्ड हो 15 मिनट के लिए और 3, सवा 3, 3.5 घंटा चल जाए, लेकिन वो चला प्रोग्राम, क्योंकि वो पहली बार कोई चीज ऐसी हो रही थी जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, जिनसे वो सब्जेक्ट जुड़ रहा था। देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। हम जानते हैं, हमें मालूम है खबर, हम घर से आते हैं, समाज से आते हैं, मुझे वो भी एस्पेक्ट मालूम है, वो भी मालूम है, हम बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जब जैसे ही हम स्टूडियो के जाते हैं, एक तरफा हो जाता है मामला। तरफा यदि एक खबर आ रही है और हम बोलना चाह रहे हैं, हम सवाल जितने मेरे ध्यान में आए मैंने पूछ लिए, लेकिन जब आप लाइव ऑडियंस के सामने होते हैं, और वो भी मैनेज्ड ऑडियंस नहीं, स्टूडियो की मैनेज ऑडियंस नहीं, जब वो ऑडियंस जो खुली है, जो लाल चौक की है, जिसके ऊपर कोई जोर, कोई बंदिश नहीं है, वो ऑडियंस जो वुमेन है और जो सोच रही है, वो ऑडियंस 16-17 बरस पहले की बात बता रहा हूं, उसने बोलना शुरू किया। और वो प्रोग्राम 15-20 मिनट का था, वो 16, सवा 3 घंटे चला, जिसमें तमाम सारे इंटरैक्शंस हुए। और ये एक बहुत ओपनिंग का एक खास तौर से मेरे लिए खुला, और लोगों को लगा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, मुझे ये मालूम था, मैंने छौंक की बात करी है, हींग की बात करी थी, जीरे की बात की थी, कितना लगाना चाहिए। मेरे पास ड्रामे का एलिमेंट है और वो मैं ड्रामा जानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ड्रामे के फ्रेम में बांधेंगे तो आप मेरा फ्रेम ड्रामे का फ्रेम बड़ा लगेगा और मैं बहुत छोटा नजर आऊंगा। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म के फ्रेम में मुझे बांधेंगे तो लगेगा हाँ, जर्नलिज्म के फ्रेम में आते हैं, थोड़ा कम पड़ जाते हैं, या थोड़ा कहीं आगे निकल जाते हैं, आगे इन द सेंस की
जर्नलिज्म का कहीं कुछ चीजें कम हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। लोगों ने कहा हो सकता है, ये खतरा मौजूद होता है। देखिए, मैंने अपनी एक शैली बनाई, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर बहुत सारी बहस हुई, लेकिन मैंने अपनी एक शैली बनाई और मैंने उस शैली में अपने को बहुत, कहना चाहिए कि एकदम जहां तक मैं मिल सकता हूं, अपने को मिला सकता हूं, जिस स्तर तक जा सकता हूं, वो मैंने कोशिश करी। और वो मैं लगातार उस कोशिश में, एक्सपेरिमेंट जो है भैया जी कहीं में मैंने तमाम तरीके किए, करता रहा। हंसने का भी एक चीज लगाई, क्या जीवन में हंसने का मौका नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, वो आ सकता है। खबर गंभीर सी बात, बहुत गंभीर बात पे बहस चल रही हो, एक बहुत मामूली सा इंसान आके एक छोटी सी बात कह के चला जाए। वो राजी मिस्त्री तो था, और वो शिक्षा पे जो बात कह के चला गया, जो चुनाव के संदर्भ में बात कह के चला गया, जो मौजूदा राजनीति के संदर्भ में टिप्पणी करके चला गया, वो कितनी बड़ी बात थी, जिसको कि मैं कभी कभी देख लेता हूं, अपनी ही क्लिप सामने आ जाती है। जब वो राजमिस्त्री है और उसने कहा कि मुझे सिर्फ शिक्षा दे दीजिए, रोटी कपड़ा मकान तो हम बना लेंगे, मेरे बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए। वो कौन राजमिस्त्री? जिसमें शायद आपका ध्यान नहीं जाता, जो आपके घर बना के चुनाई करके चला जाता है। वो राजमिस्त्री जो स्कूल की बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता। वो ये कहता होगा, जरूर सोचता होगा कि इस बिल्डिंग को तामीर कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे को भी इसमें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वो ये कह रहा है कि अधिकार ये होता है। तो ये मैंने अपनी स्टाइल बनाई, और इसमें मैंने स्पेस, इसमें एक छोटी सी विंडो, हो सकती है बहुत छोटी विंडो हो, जो मैंने खोली, और आने वाले समय में जो तमाम सारे यूथ बैठे हैं वो इसको खोलेंगे। वाकई बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि इतने 23 बरस हुए टेलीविजन में, और बहुत 23 बरस में टेलीविजन में बहुत सारे मौके, चाहे झारखंड के रहे हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ के रहे हो, चाहे कश्मीर में अभी जाना रहा हो, चाहे केदारनाथ की 2013 की बाढ़ रही हो, तमाम सारे हिस्से हैं। लेकिन मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कही वो ये है कि संतुलन, अभी मैं सुन रहा था, संतुलन जो है जीवन का, जीवन में भी और आपके जो प्रोफेशन में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि खेमे में बटे हुए हैं। आपका दिमाग अगर इस बात पे है, बिल्कुल साफ है, आपका नजरिया फोकस्ड है, जिसे कहते हैं कि आप बहुत फोकस्ड हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और आपको मालूम है कि मुझे इस रास्ते पे ही चलना है, हो सकता है कि मेरी पत्रकारिता में आपको वो चमक टेलीविजन की न दिखती हो जो बाज दफा तमाम सारे लोगों की पत्रकारिता में नजर आती है। हो सकता है नहीं नजर आएगी आपको, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना उसमें वो चीज नहीं है। उसमें मुझे एक चीज मालूम है कि सबको लेके चलने की अगर शिद्दत आप मात्र, तो गलत को गलत कहेंगे या सही को सही कहेंगे, ये है आपकी पत्रकारिता में, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल है। मैंने कहा, मैंने ये बात कही बिल्कुल, और ये बात मैंने लाल चौक में भी कही खड़े होके कि एक झंडा और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, लेकिन बात आपकी सुनी जा सकती है, और बात सुनी जा सकती है, और अगर इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। तो आप अपनी बात कहने का साहस भी रखें, बैलेंस जो है वो आपको मिलेगा। आपकी जो सामने आपने जो स्टडी की है, जो आपके सामने जो किताब है, जो आदर्श है, वो बैलेंस आपको देंगे, तो आप अपनी बात कह सकते हैं साहस के। मैंने एक, चाहे वो मुंबई की पहली बाढ़ रही हो जिसमें मीठी नदी घुस आई, पानी अंदर तक आ गया, और उसमें मुझे मुश्किल हालात में रात में रिपोर्ट करनी पड़ी हो, चाहे मैंने झारखंड के नक्सल्स के एरिया में लंबा समय गुजारा हो, चाहे वो, और चाहे फिर कश्मीर का भी हाल करा हो। लेकिन मुझे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बात खत्म करने के पहले मैं नजर भी रखता हूँ, शायद मेरा टाइम पूरा हो गया होगा प्रतिमा जी, मैं समाप्त कर देता हूँ। नहीं, बात अधूरी तो छोड़ना लाजमी नहीं है, बात पूरी करके ही छोड़िएगा। 2 मिनट का समय, 2 से 3 मिनट का समय आप ले। हाँ, तो मैं बिल्कुल छोटे से शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ, साहस पे बात खत्म कर देता हूँ कि मैं केदारनाथ की यात्रा कर रहा था, और 2013 में बाढ़ में एक डिफरेंट रूट लेके जा रहा था। मैंने गाँव का, जब मैं पहुंचा, जिस जगह पर रात में सोया, वो पहाड़ नीचे से सरक गया, उसकी गाय, उसका घर, मुझे नहीं मालूम वो क्यों हिल रहा था, रात भर हिलता रहा, सुबह जाके देखा तो सब कुछ गायब था। बड़े मुश्किल हालात में आगे बढ़ता हुआ चलता चला गया मैं, और मैं जब लगा कि अब नहीं जा सकता, मैंने अपने कैमरामैन से, मेरे साथ एक पोर्टर था, मैंने उससे
लोगों ने रोका मुझे जगह जगह, मैंने उससे कहा कि अब मुझे छोड़ दो और तुम लोग आगे चले जाओ। ये बात सच है। और मैंने उसी समय जिंदगी की एक किताब में अपनी प्रोफेशनल नोटबुक में निकाला और ये नोट किया कि आप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, आप अपनी रिपोर्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप ये सवाल सोचेंगे, आपको लगेगा कॉन्ट्रडिक्शन है, कंट्रडिक्शन नहीं है ये, क्योंकि आप अगर हैं तो आप रिपोर्ट फाइल करेंगे, आप अगर नहीं है तो रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा, मुझे हताशा सी थी, 2 दिन हो चुके थे, बड़े जिन मुश्किलात में, जिन हालात में गुजर रहा था, और कोई रूट खो चुका था, रास्ता खो चुका था उस जगह पे, कहाँ निकलूंगा ये मुझे नहीं पता था। उन मुश्किल हालात में मैंने ये कहा कि मुझे छोड़ दो और तुम दोनों लोग आगे चले जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि कैसे छोड़ दूंगा आपको, आप आपके साथ ही आए और आप ही मुझे किनारे तक लेके जाएंगे और वहां तक ही जाना है। साहस उस केदारनाथ की यात्रा में मुझे पहली बार लगा कि आप चाहें तो बेहद दुर्गम, बेहद निर्जन, जहां पे लगे कि आप जीवन भी नहीं शायद बचेगा, और जो मैंने कह ही दिया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, उस कपड़े नहीं, खाना नहीं, भूख ज्यादा, कुछ भी नहीं मेरे पास, सारी चीजें तितर बितर, कोई लॉजिस्टिक नहीं, कोई मोबाइल का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बैटरीज डाउन सारी, जो शूट कर रहे थे वो खत्म हो चुका था। बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि कभी मौका लगा शेयर करने का तो शेयर करेंगे। उस स्थिति में पता नहीं मुझे कहां से लगा कि नहीं, यात्रा तो खत्म करनी है। ये चाहे यात्रा केदारनाथ की हो और चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये बात सेंटेंस में अपने जो यंगस्टर्स बैठे मैं उनको कहना चाहता हूं, यात्रा अपने पूरे पड़ाव, अपने मुकाम तक पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने काम किया है और मैंने बिल्कुल न्याय कर रहा हूं। मैंने फिर कहा, आपसे बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं, मुझे वो ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, गुरेज नहीं है, कि आपके सामने ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जो गलत है गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। और ये आपको आएगा इसी तरह से कि जब आपने कोई चीज आदर्श अपना बनाया हो। आदर्श आप बनाएंगे और वो आदर्श आपके पास सामने समाज में है, उन्हीं से खोज के लाना होगा, तभी आप वो बेहतर तरीके से चीजें आप कर सकेंगे। प्रतिमा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जानती हूँ कि आपकी बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन समय तो खैर रुकता ही नहीं है किसी के लिए, और हम चूंकि ऐसे फोरम पे हैं जहाँ 18 मिनट ज्यादा बातचीत की इजाजत है नहीं, सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू येट अनदर इंटरेक्शन विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आदित्य, ऑल योर्स। श्योर मैम, थैंक यू। सर, मैं पूरे सनबीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ आए, जुड़े और हम सबके साथ बातें की आपने। और जैसे प्रतिमा मैम पहले ही कह चुकी हैं, हम बहुत खुश होंगे कि आप कोविड के बाद हमारे साथ आए भगवानपुर में और हमसे बातें करें और हम आपसे बातें करें, और हम सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये कोविड जल्दी खत्म हो, क्योंकि इन 28 लोगों में हमको बहुत लोगों को बुलाना है, सबको ही बुलाना है ताकि हम सबसे बातें कर सकें। बिल्कुल। So thank you so much, sir, for joining us today. Thank you so much. Thank you. Keeping the spirit of fearlessness of the media alive, our next speaker, Mr. Rahul Dev, has worked both in print and in TV, English and Hindi news media. He started his career with the Pioneer in Lucknow before switching to Hindi journalism with the Maya magazine. Since then, he has been editor of the Jansatta, the Hindi daily of the Indian Express Group, editor-in-chief of the Daily Aaj Samaj and the Weekly Indian News. We welcome you, sir, and on behalf of all of us, I would like to invite Pratima ma'am for the plenary session. Thank you so much, Aditya. Namaskar, Rahul ji, and very, very warm welcome to the forum today. I have with me the chairman and director of the Sunbeam Group. It is my pleasure to introduce them to you, Dr. Deepak Madhok and Mrs. Bharti Madhok. And we have been waiting to hear from you the moment we did get in touch with you, and you so kindly consented to be on this forum with us. Sir. Very warm welcome to Rahul ji. And it's indeed, sometimes we just think about how much
these 18 minutes are going to affect the lives of the children who are listening to you, Rahul ji, and who listened just now to Prateek ji. Amazing 18 minutes. In 18 मिनटों में 18 साल की कभी कभी बात हो जाती है, और अगर 18 बच्चे भी प्रभावित इससे हुए, हमारे स्टूडेंट्स हुए, तो इट्स अ वेरी बिग एफर्ट. आई थिंक कमेंडेबल वर्क डन बाय ऑल द स्टूडेंट्स. एंड बेसिकली हम सब एक ह्यूमन लाइब्रेरी के अंदर चल रहे हैं, जिसमें किताबें वो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. प्रतीक जी क्या वो श्रीनगर के लाल चौक का झंडा, और राहुल जी हमें क्या बताएंगे, ये हमारी मेमोरीज में हमेशा रहेगा, एक लाइब्रेरी की तरह रहेगा, एक चलती फिरती मानव पुस्तकालय की तरह रहेगा. आपका बहुत बहुत स्वागत काशी में, वाराणसी में और सनबीम में. ओवर टू यू आदित्य. Would ma'am like to extend a few words? A very warm welcome to you, Rahul ji, on this platform. I'm so happy and delighted that you have accepted the request of our students. And I was going through your profile. You have worked in God knows how many languages, from Punjabi to Telugu to Kannada to Hindi, Malayalam. Wow, wonderful. I think you are a reservoir of experience, and my students, my viewers for sure will be benefited. So once again, a very, very warm welcome. आपने एक भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है. अरे नहीं. दुल्हन पाकिस्तान से लाए. हाँ, दुल्हन पाकिस्तान से. someone told me like it is there. So अगर ऐसा भोजपुरी में भी करिए ना, आइए बनारस, do visit us. मुझे लग रहा है भारती जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दीपक जी का मुझे बुलाने के लिए. प्रतिमा जी का भी बहुत धन्यवाद. मुझे सचमुच बहुत खुशी है सनबीम के इस मंच पर शामिल होकर. मैं काशी का हूँ तो नहीं, लेकिन काशी भक्त हूँ. तो काशी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ने में मुझे बहुत बहुत आंतरिक आत्मिक हर्ष होता है. काशी का थोड़ा उसके बारे में जानने की भी कोशिश हमेशा रहती है. एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है उसके ऊपर. तो इसलिए काशी के आपके इस मंच पर आके मुझे आज कुछ विशेष प्रसन्नता हो रही है. मुझे लग रहा है कुछ भ्रम हुआ है. मैं वो नहीं हूँ जो आपने कहा है. मैं तो केवल एक बहुत सामान्य सा पत्रकार रहा हूँ सारा जीवन. एक फिल्म में काम जरूर किया, लेकिन मैंने उसको खुद भी देखा नहीं. तो वो भी ऐसे ही था, दोस्ताना तरीके से काम हो गया. मैं तो शुद्ध पत्रकारिता में रहा हूँ, और आज पत्रकारिता की बात नहीं करूँगा. आज प्रतीक ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन के अनुभवों से, जो उन्होंने ज्ञान और अनुभव हासिल किए, उनको हमारे साथ बांटा है, साझा किया है, और हम सबके लिए बहुत प्रेरक है. प्रतीक बहुत अच्छे पत्रकार हैं. मुझे खुद उनके कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है एक बार, और वो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सचमुच संतुलित बात करते हैं, जो आज की पत्रकारिता में काफी दुर्लभ चीज हो गई. मैं प्रतिमा अपनी बात शुरू करूं क्या? जी राहुल जी, बस 1 मिनट मैं एंकर को वापस दे दूं द रेन्स ऑफ द इवेंट. I will just hand them back to Aditya, and I would just want to say that महान लोग शायद ऐसे होते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं और फिर उसकी स्मृतियां भी उनके पास नहीं होती है. तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने जो भी फिल्म की आपको याद नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन अगले बड़े कार्य जो हो रहे हैं, जो करेंगे आप, उन पे हमारी जरूर नजर रहेगी. आदित्य, over to you, and Rahul ji, welcome once again. Thank you so much, the board of directors, for this pre-talk session with Mr. Rahul Dev. Sir, I would not waste any more of your time or any more of our viewers' time. The stage is all yours. बहुत धन्यवाद आदित्य. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पुराने बहुत प्रिय मित्र विश्वनाथ गोकर्ण भी यहाँ हैं. और पहले मैं सुन रहा था तो मुझे ये अचानक खबर मिली कि विश्वनाथ मुझसे बात करने वाले हैं. तो क्या सिर्फ मुझे ही बोलना है कि विश्वनाथ और हमारी कुछ बातचीत भी होगी? Rahul ji, it is essentially your talk, and Vishnath ji is here. In the next session, he will be interviewing Mr. Sanjay Masoom for us. अच्छा. अभी वो केवल श्रोता हैं, वक्ता नहीं है. वाह, ये तो बहुत अच्छा है. तो मुझसे पहले मेरा एक मित्र, मुझसे बाद भी मेरे एक मित्र होंगे संजय मासूम. ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है. तो मैं अपने सभी युवा मित्रों को भी नमस्कार बोलता हूँ. और चूंकि हम लोग काशी में हैं, तो बाबा की जय के बगैर कैसे काम चलेगा. तो जय बाबा विश्वनाथ, जय भोलेनाथ.
दोस्तों, मैं आज आपसे पत्रकारिता की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे भाषाओं के बारे में बात करूंगा। और मैं कह दूं कि कभी कोई अपने पूर्व जन्म में मैंने अंग्रेजी में भी काम किया था, लेकिन अब मैं वो सब भूल गया हूं। और अब तो मैं पहली बात ये कहता हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जब ज्ञान, किसी तरह की जानकारी चाहिए होती है, तो मैं अंग्रेजी को अपने धूल पोंछ के निकालता हूं और उसमें कुछ पढ़ लेता हूं, कुछ सीख लेता हूं, लेकिन बाकी समय कोशिश करता हूं कि उसको भुलाए रखूं। आपको आश्चर्य शायद होगा कि तमाम तरह के विषय हैं आजकल। अभी आप बहुत युवा प्रतिभाओं को आप कल से आज यहाँ सुन रहे हैं। मैंने कुछ प्रोफाइल्स भी देखी, बहुत ही प्रेरक, बहुत युवा, जो अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में नए नए तरह के काम कर रहे हैं। और ये हमारे युवाओं के लिए उनको सुनना देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाषा जैसी चीज, जो उसमें ऐसी क्या खास बात है जिस पर हम 18 मिनट जाया करें, ये आपके दिमाग में आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये बता सकूं कि भाषा क्यों जरूरी है और भाषा की हमारी सबकी जिंदगी में भूमिका क्या होती है, एक इंसान की जिंदगी में और एक देश की और संसार की जिंदगी। संसार में इस समय एक जो आकलन है, सबसे ताज़ा आकलन इस साल फरवरी तक का, वो है कि 7,139 भाषाएं हैं, 7,139। एक ethnologue.com नाम का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो भाषाओं की गिनती, भाषाओं का अध्ययन लगातार करता रहता है। पिछले 25-30 साल से कर रहा है, शायद और ज़्यादा लंबे समय से। और हर भाषा के बारे में, दुनिया में भाषाओं की क्या स्थिति है, हर देश में कितनी भाषाएं हैं, किस भाषा की क्या स्थिति है, इसका वो अध्ययन करता रहता है। तो 7,139 भाषाएं हैं। इसके साथ ही ये भी हमें मालूम, ये भी मैं बताऊंगा आपको, कि बताना चाहूंगा कि हर 15 दिन में एक भाषा संसार में कहीं ना कहीं मर जाती है। इन 7,139 भाषाओं में 40% भाषाएं संकटग्रस्त हैं, यानी एंडेंजर्ड हैं, और आधा संसार सिर्फ 23 भाषाएं बोलता है। 7,139 बहुत बड़ी संख्या होती है। भारत में ही एथनोलॉग के अनुसार 550 से ज्यादा भाषाएं हैं और अलग अलग संख्याएं हैं। मातृभाषाओं की संख्या 19,000 से शुरू होकर 7,000-1,600 तक जाती है। 7,000 नहीं, 700 से लेकर 1,600 तक के अलग अलग आंकड़े हैं, क्योंकि भाषाओं को गिनना बहुत एक मुश्किल चीज़ है। लगातार स्थिति बदलती रहती है, कुछ भाषाएं जाती रहती हैं, गायब होती रहती हैं, कुछ नई भाषाओं का पता चलता रहता है, तो ये संख्या बदलती रहती है और उनकी गणना के तरीके भी अलग अलग हैं। लेकिन जो दुनिया के बड़े चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि जिस तरह से संसार में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जितनी जरूरी है हमारे इस पृथ्वी के जीवन के लिए, हम सब के लिए, उतनी ही, और कुछ लोगों का कहना है कि उससे भी ज्यादा, हमारी भाषिक विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वो संसार के लिए जरूरी है। हर भाषा एक संसार होती है अपने आप में। हम में से जो बहुभाषी हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब कम से कम 2 से 3 भाषाएं जानते हैं, आप कम से कम 3 भाषाएं जानने वाले यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ऐसे हैं। आप हिंदी जानते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं, और आप अपने घर की या इलाके की, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के आते हैं तो आप शायद भोजपुरी जानते होंगे, आप अवधी जानते होंगे, कुछ लोग बिहार से अगर आते होंगे तो अंगिका या मैथिली आदि भी जानते होंगे। और भोजपुरी में भी कई अलग अलग जगह की अलग अलग भोजपुरी हैं। तो कम से कम 3 भाषाएं तो यहाँ इस आज बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है। कुछ लोग ज्यादा जानते होंगे, जैसे दीपक जी, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा भाषाएं जानते हैं। मैं 2 भाषाएं ठीक से जानता हूँ, एक भाषा समझ और बोल सकता हूँ, पढ़ और लिख नहीं सकता। ऐसी कुछ और भी भाषाएं। पहली बात तो ये है कि हम जितनी भाषाएं जानते हैं उतने ही हम समृद्ध होते हैं, उतने ही अलग अलग संसारों में जीने की हमारी क्षमता होती है। उतने अलग अलग संसारों से, जो सामाजिक संसार हैं,
सांस्कृतिक संसार हैं, पूरे जीवन शैली के संसार हैं, संसार यानी दुनिया है, उनमें हमारा प्रवेश होता है। और जो जितनी कम भाषाएं जानता है वो दिमागी तौर पर उतना गरीब है। जो एक ही भाषा जानता है दुर्भाग्य से, वो एक बहुत छोटे से कुएं में रहता है, जिसको हम कूप मंडूक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका सारा संसार उसकी भाषा की सीमा के भीतर सिमट जाता है। भाषाएं हमारे संसार के, हमारे दिमाग के, हमारे जीवन के क्षितिजों का विस्तार करती है। देखिए, मैं प्रतीक पता नहीं कैसी इस भाषा को क्या कहेंगे, क्योंकि ये उस तरह की भाषा नहीं है जैसी भाषा वो उनको प्रयोग करनी पड़ती है अपना कार्यक्रम करते समय। लेकिन मैं सोच समझ कर एक ऐसी भाषा बोल रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप सुने, क्योंकि आजकल बहुत कम समय, बहुत कम मौके होते हैं जब आप अच्छी हिंदी सुन पाते हैं। अच्छी अंग्रेजी सुनने के मौके तो आपको दिन रात मिलते होंगे सनबीम में, और इस पर प्रतिमा जी से मेरी लंबी चौड़ी बात भी हुई, और मैं अभी उस पर आता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको अच्छी हिंदी सुनने के कितने मौके मिलते हैं, या अच्छी भोजपुरी सुनने और बोलने के कितने मौके मिलते हैं, या अच्छी अवधी बोलने सुनने के कितने मौके मिलते हैं, या भारत की दूसरी भाषा। जब हम कहते हैं कि हमें कितनी भाषाएं आती हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसमें कम से कम 4 काम करना हमें आना चाहिए: बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। तो ये चारों काम हम जितना ज्यादा और जितनी अच्छे तरीके से किसी भाषा में कर पाते हैं, उस भाषा पर हमारा अधिकार उतना अच्छा होता है। सिर्फ बोलने और समझने से कोई भाषा नहीं आ जाती। भारत में भाषा की अब मैं अगर आपसे कहूं कि आज भारत को आप पूरी दुनिया एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखती है, भारत की बहुत इज्जत है। भारत एक विशिष्ट देश है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग विदेश गए हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे, तो भी आपको, अगर आप अखबार पढ़ते हैं या आप खबरों से कुछ लिखते पढ़ते हैं, आपका शौक है, आपकी जो आसपास जो समसामयिक आपका की समझ है, सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि भारत को संसार एक विशेष तरीके से, एक विशेष निगाह से देखता है। भारत को वैसे नहीं देखा जाता जैसे श्रीलंका को देखा जाता है, या बांग्लादेश को, या पाकिस्तान को, या अफगानिस्तान को भी। अफगानिस्तान आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन अफगानिस्तान से कोई दुनिया को उस तरह की आशाएं नहीं है। यूरोप के भी बहुत से देश हैं जो प्रमुख हैं, अच्छे पुराने, उनके पास बड़ा इतिहास है, हमसे ज्यादा शायद पैसा भी होगा, लेकिन आज भारत संसार के उन गिने चुने देशों में है जिनकी ओर संसार कुछ विशेष निगाहों से, विशेष अपेक्षाओं से देखता है। वो ये मानता है कि भारत के पास कुछ ऐसा है जो बड़ा कीमती है, जो सबके लिए जानने और समझने और अपनाने योग्य है। क्या है वो? भारत में क्या विशेष है? वो है भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसको हम सभ्यता कहते हैं। भारत ने एक जो खास जीवन शैली, एक जो जीवन दृष्टि विकसित की है, वो आज आप लोग, चूंकि मैं क्षमा चाहता हूं दीपक जी से और भारती जी से कि मैं थोड़ा ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको ठीक न लगे, क्योंकि वो आपके इस समूह की जो भाषा नीतियां हैं उसके खिलाफ जाती है। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जो अंग्रेजी माध्यम में शुरू से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, वो सभी बच्चों की तरह बहुत अच्छे, बहुत होशियार, बहुत, तथा आजकल जिसे हम स्मार्ट कहते हैं, वो होते हैं, स्मार्टर भी होते हैं कई मायनों में। लेकिन कुछ उनसे छूट जाता है, थोड़े से वो एक मायने में मेरी निगाह में गरीब होते हैं। वो दुनिया से तो बहुत अच्छी तरह जुड़ जाते हैं अंग्रेजी से, लेकिन अपने भारत से, अपनी जमीन से, अपनी विरासत से, अपने गांव से, अपने छोटे शहर से या अपने बड़े शहर से भी उतनी गहराई से नहीं जुड़ते, उससे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। उनके सपने बदल जाते हैं, उनकी जीवन शैलियां बदल जाती हैं। आप लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आप जो सपने देखते हैं, जो बनने के, जो हासिल करने के, जहाँ जाने के और रहने के, वो शायद वैसे नहीं होंगे जो आपके ही आसपास रहने वाले,
आपके चारों तरफ घूमने वाले आपकी ही उम्र के उन बच्चों के होंगे जो अंग्रेजी माध्यम के इन बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ते। आप में से शायद ये सब कुछ लोगों को अनुभव ये हुआ होगा कि आप जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पीयर ग्रुप कहते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं होती। तब आप लोग, मैं जानता हूँ मेरी बेटियां भी आप जैसी ही हैं और रही हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप दोस्तों के भीतर किस तरह की बातचीत होती है, कैसी, किस भाषा में होती है। लेकिन कभी आपने क्या अनुभव किया कि आपके ज्यादातर दोस्त जो अब हैं वो आपके जैसे ही हैं, और आपकी गहरी दोस्ती शायद अब उन लोगों से कम होगी जो अंग्रेजी आपकी तरह नहीं बोलते। एक दूरी क्या आपने अनुभव की है? आपने क्या ये महसूस किया है कि जो बनारस में रहने वाले या जौनपुर में रहने वाले या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे रहने वाले, वहाँ के जो 90% बच्चे हैं, 90 से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजी बोलने वाले 10 से 11% ही बने हैं, बाकी 90% भारत अपनी अपनी भाषाएं बोलता है। वो आपके करीब नहीं आ पाते, वो 90% बच्चे, और आप भी उनके करीब नहीं जाते। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप एक ऐसी भाषा के क्लब में आ गए हैं जो दूसरी भाषाओं को, जो भारत की ही भाषाओं को बोलने वालों को बाहर रखता है अपने से। मैं दोनों भाषाओं में रहता हूँ, जीता हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ऐसा होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भाषा को लेकर काम करता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, उसके केंद्र में है अंग्रेजी। और मैं आज आपसे अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं की बात करूँगा। मुझे 20 साल से, मैं लगभग 20-25 साल से ये चीख चीख के कह रहा हूँ, और जहाँ मौका मिलता है, जो मुझे बुलाता है, मैं उसको ये कहता हूँ कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो भारत, जो दुनिया में एथनोलॉग के अनुसार 4थे नंबर पर है भाषा विविधता में, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में, यानी जहाँ सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भाषाएं हैं और भाषाएं एक देश की संपत्ति होती, वो भारत की भाषिक विविधता अगले 50 सालों में घटकर आधी से भी कम हो जाएगी। पिछले 50 सालों में ये भारत सरकार की शिक्षा, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, वो अगर आपने पढ़ा होगा, और प्रतिमा जी ने और बाकी दोनों, मधोक जी ने तो पढ़ा होगा, वो ये बताती है कि पिछले 50 साल में भारत की 200 भाषाएं मर गईं। यूनेस्को कह रहा है कि भारत की 197 भाषाएं मरने की कगार पर हैं, मरने वाली हैं। दे आर नियर एक्सटिंक्शन, विनाश की कगार पर। और मेरा डर ये है कि दोस्तों, ये भोजपुरी है या जो हिंदी है, जो आज संसार की सबसे तीसरी या चौथी सबसे बड़ी भाषा है, कुछ लोग तो उसको संसार सबसे बड़ी भाषा मानते हैं संसार में, कुछ ऐसे हिंदी के हमारे मित्र भी हैं, लेकिन वो तीसरी या चौथी तो है ही। मैंडरिन, इंग्लिश, स्पेनिश के साथ साथ वो भी एक जीवंत भाषा के रूप में नहीं बचे। और मैं ये सोचकर डर जाता हूँ, ये एक बुरे सपने की तरह मुझे जगा देता है, शायद अगले 50 साल बाद, जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, 25 साल बाद ही ये मौका आएगा, और उसके थोड़ा और आगे चले जाएं, तो भारत का ज़्यादातर पढ़ा लिखा जो भारतीय हैं, आप लोग बड़े हो चुके होंगे और आपके बच्चों भी, शायद बच्चे भी आ रहे होंगे, वो अपनी सारी भाषाओं को भुलाकर, किनारे करके, नज़रअंदाज करके सिर्फ एक भाषा अंग्रेजी में बोल, पढ़ और लिख रहे होंगे। अपने जिंदगी के सारे गंभीर काम सिर्फ एक भाषा में कर रहे होंगे। और ये जो हमारी भाषाएं हैं, 22 बड़ी भाषाएं हैं, वैसे उसके अलावा 1600 भाषाएं हैं और अनगिनत भाषाएं हमारे यहाँ। ये वो भाषाएं हैं जिनमें, जिसे हम भारत और भारतीयता कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। और मैं कोई पोंगा पंडित उस तरह का वो नहीं, जो मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो मैं इस आधुनिक सभ्यता से अपरिचित हूँ, मैं दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपरिचित हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता, ऐसा नहीं। मैं खूब टेक्नोलॉजी और जो भी आधुनिक है उसके
उससे खूब उसके साथ जीने वाला आदमी, वो बहुत आधुनिक इंसान हर अर्थ में। तो वो भारत कैसा होगा? आपने कभी ये सोचा है कि चीन अपना सारा काम किस भाषा में करता है? रूस, चीन, जापान, जर्मनी, पूरा यूरोप, इन्होंने अपनी सारी जो तकनीकी उन्नति हासिल की है वो किस भाषा में की? संसार के 20 जो सबसे अमीर देश हैं, जो पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखें, तो उनमें सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जिनकी प्रथम भाषा है। बाकी 15 से 16 देश, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारी समृद्धि, सारा विकास अपनी अपनी भाषाओं में किया है। छोटा सा देश इजराइल, जो 80 से 90 लाख की जिसकी आबादी है, वो हमसे 3 गुना ज्यादा नोबेल पुरस्कार वो टेक्नोलॉजी में और साइंस विज्ञान में जीतता है। हम 130 करोड़ के होके हमारे पास कितने नोबेल हैं? भारत, और आप काशी में हैं, जो अभी दीपक जी कह रहे थे, काशी तो ज्ञान की नगरी है, लेकिन वो ज्ञान आजकल हमारे आपके जीवन में कहाँ दिखता है? उस ज्ञान ने आज वो ज्ञान कहाँ है भारत के पास? तो सारी दुनिया का अनुभव हमें ये बता रहा है कि जहाँ मौलिक ज्ञान निर्माण होता है, जहाँ मौलिक चिंतन होता है, वहीं मौलिक आविष्कार होते हैं, वहीं मौलिक शोध यानी रिसर्च होती है, वहाँ मौलिक नवाचार यानी इनोवेशन होता है। आज संसार में इनोवेशन की बहुत बात आप सुनते होंगे। ये सारी चीजें एक मौलिक दिमाग से आती। मौलिक दिमाग के लिए अपनी सांस्कृतिक सामाजिक जमीन पर मजबूती से खड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, जो अब मौलिक सोच मौलिक भाषा में आती। अभी एक इतनी बड़ी पीढ़ी हमारे सामने आ गई है, आपके और आपके बहुत सारे ऐसे लोगों की, जिनको आप कड़ी बात लगेगी, मैं माफी चाहता हूं, आपको अगर दुखे तो माफ कीजिएगा, लेकिन वो भाषिक अपाहिज हैं। आप नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी अंग्रेजी होगी, मैं देख सकता हूँ। आदित्य की अंग्रेजी सुनकर मुझे समझ में आया कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और उसकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। और प्रतिमा जी ने मुझे बताया था कि आपके विद्यालय में तो गीता की भी पढ़ाई होती है, आपके यहाँ भारतीय संस्कृति पर, भाषाओं पर बहुत जोर दिया जाता है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप दुर्लभ हैं इस मामले में। जो अधिकांश इस तरह के विद्यालय हैं, और मैं सारे देश में जाकर देखता हूँ, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो लोग विद्यालय चलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय चलाते हैं, वहां ये स्थिति नहीं है। तो ये जो भारत की सारी सभ्यतिक संपदा यानी सिविलाइजेशनल वेल्थ है, वो सारी अंग्रेजी से हमारे पास नहीं आई है, वो इन्हीं सारी भाषाओं से आई है पिछले 7-8 हजार सालों में। बनारस अपने अंग्रेजी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अपने संस्कृत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। काशी की विद्वत्ता, काशी का पांडित्य, काशी को जो तत्व, जो चीजें विशेष बनाती, वो अंग्रेजी में नहीं है। आपको ये भी पता होगा शायद कि 200 साल पहले, यानी अंग्रेजों के आने से पहले, यानी 17वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में, शताब्दी यानी सेंचुरी में, भारत का जो विश्व व्यापार में भाग था, शेयर था, वो 25 से 30% था। यानी 25% शेयर इन ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल वेल्थ वाज कंट्रीब्यूशन वाज इंडियाज। जब हम आजाद हुए तो वो 1% भी नहीं रह गया था। आज भी हम लगभग 2% के आसपास हैं। तो जब भारत के पास अंग्रेजी नहीं थी, इस तरह के हमारे ये शिक्षा पद्धति नहीं थी, तब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, जहां पर सारी दुनिया से लोग और व्यापारी या तो उसे लूटने आते थे या उससे व्यापार करने आते थे। आज हम कहां खड़े? तो मेरा निवेदन ये है कि आप लोगों को, आप एक शायद आखिरी पीढ़ी होंगे जो भारत को भारत बनाए रख सकता है। अगर आप और आपके शिक्षक, आपके माता पिता भी
आपके और हमारी जिंदगी में, भारत की जिंदगी में भाषा के महत्व को समझें, भाषाओं को बचाने की जरूरत को समझें। अगर हम सब कुछ अपना अंग्रेजी में करते गए और हिंदी और यह हमारी सारी भारतीय भाषाएं सिर्फ हमारी हल्की फुल्की बातचीत का माध्यम होकर रह गई, हमने उसमें पढ़ना कम कर दिया, हम उनमें लिखने में अक्षम हो गए, तो जैसे आज हम एक नकलची देश के रूप में जाने जानते हैं, एक मौलिक रचना करने वाले, मौलिक आविष्कार करने वाले देश के रूप में नहीं, ऐसे ही हम बने रहेंगे। भारत के पास अपार प्रतिभा है। आप सब लोग विश्व विजय करने की क्षमता रखते हैं, आप में इतनी प्रतिभा है। भारत की प्रतिभा का लोहा दुनिया भी मानती है। भारत से गए हुए लोग, हम जानते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, और ऐसे तमाम बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं जहां पर भारतीय चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन, वो चेन्नई के, तमिलनाडु के एक सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़े हैं और शुरुआत में गांव में पढ़े थे, तमिल माध्यम में। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक तमिल माध्यम स्कूल में पढ़े हुए थे? अभी भारत को सबसे ज्यादा दुनिया में जो गौरव दिलाया है जिन खिलाड़ियों ने हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में, उनमें से 80 से 90% अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी बोलते नहीं। वो अपनी अपनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो चामू हो, चाहे वो हमारे नीरज चोपड़ा हो। तो प्रतिभा का भाषा से कोई संबंध नहीं है। प्रतिभा हर भाषा में, हर भाषा क्षेत्र में पैदा होती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश ने अंग्रेजी को एक ऐसा अपने स्तर पे बिठाया है, अपने औपनिवेशिक अनुभव के कारण। औपनिवेशिक अनुभव यानी हमारे जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है भारत का। आप जानते हैं कि हम गुलाम रहे हैं, हम कॉलोनी रहे हैं। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने, उन्होंने अपनी भाषा भी हमारे ऊपर थोपी, अपनी शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर डाली। उम्मीद थी कि जब भारत आजाद होगा तो वो अपना काम, अपनी जिंदगी अपनी भाषाओं में जिएगा और अपनी भाषाओं की ताकत पर खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन भारत ने शुरू में ही एक अंग्रेजी की बैसाखी ऐसी ला दी जिस पर आज हम और आप जैसे लोग गर्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो 90% लोग हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती हमारे पास बात करने के लिए। अभी आप लोग, आप भाग्यवान हैं कि आप सनबीम जैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप भाग्यवान हैं कि आपके माता पिता या तो इतने संपन्न हैं या उन्होंने कुछ भी करके, संघर्ष करके आपको एक ऐसे संपन्न अच्छे विद्यालय में भेजा है। आप इस देश के 1% से भी कम उन बच्चों में हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। बाकी लोगों का क्या होगा जो आपके हम उम्र हैं, आपकी उम्र के बच्चे हैं? क्या उनके पास आपसे कम प्रतिभा है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपसे ज्यादा हो, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा भूख होगी। क्योंकि जहां अभाव है वहां भूख ज्यादा होती है, जहां भूख है वहीं ताकत होती है, वहीं संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहीं सफलता होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास आज के बाद, मुझे सुनने के बाद, जरा घर जाएं या शहर में जाएं तो अपने आसपास देखें कि जो आपके दूसरे लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं या भोजपुरी में बोल रहे हैं, जो आपके जैसे कपड़े नहीं पहने या आपकी जैसी भाषा नहीं बोल पाते, आपकी जिंदगी में उनकी कोई जगह है क्या? कितनी जगह है? क्या आप उनको बराबर इज्जत दे पाते हैं? क्या भीतर से आप उनको उस आदर के साथ, उस समादर के साथ देख पाते हैं जैसे आप अपने दोस्तों को देखते हैं? ऐसा नहीं होता। वो आपकी अंग्रेजी से डरते हैं, वो आपके एक्सेंट से डरते हैं, आपके पास आने में उनको संकोच होता है। और ये एक इतनी खतरनाक विभाजन रेखा इस देश में बटी हुई है कि एक संपन्न बड़े लोगों की, प्रभु वर्ग की भाषा है, और दूसरे जो वंचित हैं वो भाषाओं के लोग हैं। और इसने इस देश की 90% प्रतिभा को कुंठित किया हुआ है, उसको आगे बढ़ने से एक सीमा के बाद रोका हुआ है। ये जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्लास सीलिंग है। ये इस ग्लास सीलिंग के पार वही जा पाता है जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है।
उसकी समझ कैसी हो, वो इंसान कैसा हो, उसका चरित्र कैसा हो, मेहनत कर सकता हो कि नहीं, मौलिक चिंतन की क्षमता हो या नहीं, लेकिन इन सब का उतना महत्व नहीं है जितना एक भाषा एक खास लहजे में बोल पाने की क्षमता। मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखें। आपकी जो भी अपने घर की भाषा है, आपके शहर की, आपके जिले की भाषा है, उसको भी आप उतनी ही इज्जत दें और अपनी जिंदगी में उसको जगह दें, उसमें पढ़ें और कोशिश करें और उसमें अपने को अभिव्यक्त करने की, उसमें लिखने की भी। और आप पाएंगे कि एक नया संसार आपके सामने खुल गया है, एक ऐसा संसार जिसने आपके परिवेश को, आपके पूरे परिवार को, आपके दादा नाना को, आपके माता पिता को बनाया है। भाषा हमारी चेतना का निर्माण करती है। भाषा सिर्फ कहने सुनने और संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा हमारी चेतना का निर्माण करती है, और हमारी जब भाषा बदलती है तो हमारी चेतना बदल जाती है। जब हमारी चेतना बदलती है तो हमारा सब कुछ भीतर से बदल जाता है। हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है, जीवन शैली बदल जाती है, हमारे सपने बदल जाते हैं, हमारे पसंद नापसंद बदल जाती है, हमारे स्वाद बदल जाते हैं, हमारे दोस्त और हमारा सामाजिक दायरा बदल जाता है, हमारी विश्व दृष्टि बदल जाती है और हमारी महत्वाकांक्षाएं बदल जाती है। राहुल जी, समय का अभाव है और मेरी बात हो गई। इतना काफी है, मैं समझता हूँ। तो मैं भाषा के बारे में यही कहना चाहता था, और उम्मीद है मुझे कि आप लोग थोड़ा सा आज के बाद अपने घर की, अपने माता पिता की भाषा के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और भाषा पे आपने जो भी बातें आज कही हैं, मेरे हिसाब से केवल जो विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने ही नहीं, लेकिन तमाम सुनने वालों ने, देखने वालों ने भी उन्हें आत्मसात किया है। और मेरे ख्याल से किसी भी एक नए सोच के परिवर्तन की तरफ जो कदम उठना चाहिए, मैं तो उम्मीद करती हूँ आज के बाद जरूर उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आदित्य, टेक ओवर, ऑल योर्स। यस मैम, मैं फिर से राहुल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। और बहुत जरूरी है कि हम सभी समझें कि भाषा का क्या महत्व है जीवन में। हम यहाँ बात कर रहे हैं अंग्रेजी में और हम बात कर रहे हैं हिंदी में, बट मेरा ये विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, जो हमें इमोशंस जो हम हिंदी में कह पाते हैं, उससे बहुत खराब हम इंग्लिश में समझते हैं उसको। तो हाँ, बहुत जरूरी है कि भाषा हमारे जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। So thank you once again, sir, for joining us today. Now moving on with the next speaker. I think it is fairly common for writers to be afflicted with two simultaneous yet contradictory delusions: the burning certainty that we are unique geniuses and the constant fear that we are witless frauds who are speeding towards epic failure. Through a fictional account of the discovery of the number zero, science fiction author and publisher Salik Shah talks about the power and ideas of stories and how stories that we choose to believe in can ultimately change the world. Over to you, sir. Imagine a world without the number zero. You are a young mathematician from a small province who isn't satisfied with the status quo. You want math to be easy and accessible to everyone. To do this, you have developed a new method of solving math equations, which is simpler, faster, and more elegant. And it involves the use of a brand new number, this zero. Once the Royal Academy of Sciences approves your method and accepts your zero, math won't be so hard, so difficult anymore. But given your background, the Academy is impossible to please. Between 1 and 9, the head of the Academy tells you, "We've got all the numbers we need." "No, sir," you plead. "You don't quite understand. The world needs a symbol for Shunya. The world needs zero." "No, it doesn't," the other members of the Academy tell you. "We don't need you." You think they are testing your resolve to see if you'd give up. You've spent countless nights looking at the stars, wondering about their origins. The universe sprung from nothing, from Shunya, to something so vast, unknowable, big. And the number that you've come up with,
This 0 is the best representation of that obscure point of origin. You don't know yet that this null number would one day make complex calculations possible and save countless lives. You don't know that it would help people like us in the future build human-like robots with artificial intelligence. For now, you just try to convince the academy that it's a valid, a proper number, but they refuse to believe you. They ridicule and reject you. So what do? You leave. You wander from city to city trying to find a home for your idea. It's not easy. And when the going gets tough, when you're cold and starving, you tell yourself, one day, surely the world will recognize my genius. One day, my suffering will surely end. Sadly for you, that day never comes. Some ideas take a long time to find their home. And in the case of 0, it would take 2000 years. Hi, I'm Shalik Shah. I'm a science fiction author, publisher, creative entrepreneur. I use stories like this one to understand our past, explain our present, and imagine our futures. It's a basic human nature to ask, to wonder why the world is as it is. Why is the world so full of suffering? Why are people not free? Why can't we just be happy? If you are like me, you must have thought about some of these questions at some point in your life and maybe also come up with some answers. What are these answers? They are stories. Stories that you choose to believe in. This terrible state of the world we are forced to inherit isn't by default. It is by our own choice, our flawed design, our faulty stories, stories that we've been forced to accept as eternal truth or reality, stories that justify everything from inequality to poverty to the broken healthcare system to hatred and violence, from the suspension of human rights to the end of freedom and democracy. So how did we let these faulty, these evil stories win? How did stories about the good lose their hold, their power over us? Stories about love, compassion, social harmony and universal kinship. Stories about science, truth and justice. Why did these good stories fail? How did we fail? Well, the answer is quite simple. Stories fail when we stop believing in them. Without belief, stories lose their power. Societies collapse. Nations crumble. As we, the people, surrender our will to the darkest angels of our natures, the monsters within. Like most young girls and boys in many parts of the world today, I grew up longing for peace and prosperity during a time of war and conflict. My first serious attempt at writing a short story, Shambhala, deals with this coming-of-age experience. Even as a young boy, I knew, like every child knows, the emperor has no clothes, that the world was not a happy place. And I wanted to fix it. I invented my own secret alphabet. I dreamt of a united world government. I obsessed over all sorts of weird things, like getting a cyber girlfriend. And I wrote epic poems and stories about them. Rejections are part of every writer's life, and I was no different. But as a young writer who was just beginning to write in what was essentially a foreign language, English, I couldn't find a literary journal that would accept or critique my works. No surprise there. Most literary journals and publishers don't even bother to reply to unsolicited submissions. So when I started my own literary journal, Mithila Review, 6 years ago, I made sure that we were open to submissions from around the world. I made sure that we replied to each and every submission, often with a personal note. Much like TED, Mithila Review is truly an inclusive and global platform. We publish the best of science fiction and fantasy from new, emerging and award-winning authors from around the world. We have
One Riesling Award for speculative poetry, and fingers crossed, maybe we are slowly crawling towards a Hugo win. Okay, now let's get back to the story of Zero for a moment. Can a story of real or imaginary invention inspire science and creativity? The short answer is yes. Science fiction often becomes science fact because it asks what if questions and paints all the possible, plausible, probable, and preferred futures. In the form of alternative or future histories, they show us where we went wrong, what is still possible. From reviving dead cells with electricity, as in Mary Shelley's Frankenstein, to 3D printing bionic limbs or artificial organs, from earbuds to tablets, from slinging people to the moon in space cylinders to self-driving cars, science fiction has predicted many of the inventions of the modern world, all rooted in the human desire to solve a need, fulfill an impulse. Even as we are building AI and quantum computers with the help of Zero and her numerical friends, these complex thinking machines don't quite define us. It's what we humans choose to do with our technologies that ultimately defines humanity. Science fiction, speculative fiction is all about making and facing the consequences of our choices. Human life is unpredictable. Life itself is rare and uncertain in the universe. The survival of all life forms on Earth depends on us making the right choices. Our survival depends upon the transfer of knowledge, scientific truths, insights, and experiences from one generation to the next so that we can make data-driven, informed choices. Where the human DNAs fail, the human language triumphs in storing and transferring such knowledge in the form of stories. Without these stories of history and science, humanity would be lost. We can't evolve or flourish as a people. Once you stop seeing the world through the lens of privilege, gender, race, religion, or citizenship, you will see the world for what it is, a big story. And once you begin to see the world as a story, a work of fiction, a lie, you will realize that the ancient structures of our world are not as permanent or fixed as you once thought. Truth is, anyone can demolish and rebuild the very foundations of our civilization with a new, powerful, and better story. Ultimately, we are only as good or as bad as the stories we tell about ourselves. When too many people start believing in a story, your story, accepting it as truth or reality, it has the potential to change the world. Time for a disclaimer, a friendly warning. It's not that easy to change the world. It takes time, even for the greatest storyteller. Chances are, at first, your story, idea, or invention might get rejected just like Zero. You must learn to be patient. It can take years, sometimes generations, for some ideas to plant form roots and blossom in the hearts and minds of people. Ideas like the Higgs boson, which took 50 years, $10 billion, and not to mention the collective efforts and discoveries of countless people over many, many generations. Ideas like the terraforming of Mars into a blue-green planet able to sustain life, a second home for our species, perhaps 1,000 years from now. In my early 20s, I didn't believe in such long horizon, blue sky thinking. I was young, confused, and hungry for change. But when change was slow to come, for a while, I stopped believing in the future. That's why I still remember the story of the Higgs boson. Stories like the Higgs give us a sense of purpose and restore our faith in humanity. The Higgs field was first proposed by scientists in 1964 to explain how elementary particles such as electrons and quarks gain mass. At the time, scientists didn't have means to prove the theory. That's why the discovery of its existence many decades later came as a moment of clarity for all of humanity. And even from a great distance, personally, I could see it was quite a big deal, a once-in-a-lifetime kind of human achievement.
like the electricity, like the moon landing. And it definitely marked a turning point for me. Slowly, I regained my faith. I rediscovered my love for science and technology. Once again, I started to believe in the power of ideas and the promise that future holds. Soon, Mithila Review was born, and as its founder, I became the board member of Plurality University in France. It's a global network of artists, utopians, and activists who use the power of imagination to enable alternative futures. I also became an ambassador of the Seasteading Institute to promote the creation of floating cities on the next human frontier, the international waters of our oceans. In theory, these new floating cities would radically reimagine what we know of architecture, economy, governance. In theory, land-based cities would have to embrace change and continuously upgrade in response to the stiff competition coming from these floating cities. Just like startups today, cities that fail to serve their communities better will become irrelevant and lose their users or inhabitants, whether on land or water. This is science fiction in action. In one of my short stories, screaming to be a novel, The Architecture of Loss, I provide a glimpse of what that world would look like. I propose a new, organic, regenerative, living architecture that coexists with the nature. Imagine fully autonomous, self-repairing buildings that are living, breathing organisms. In the same story, I explore terraforming efforts to fight climate change with nano drones and the inevitable human expansion beyond Earth. Like in all good stories worth telling, there is one wrinkle in our grand scheme to build a spacefaring, galaxy-spanning civilization. Truth is, as the effects of climate crisis become worse, we might not even last this century after all. We might never become type 2 or type 3 civilization because of our excessive greed and mindless consumption. Or perhaps our generation, your generation will save us. That's the story I choose to believe. The future of our fragile planet hangs by the breadth of your story. Stories that you choose to believe in. Remember this, your choices can make or break our destiny. So before I go, let me ask you, what's your story? What do you believe in? Thank you. Thank you so much, Saliksha. And truly, the stories we choose to believe in are the ones that define us. With this, we come to a short break of 10 minutes so that all of us can enjoy this food for thought, and we'll be joining back after 600 seconds. Thank you. ऋतुओं की नाव में आज होकर हम सब चले सवार, सात सुरों के रंग में सजोए प्रकृति का वर्णन करें अपार। इन्हें बचाएं, इन्हें सजाएं, इनकी देन है अपरंपार। आओ ऋतुओं के गीत गाएं, नमन प्रकृति तुम्हें बारंबार, नमन प्रकृति तुम्हें बारंबार, नमन प्रकृति तुम्हें बारंबार। प्रबल नाग गहन आँच देखो देखो आयो कृष्ण, ताप हरो हे कष्ट हरो रहत आज धरा भीष्म। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला।
हरियाली हो गई पानी, धरती की भीगी छाती, जिए राहत से, जिए राहत से, जिए राहत से रे, ओ भैया मेरा बरसे रे। बादल बाबर
धरती पहने पुष्पहार, पिघलाई करके श्रृंगार, चिड़िया चहकी बगिया महकी, मानो जीवन का वो सार, महका आंगन रिक्त गंध, आयो अब ऋतुराज बसंत। We welcome you all back to TEDxYouth at SunbeamBhagwanpur. For the next speaker, I would now like to introduce him. How would it have been possible to spread ideas if it hadn't been for the theatre and the movies in the world? Easily the most widespread source of entertainment and talent, the movies have been quintessential link in the chain of information and activism. Sanjay Masoom has been a screenwriter for a string of hit films such as Krish, Jannat 2, Gunde, Krish 3, Raj Natwarlal, Koilanchal, and many more. He won the IFA Award of Best Dialogue for his work in Krish 3. But to be honest, I simply cannot state all of his achievements and also believe I don't need to. But before we begin his interview with Mr. Gokarn, I would like to invite Mr. Masoom for his short opening note for the next few minutes. Mr. Masoom, over to you. हेलो सबको नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बातें सुनी मैंने, और अभी बच्चों ने निदा फाजली की गजल गाई, बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन था। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में ही, बनारस के ही पास एक जिला है गाजीपुर, वहाँ मेरी पैदाइश हुई, और वहाँ से फिर मैं एक लंबा सफर तय करते हुए मुंबई आया, और यहाँ फिल्मों में संवाद लेखन और पटकथा और स्क्रीन प्ले, स्टोरी और लिरिक्स, इन सबसे जुड़ा हूँ। अब तक कह सकते हैं कि काफी फिल्में लिखी हैं, और एक सफर बहुत शानदार है। अभी क्योंकि इस वक्त ओटीटी का वक्त चल रहा है, तो ओटीटी पर भी मैंने एक वेब सीरीज लिखी, आश्रम, और जिसके डायलॉग, जिसके संवादों की बहुत तारीफ हुई, और मुझे सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार भी मिला। तो बहरहाल मैं अपनी तारीफ क्या करूं आप सबके सामने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं स्कूल के, और जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसको देख रहे हैं, कि लेखक सबके अंदर होता है। मैं राइटर हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेखक आपके अंदर है,
वो किसी भी विधा में, किसी भी शक्ल में सामने आना चाहता है तो उसको रोके ना, उसको प्रोत्साहित करें और अपने अंदर के लेखक को बाहर लाएं। और लेखन एक ऐसी विधा है, सब हमारे यहाँ सब कोई लेखक होता है, किसी को पता होता है, किसी को एहसास होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन लेखक सबके अंदर मौजूद है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अपने भीतर के लेखक को जिंदा रखिए और कुछ भी, जो भी आपका मन करे, जो आपके दिमाग में, दिल में जो बातें हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। और विधा कोई भी हो सकती है, कहानी, गीत, कविता, नाटक, निबंध, लेख, कुछ भी हो सकता है। तो लिखते रहें और लिखने के लिए जो सबसे बहुत जरूरी एक बात है वो है जिंदगी को समझना, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ लेखक ही लेखन कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, लेकिन जिंदगी को करीब से देखें, जिंदगी को पढ़ते रहें और अपने लेखक को लगातार कोशिश करके भी अगर करना पड़े तो जिंदा रखें। और ये लेखन जो है अपने आप में एक कमाल की बात है और बहुत सुखद एहसास दिलाती है। और एक कुछ भी लिखना मतलब क्रिएट करना है, तो कुछ भी क्रिएट करने का जो एक आनंद है, जो एक उसमें एक सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत अलग है। तो बस इतना सा ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत स्पीच देने की मेरी आदत नहीं है, लिखने की आदत है, तो मेरे लिखे हुए को लोग बोलते हैं। तो बस स्पीच के तौर पे मैं इतना ही कहूंगा कि अपने लेखक को जिंदा रखिए और उसको मजबूत बनाइए। Thank you so much, sir. Today we have also been joined by Mr. Vishwanath Kokarn, a journalist who was born in Kokarn, Karnataka, but found his true love and roots in the city of Varanasi, mingling in the quaint charm of the city, absorbing the Banarsipan as his identity. We welcome you, sir, and request you to take over for the further proceedings for a while. Thank you, Aditya. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्कार विश्वनाथ जी, ये जानना चाह रहा था कि आज बहुत सारे दर्शक आज आपको मतलब सुनना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना कि मैं आपसे बात करूं और इस सिलसिले में की कहानी को सुनूं, जो है बच्चों को जो है। एक बच्चा जब गाजीपुर जिले के बालामो गांव से निकलता है, दर्जा 10 पास करने के बाद, 10th क्लास पास करने के बाद शहर में आता है बनारस पढ़ने के लिए, तो अपनी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव चाहता था, क्या चेंज चाहता था अपने आसपास या अपने गांव में या अपने परिवार में या अपनी खुद की जिंदगी में, ये जरा सा बताइए। ये विश्वनाथ जी, जैसा मैंने कहा अभी पहले कि हर आदमी के अंदर एक लेखक होता है, और तो मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ लिखना चाहिए। तो वो बेचैनी एक शुरू हो गई थी अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो मेरे अंदर ख्याल है या जो चीजें आ रही हैं उनको लिखा जाए, सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं था। तो पढ़ाई के दौरान मैं जब बनारस में जेपी मेहता कॉलेज से जब मैं इंटर कर रहा था, तो उन दिनों एक जैसा कि होता है आमतौर पर, बच्चे सुन रहे हैं इस बात को, तो हमारे दौर में था ये था कि एक आपका एक मंडली बन जाती है दोस्तों की, या उनके साथ आप वो करते हैं। तो हमने बनारस में फिल्में देखनी शुरू की बहुत। तो वहां से कहीं ना कहीं एक फिल्मों का जुड़ाव शुरू हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि फिल्में लिखने की बात उस समय कहीं ज़हन में थी मेरे। ये था कि हाँ कुछ लिखा जाए। तो मैंने शायरी से शुरुआत की और मैं गजलें लिखने लगा, टूटी फूटी जैसी भी थी। तो और फिर लगा कि और कुछ लिखना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इंटरमीडिएट करते करते मैंने एक बच्चों का एक उपन्यास लिख दिया था बनारस में रहते हुए। तो वही मैंने कहा कि उसमें क्या था संजय जी, उसमें वो जैसे उस दौरान उस समय हम पढ़ा करते थे जो छोटे छोटे पॉकेट बुक्स की आती थी किताबें की, मतलब
खंडहर का रहस्य और है, और इस तरह से, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कुछ लेखक बहुत लोकप्रिय थे, तो उनका असर बहुत ज्यादा था। तो उस असर में आके मैंने फिर किताब, एक उपन्यास लिख दिया, हालांकि वो वैसे ही रखा रहा। फिर मैं वहां से इंटरमीडिएट करने वाला इलाहाबाद गया, तो वहां पे अगेन लेखन का मामला था, तो वहां पे एक अच्छा माहौल मिल गया, कुछ लोग मिल गए, एहतराम इस्लाम, यश मालवी जैसे कुछ कवि मिल गए, तो उनके साथ एक माहौल बना, तो मैं कविताएं करने लगा बेसिकली। तो इस तरह से अब लेखन से जुड़ाव होता गया, होता गया, होता गया। और फिर मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की, आप तो जानते हैं। तो पत्रकारिता में मैंने माया प्रेस में काम किया, और वहां से फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जो पत्रिका थी धर्मयुग, उसमें उपसंपादक बन के बम्बई आ गया। तो इस तरह से ये सफर लेखन के थ्रू ही चलता रहा। संजय, फिर आप जब जो फिल्में देखते थे, जो फिल्में आपने स्कूल बंक करके फिल्में भी देखी होंगी, सब किया होगा आप समय। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय जो आपने जो फिल्में देखी होंगी, उस समय जो कहानियां लिखी जाती थी, या जैसे आपने कहा कि आप शायरी करते थे, गजलें लिखा करते थे, तो जो गाने हुआ करते थे, उसको देख के आपको कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? क्या चेंज चाहते थे आप? और उस समय तो ऐसा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो उस समय ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया था कि कुछ चेंज करना चाहिए, या मतलब फिल्में देखते थे, एंजॉय करते थे। और उसमें एक बात बहुत खास थी, जो कि आमतौर पर उस उम्र के लड़के और खाली फिल्म देखते हैं, और फिल्म में जो कहानी होती है उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं जो है बहुत वो क्रेडिट्स बहुत ध्यान से देखता था। अच्छा। शुरू में जो टाइटल्स होते थे कि कौन है इसमें, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है, तो अब पता नहीं, शायद डेस्टिनी में ये था कि किसी दिन मतलब मेरा नाम भी शायद उस तरह से आएगा। लेकिन ये शुरू से था कि यार कौन, किसने बनाई ये फिल्म, तो ये कह सकते हैं। बाकी चेंज करने जैसा उस समय, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त तो ये भी नहीं था कि हम फिल्मों से जुड़ेंगे। उस समय तो कहीं दूर दूर तक ये भी ख्याल नहीं था कि कभी फिल्म लेखन से रिश्ता बनेगा। उस समय बस यही था कि एक कुछ लिखना है और लिखते लिखते रहना है, और बाकी फिर रास्ते बनते गए। और इस तरह से आप इलाहाबाद पहुंचे, और इलाहाबाद में आपको जो है लॉ की पढ़ाई पढ़नी थी, जो है आपको एक, आपके माता पिता एक सफल वकील के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे, बैरिस्टर के तौर पे देखना चाहते थे, जी और जी आप वहां से जी। वकालत करने के बाद जर्नलिज्म में आ गए। हाँ, ये एक कह सकते हैं आपकी, अगेन मैं, देखिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ कि नियति जो है वो बहुत शानदार खेल खेलती है। आपकी तमाम कोशिशें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक रास्ता बनता है। ये इसमें दो राय नहीं कि बीए में मैंने फर्स्ट डिवीजन से बीए पास किया, और लॉ में भी मैंने यूनिवर्सिटी में 10वीं पोजीशन पे था, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा विद्यार्थी था मैं, अच्छा स्टूडेंट था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय पीसीएस आईएएस का जो माहौल था, तो सब मेरे घर में चाहते थे कि मैं भी कोई अधिकारी बन जाऊं और कुछ करूं। लेकिन अगेन मैंने कहा कि एक तो लेखन का चस्का था, और उसमें मजा आता था। और ऐसा लगा नहीं मुझे कि कभी कि मैं कोई अधिकारी मटेरियल है मेरे अंदर। एक आवारगी थी, एक था, तो इस वजह से एक घर के लोग काफी नाराज भी हुए। मेरे फादर तो बहुत ही नाराज हुए, उन्होंने कहा कि ये तो आवारा हो गया है और बिल्कुल अब किसी काम का नहीं है। और मैं आपको सही बताऊं तो आज तो हालात, स्थितियां बहुत अलग है। उस वक्त की जब हम बात करें, आप भी जानते हैं कि उस समय लेखन जैसी चीज को मतलब ये पेशा भी हो सकता है और इसमें पैसे भी मिल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था नहीं एक्चुअली। तो लेखन का ये था कि चलो यार, चलो साइड में तो अपना करते रहो, शौक है, लेकिन करना क्या है, जीवन यापन कैसे करना है। तो बहुत दिनों तक ये बात समझ में नहीं आई है मेरे परिवार वालों को, किसी को भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैं टाइम्स में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं आया, और वहां पे सैलरी के तौर पर एक ठीक ठाक जो है वो पे स्केल दिखी जब और वो लगा कि अरे ये तो अधिकारी वाली एक पे स्केल, मतलब मुंशी मजिस्ट्रेट वाली। तब जाके एक बात समझ में आई कि हाँ नहीं यार, लेखन भी जो है वो, या पत्रकारिता भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें पैसे भी हैं और सम्मान भी है और सारा कुछ है। तो धीरे धीरे स्थितियां बदली,
लेकिन नो डाउट कि उनकी उम्मीदों पे शुरू में तो बहुत पानी फेरा मैंने काफी। देखिए, आप जैसे आपने कहा कि आप लिखने पढ़ने का एक जो रचनात्मक लेखन होता है, रचनाधर्मी कहते हैं आप, आपने पढ़ाई के दौरान भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा, खास करके शायर मीर नवाज तक, गालिब से लेके और बाकी आधुनिक काल के जो शायर थे उन तक भी पढ़ा होगा। तो कौन सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा था, या उसमें से क्या एक ऐसा मतलब एसेंस था जो आपको जो है कवि बनाने या शायर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था? जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं लिखना शुरू किया, तो उस समय पढ़ना तो सभी को शुरू किया धीरे धीरे कि, और क्योंकि मैं उर्दू शायरी की परंपरा से जुड़ा था तो उर्दू शायरी ज्यादा पढ़ रहा था। लेकिन आप ईमानदारी से कहूँ तो गजलों, जैसे मैं गजलें कह रहा था, तो गजलों में दुष्यंत कुमार का उस वक्त जो है बहुत, आज भी बहुत शेर उनके कोट किए जाते हैं। तो उनका बड़ा असर था कहीं ना कहीं, कि ये था कि यार इनके जैसे शेर कहने हैं। और गजलों की बात जो कही जाती है कि ये रोमांटिसिज्म का मामला है, और रोमांटिक गजलें जो है वो महबूब से बात करने को गजल कहते हैं। तो उसमें दुष्यंत कुमार ने उसको तोड़ा कि इसमें नहीं, इसमें हम पसीने की बात भी कर सकते हैं, इसमें हम मेहनत कश की भी बात कर सकते हैं, इसमें हम मजदूर की भी बात कर सकते हैं। तो वो एक फैसिनेशन था उनकी शायरी को लेकर, तो उसका बड़ा असर पड़ा। दूसरा, मुझे बहुत पसंद थे निदा फाजली, इसीलिए मैंने कहा कि प्रोग्राम में जो बच्चों ने अभी प्रस्तुति की, जो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने निदा साहब को मन ही मन कहा कि देखिए, मतलब आप नहीं है लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है वो गरज बरस प्यासी धरती को मालती जोशी को भेजा जाएगा, ये जो है मालती जोशी। हाँ देखिए, कमाल की बात है। तो हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए। तो निदा साहब की शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बाद में तो खैर निदा साहब दोस्त हो गए, दोस्ती हो गई बम्बई आने के बाद, और काफी शामें उनके साथ गुजरती थी। तो कह सकता हूँ कि इन लोगों का असर बहुत ज्यादा था। और कविताओं में, जैसे कविताएं भी पढ़ता था मैं, तो जैसे अरुण कमल थे और बाकी बहुत सारे लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक वो धीरे धीरे अंदर एक बात थी। बेसिक बात ये थी कि जो आवाजें दबी कुचली हैं, या जो जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी आवाज को आवाज दी जाए गजलों में। तो ये एक बात थी। एक बच्चा जो है वहां से बालामू गांव से निकलता है, फिर वो जो है संजय श्रीवास्तव, वो 10वीं पास होकर यहाँ आता है, 12वीं पास करता है, फिर वकील बनता है, वकालत पास करता है, फिर उसके बाद वो अचानक से संजय मासूम हो जाता है। तो मासूम जैसा तखल्लुस, ये कैसे मिला, इसकी भी कहानी बताइए। नहीं, ये मैंने बताया ना आपको कि मैंने शुरुआत की गजलों से, उर्दू शायरी से। तो एक एक उस समय वो गजलों में एक परंपरा थी कि एक मतला होता था, एक मक्ता होता था। तो यानी कि गजल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता था, जिसमें कि शायर का नाम होता था, जो उपनाम जैसे आप कह सकते हैं, कि मतलब जिसको कि मक्ते में नाम होता है। तो वो नाम क्या होगा? तो संजय श्रीवास्तव तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बहर में और मीटर में और रिदम में तो नहीं था। तो हाँ, तो एक नाम की तलाश थी। तो ऐसे ही नाम रखते रखते, और कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक एक नई पहचान बनाने वाली बात भी थी, कि कहीं ना कहीं कि ये श्रीवास्तव ठीक है, वो तो अभी भी नाम के साथ जुड़ा हुआ है मेरे, लेकिन एक अलग पहचान लेखन के तौर पर, लेखक के तौर पर थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे नाम सोचे। फिर क्या हुआ कि मेरे एक उस्ताद कह सकते हैं हम, खलीश गाजीपुरी थे। उन्होंने एक सजेशन दिया कि अच्छा, राही मासूम रजा साहब जो है वो हमारे इलाके के गाजीपुर में की मिट्टी के, हाँ वहीं के हैं, वहीं के थे। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि यार राही मासूम रजा भी उधर के ही हैं और आप भी उधर के ही हैं, तो अपने नाम के साथ मासूम लगाइए आप। तो कहीं ना कहीं एक बात जो है समझ में आई कि हाँ ठीक है यार। और दूसरी बात क्या थी कि संजय के साथ मासूम एक नयापन जैसा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो लगाते हैं। लगाने के बाद फिर शुरू कर दिया लिखना, और फिर इस नाम से पहचान धीरे धीरे मिलने लगी और बनती गई। तो फिर ये नाम मेरे लेखन का और रह गया। तो इस तरह से, तो आप यकीन नहीं करेंगे, टाइम्स में तो आप भी काम कर चुके हैं। टाइम्स में नौकरी मैंने संजय मासूम नाम से की। जी मुझे पता और है।
और मुझे जो आपका नाम छपता तो संजय मासूम ही छपता था। इवन रिकॉर्ड्स में भी संजय मासूम था, जबकि सर्टिफिकेट्स मेरे सारे संजय कुमार श्रीवास्तव के नाम से थे। तो बाद में उनको लगा यार ये कैसे किया आपने, कि मतलब ये तो दूसरा नाम है, दूसरा नाम तो यही नाम है। लेकिन फिर उसके साथ पहचान बनती गई, तो फिर ये लगा कि अब इसी को साथ में रखा जाए, तो इस तरह से संजय मासूम हो गया मैं। अब ये संजय मासूम जब बम्बई पहुंचता है तो वो धर्मियों में जो है एक अलग तरह की पत्रकारिता करता है। उसकी भाषा में कहीं कहीं उर्दू होती है, कहीं हिंदी होती है, पूरब की माटी की गंध आती है। वो बहुत तरह के स्टोरीज लिखता है, कवर स्टोरीज भी लिखता है। फिर उसके बाद उसकी शामें अचानक से जो है हस्ती मल हस्ती की गेस्ट हाउस में या उसके इर्द गिर्द गुजरने लगती हैं। हमें संजय मासूम के साथ बैठे हुए सुदर्शन फाकिर दिखाई पड़ते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं, हमें कैलाश सेंगर दिखाई पड़ते हैं, हमें बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, सुमन सरीन दिखाई पड़ती हैं, और उनके साथ आप शायरी करते करते एक मंच पर मतलब वो करने लगते हैं। और वहीं आपकी मुलाकात होती है जगजीत सिंह जैसे मतलब जो है गजलकार से या गजल गाने वाले सिंगर से। तो उन शामों के बारे में कुछ बताइए आप। वही बात वही थी कि एक तो बेचैनी जो आप कह सकते हैं कि थी अंदर कुछ लिखने की, और अच्छा लिखने की, और कुछ ऐसा लिखने की जिससे कि कुछ और पहचान बने, पहचान मजबूत हो। तो उसमें अच्छा उस वक्त बम्बई में बड़ा अच्छा माहौल था। जिन नामों का जिक्र किया आपने वो सारे लोग थे। तो एक तो हम लोग धर्मयुग से निकलते थे और शाम को धर्मयुग का काम जो है 5-6 बजे तक खत्म हो जाता था। तो उसमें यह था कि दूसरी बात क्या थी कि एक तो इतनी लोकल ट्रेनों में भीड़ होती है शाम को, तो ये होता था कि वो जिसको हम पीक आवर्स बोलते हैं बम्बई में, कि आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तो आप हिम्मत नहीं कर सकते। और हम लोगों को आदत थी नहीं, हम लोग बिल्कुल नए नए गए थे वहां से। तो एक ये था कि यार अभी पूरी भीड़ थोड़ी निकल जाए उसके बाद जाएंगे। तो तो वो 2-3 घंटे मिलते थे हमको, तो 2-3 घंटे अब क्या करना है। तो 2-3 घंटों में ये जो महफिलें जमने लगी, तो उसमें फाकिर साहब वहाँ गेस्ट हाउस में हस्ती के गेस्ट हाउस के दुकान के पास रहते थे, निदा साहब खार में रहते थे। तो ये सब हमारे ऑफिस मतलब वीटी से नजदीक था, वो पार्ला था, वो खार थे। तो और सबके अंदर एक वो दौर था कि सब कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे और पहचान बनाने की, लिखने की। और ये लोग तो सीनियर थे, कैलाश सेंगर जी और सुमन सरीन जी। तो मैं तो नया नया अभी आया था, लेकिन वही एक बेचैनी थी। तो इन लोगों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी। तो जब भी ऑफिस से निकलते थे तो यहाँ बैठ जाते थे, कभी नीरा साहब के यहाँ बैठते थे। तो इस तरह से माहौल जो है सुनने सुनाने का, बेसिकली लिखने का, ऐसे ही बनता है माहौल कि आप जब साथ में बैठते हैं तो कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं, और फिर कुछ चीजें आती हैं, फिर डिस्कस करते हैं, बाकी लोगों को डिस्कस। तो एक एक ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। आपको मजा भी आता है, आप दोस्तों के बीच भी होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करता था जानबूझ के कि जितना वक्त मेरा इन लोगों के साथ बीत सके। तो वो बहुत शामें याद आती हैं। तो अब तो बम्बई में वो माहौल नहीं है। अब तो नीरा साहब भी नहीं है, सुदर्शन फाकिर भी नहीं है, कैलाश जी भी नहीं है। तो काफी इन लोगों को मिस करते हैं हम लोग। लेकिन उस इन महफिलों ने काफी कुछ सिखाया। और जो चेंज है, जो बम्बई की बात आप कर रहे हैं, तो इस चेंज को आपकी अपनी लाइफ में कैसे आप देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए उसके बाद क्या हुआ कि धर्मयुग जब तक निकल रही थी तब तक तो एक ठीक था मामला कि हाँ अपन लिखना पढ़ना चल रहा था, ये चल रहा था, और मिलना जुलना महफिलें और सारी कुछ चल रही थी। लेकिन धर्मयुग जब बंद हो गई तो हम सबको नवभारत टाइम्स में शिफ्ट किया गया। आप वहां पे थे पहले से, तो आपको वो दिन भी याद है कि कैसे हम लोग जो है अचानक आउटसाइडर थे हम लोग, तो अचानक आउटसाइडर होके आ गए थे। तो लेकिन क्या था, ईमानदारी से मैं कहूँ तो नवभारत टाइम्स के पत्रकारिता करने में मुंबई नहीं गया। अगर वो पत्रकारिता करनी होती तो मैं इलाहाबाद, बनारस और कानपुर और लखनऊ में करता। बहुत सारे ऑफर भी थे। मैं बम्बई आया था एक नेशनल लेवल की एक रचनात्मक पत्रकारिता जो धर्मयुग की थी।
लेकिन उसके बंद होने के बाद फिर एक बेचैनी सी होने लगी और फिर लगा कि वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर मैंने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि फिल्में मुझे पहली फिल्म मिली, उसके बाद फिर फिल्में मिलती गई और मैं उस तरह से चल पड़ा। तो पहली फिल्मों के मिलने की बात और फिर उसके बाद सनी देओल के परिवार के साथ, रोशन परिवार के साथ आपके जो रिश्ते हैं, महेश भट्ट के साथ आपके जो रिश्ते हैं, या उस घराने की फिल्में लिखी हैं आपने, उसके बारे में। हाँ, तो वही मैंने कहा कि फिर उसके बाद जब फिल्मों की तरफ मैंने रुख किया तो सनी उस समय एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, जिसमें कि वो काफी बड़े लेवल पे बनाना चाह रहे थे। उसमें उनको एक नए संवाद लेखक की जरूरत थी। तो कुछ लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया, पत्रकारिता के दौरान मिलते रहते थे तो सजेस्ट किया। तो उनके डायरेक्टर से मिला मैं और उन्होंने कहा कि आप 2-3 सीन उन्होंने दिए मुझे और कहा कि लिख के ले आइए, दिखाइए। तो एक तरह से एग्जाम देने वाली बात थी, परीक्षा। तो मैंने 3 सीन लिखे, उनको सुनाए और फिर उनको अच्छे लग गए। फिर सनी को उन्होंने सनी से मिलवाया, सनी देओल से, और सनी को सुनाया तो उसको भी अच्छे लग गए। तो इस तरह से एक सिलसिला बन गया। फिर सनी देओल के साथ एक ट्यूनिंग हो गई मेरी और शुरुआती सारी फिल्में मैंने सनी के साथ ही की। उसके बाद फिर क्या होता है फिल्मों में कि फिल्मों का चलना जरूरी होता है। फिल्म क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है और बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सनी की बात की कुछ फिल्में चली नहीं और उसका असर हम सब पर पड़ा। तो उसके बाद फिर राकेश रोशन से मुलाकात हुई। फिर वो उस समय क्रिश प्लान कर रहे थे, तो क्रिश के लिए भी वही बात है कि आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं होता है। जो लोग सुन रहे हैं बच्चे आज का कार्यक्रम, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ कर लिया है तो आप उस मामले में अब मान लिए गए हैं कि आपको आता है ये काम। यहाँ आपको हर कदम पे नया चैलेंज, नया काम है, नया ऑफर है, तो नया चैलेंज है और आपको वापस प्रूव करना है अपने आप को। तो फिर वही कृष्ण में भी उस तरह से हुआ। तो फिर मैंने कुछ सीन लिखे, उनको सुनाए, उनको अच्छे लगे। तो इस तरह से कृष्ण के साथ जुड़ा मैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जरूरी ये होता है, किसी भी फील्ड में होता है, कि जब आप जिसके साथ काम कर रहे होते हैं उसके साथ एक ट्यूनिंग का होना जरूरी होता है। तो ट्यूनिंग जैसे सनी के साथ मेरी थी, फिर राकेश रोशन के साथ बन गई, तो उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ तो अभी मैंने काबिल जो है मेरी 2017 में रिलीज हुई थी, तो वहां तक किया। मतलब 12-13 साल उनके साथ काम किया। क्रिश 2007 में आई थी, काबिल 2017 में आई थी, तो 14 साल मतलब राकेश जी के साथ काम करना, तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और उसके बाद फिर महेश भट्ट के साथ तो वही। अब भट्ट साहब के साथ तो ये था कि मेरी जो गजलों की किताब आई थी यहीं कहीं, उसका विमोचन उन्होंने किया था भट्ट साहब ने। और भट्ट साहब मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते थे अपनी बातों से और उनका जो और तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात हुई उसी इसी सफर में, तो उनके साथ लिखना शुरू हो गया। और भट्ट साहब ने न सिर्फ डायलॉग लिखवाया मुझसे, बल्कि मुझसे गाने भी लिखवाए, मुझसे गीत भी लिखवाए उन्होंने। और जन्नत 2 एक फिल्म थी, उसमें 3 गाने लिखवाए। फिर आशिकी 2 में एक गाना लिखवाया जो काफी अभी भी बहुत पॉपुलर है, भुला देना मुझे। तो इस तरह से एक सबके साथ काम करने का एक अच्छा सिलसिला रहा है। दौर था जब आप कहीं उनके साथ बैठते थे, फाकिर जी के साथ, और दौरान ये भी आते थे जगजीत सिंह जो है, और आप उनको सुनते थे। और एक वो भी दौर है जब जगजीत सिंह ने आपकी जो है गजल को गाया, वो भी बताइए। हाँ हाँ, नहीं वो तो सुदर्शन फाकिर साहब तो ऐसा था कि उनकी गजलें इतनी पॉपुलर थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। बेगम अख्तर ने गाई थी उनकी गजल। हाँ, तो लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। तो मैंने एक कवर स्टोरी की थी उस समय सबरंग में की, हाँ, कि बहुत गुमनाम है एक मशहूर शायर। तो उनकी उनकी गजलें इतनी पॉपुलर, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता था। वो एक छोटे से लॉज में रहते और वो किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन जगजीत सिंह को जगजीत सिंह बनाने में
उनकी गजलों का, उनकी नज़मों का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ये मतलब भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी है, जो गजल जो नज्म जगजीत सिंह की बहुत पॉपुलर है, ये कागज की कश्ती है बारिश का पानी, ये सुदर्शन फाकिर की लिखी हुई गजल है। लेकिन ये गजल, ये नज्म सबने सुनी होगी, लेकिन फाकिर, सुदर्शन फाकिर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये था कि उनसे मिलके, हालांकि मिलने पे भी जल्दी तैयार नहीं होते थे वो, लेकिन शायद मैं पहला था कि उनसे मैं मिल के उनको मैंने तैयार किया बात करने के लिए। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि जगजीत, क्योंकि उनकी गजलों के उस पे गाते थे और उनकी नज़में तो आते थे, और निज़ा फाजली के यहाँ भी आते थे। तो इस तरह से जगजीत से मुलाकात तो थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मन तो मेरा करता था कि इतने बड़े सिंगर है और मेरी भी गजल गा दें यार प्लीज। तो मन तो करता था, लेकिन ये आदत नहीं रही शुरू से कि मैं इस तरह से करूं कि मेरी गजल भी गा दीजिए। तो ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। तो इत्तेफाक की बात ये थी कि एक फंक्शन था, एक काव्य गोष्ठी थी, पोइट्री सिंपोजियम था छोटा सा, उसमें दर्शकों में जगजीत भी थे, और वहां मैंने ये गजल पढ़ी मंच से, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। तो तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद खुद जगजीत आए। ये बड़ा सिंगर और बड़ा आदमी, और कितना सरल आदमी होता है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि खुद सामने से जगजीत आए। उन्होंने कहा कि अभी आपने जो गजल पढ़ी है, इसे मैं गाना चाहता हूँ, तो आप मुझे देंगे ये? तो मैंने कहा कि अब देखिए, अंधा क्या मांगे दुआ के, मैं तो कब से मन ही मन सोच रहा हूँ कि यार आप कभी गा दें जगजीत। तो मैंने कहा अरे क्या, कैसी बात कर रहे हैं। तो वहीं पे उन्होंने फिर वो टिश्यू पेपर उठाया, और टिश्यू पेपर पे गजल लिखी उन्होंने अपने हाथ से। हाँ, और फिर वो ले गए। फिर उसके बाद एक आध साल तक तो कुछ कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक दिन शाम को फोन आया कि आपके गजल की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ मैं, और इसमें ये वर्ड मैंने चेंज कर दिया है, तो ठीक है आपके लिए? तो मैंने कहा अरे कोई बात ही नहीं है, बहुत तो अच्छा कर दिया आपने मेरे शेर को। तो इस तरह से फिर उन्होंने वो गजल गाई। आज हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो टाइम का जो लिमिटेशन है उसके तहत हम शायद आ चुके हैं। प्रतिमा जी कह रही होंगी। तो मेरा ये सिर्फ कहना था कि आखिर में थोड़ा सा एक लाइन में आप कुछ हमें बच्चों को कुछ मैसेज दीजिए, जो आज के बच्चे जो लिखने पढ़ने के वो है, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? बस मैंने यही कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा कि सारे बच्चों को मैं ये सब यही कहूंगा कि अपने अंदर के लेखक को बढ़ावा दें, उसको उसको सामने लाएं, और झिझके नहीं। ऐसा ना सोचें कि मैं क्या लिख रहा हूँ तो अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ना सोचें। और जो उनको समझ में आता है, जो दिल करता है, जो अपनी बात कहने का, वो माध्यम कोई भी हो, चाहे कविता हो, चाहे निबंध हो, चाहे लेख हो, चाहे गीत हो, उसको कहें और कहते रहें। और इसका अपना एक अलग आनंद है, अलग मजा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी sir. Thank you so much to both of you for this interactive session. We are really happy that both of you could take out time and join us today this afternoon. With all of this, we have now before you the final installation of Instead. Urvashi Mohinani is an exquisite Bharatnatyam dancer. She has completed her graduation and master's in performing arts from Banaras Hindu University. Currently, she is pursuing her PhD in dance from Central University of Hyderabad. She has performed in various cities across India. Currently, she is an assistant teacher at Sunbeam Group of Educational Institutions, Varanasi. Over to Urvashi for the Instead. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. A tower of light, of immeasurable height, the cosmic reach of the blessed city drew men of all kinds, craftsmen and tradesmen, scholars and priests, merchants and mendicants, builders and boatsmen. Seekers of every kind flocked to suck at the teat of eternity. Mother Ganga took an odd turn to embrace this sacred space, even ensnared the great Lord Shambhu by its charm.
domes and towers, of stones and metal palaces, and parliaments for pleasure and purpose. Schools and temples for pursuits of here and beyond. All these and more make a city that people build. A confluence of art and culture, this land has been called home by the likes of Buddha, Jain, Tirthankar, Kabir, Tulsidas. Their eternal voice still echoes and resonates with millions around the globe. A city with a tower of light and cremation ghats that burn eternally with only aspiration to dissolve, where death is sacred beyond life. A city built for death and dissolution, where life happens with the knowledge that there is no tomorrow. A tower of light that lights up not only all that there is, but also that which is not, Shiva. Through my dance recital, I pay my oath to the destroyer of evil, Parabrahma, Supreme Being, Lord Shiva. Where there is Shiva, there is his beloved Kashi. I was fortunate to have been born in this land blessed by Devi Annapurna. Where there is a light, there is a belief. Where there is belief, there resides the city of Kashi, the city of light, hope, fire, and ashes. I'm grateful for this opportunity as I stand here to offer my dance recital as a tribute to Ma Ganga, the might and purity of her waters, Kashi, the city of light and ultimate truth, and Lord Mahadeva, who is all that was and all that will be. तारितजं तगदिमिरीतजं तगदिमिरेतजं तगडगदां तदक्कनगदि तगिडदगदारितजं 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 तगदिमिरीतजं तगदिमिरेतजं तगिडदिगिड तोंगिड नंगिड तरिगिड तगिडदिगिड तोंगिड नंगिड तरिगिड तगिडदिगिड तोंगिड नंगिड तरिगिड गंगा गंगा रमणीय जटा कलापो
Namah Shivaya. Namah Shivaya. Sari ga ma ga re sa pa pa ni sa ni pa ga ni sa ri ga re sa sa ni pa ni pa ga re sa ni ta ta ta. Dhin 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 ta di di dhin ta ta. Di di. Ta ta di di tum tum nam nam ta ta di di tum tum nam nam ta 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 di 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 tum 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 nam 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 ta 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 di 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 tum 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 nam 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 tam tari taka chunu dim tari taka chunu tari kita taka tam tari kita taka tam tari kita taka ta ta ta. Dhin 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 ta di di dhin ta ta. Di di. Ta ta di di tum tum nam nam ta ta di di tum tum nam nam ta 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 di 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 tum 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 nam 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 ta 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 di 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 tum 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 nam 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 tam tari taka chunu dim tari taka chunu tari kita taka tam tari kita taka tam tari kita taka tam dim tum tari kita taka tam dim tum tari kita taka tam dim tum chunu kita taka tam dim tum dim kita taka tam dim tari kita taka tam dim dana kita taka tam dim chunu kita taka tam dim dim kita taka tam tari kita taka dim tari kita taka tum tari kita taka nam tari kita taka dana kita taka chunu kita taka dim kita taka tam tari taka chunu dim tari taka chunu tum tari taka chunu tari kita taka tam chunu kita taka dim kita taka tam tari taka chunu dim tari taka chunu tum tari taka chunu tari kita taka tam tam tari taka chunu dim tari taka chunu tum tari taka chunu tari kita taka tam tam tari taka chunu tari kita taka tam dim tari taka chunu tari kita taka tam tum tari taka chunu tari kita taka tam nam tari taka chunu tari kita taka tam tam tari taka chunu dim tari taka chunu tum tari taka chunu nam tari taka chunu nam tari taka chunu tum tari taka chunu dim tari taka chunu tam tari taka chunu tam kita dim kita tum kita nam kita nam kita tum kita dim kita tam kita tam dim tum tari kita taka kita taka tum kita taka tum kita taka tum tam dim tari kita taka kita taka tum kita taka tum kita taka tum tam tari kita taka kita taka tum kita taka tum kita taka tum. Welcome back to everyone from that short break. Now we are in the last session of TEDxYouth at SunbeamBhagwanpur. We'll have 3 more speakers and then a closing ceremony that should start around 5 p.m. IST. Our next speaker is Swami Omadi Ak. We'll do a short intro and then we can check if Swami's audio is working, and then we'll jump right into a plenary session. Adhyatma Murti Omadi Ak started his discourse on Tantra
astrology and Vedic philosophy at the age of 12. He has several NGOs to his name. Ak, or Oma's Cosmos for Ak Revelation, which he founded in 2001 to organize programs and discourses on several issues. He established Ak Jagrat Matadata Manch in 2013 to help make the people of India aware of their democratic rights. Finally, he has also launched the nationwide movement, Bharat Against Abuse, in June 2019 to put an end to the daily verbal rapes through female-oriented abuses as an effort to make the society a better and safer place to reduce cases of sexual molestation. I could not be more honored to have you here among us, Swami, and it is my profound privilege to invite Pratima ma'am, our Assistant Director, to organize a chat, and then we'll jump into the talk. थैंक यू ईशान, थैंक यू सो मच। और ईशान, मैं बता दूं हमारे सभी दर्शकों को कि आपने उमा जी के बारे में जो भी बातें बोली हैं, उमा अपने आध्यात्म, धर्म और आस्था से जुड़े हुए और ऐसे कई अन्य विषयों से जुड़े हुए अपने विचारों की वजह से इन सभी बातों से बहुत ऊपर हैं। उनके विचार और उनके दर्शन की जो गूढ़ता है उसे समझने के लिए उनको और उनकी बातों का बहुत गहन अध्ययन करना जरूरी है। वो उनके सानिध्य में रह के ही शायद संभव है। मैं अनुरोध करूंगी भारती मैम, डायरेक्टर सनबीम ग्रुप और चेयरमैन सनबीम ग्रुप, डॉक्टर दीपक भदौक से, कि उमा के बारे में 2 शब्द कहें और उन्हें हमारे बीच उनका अभिनंदन स्वागत करें। जय हिंद एवरीवन, एंड बहुत बहुत स्वागत उमा जी। और जैसा कि आपके बारे में ईशान और प्रतिमा मैम ने कहा, मैं उसकी साक्षी हूँ, बिकॉज मैंने आपके जब भी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और मुझे मौका मिला है बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने का, हर बार आपने हम लोग को कुछ ना कुछ नया परोसा है। एंड कई बार समटाइम्स आई वंडर कि गालिब से लेके मार्लिन मनरो तक आपकी जो जिस कहते हैं स्पैन्स ऑफ द width of your interest as well as width of your knowledge really amazes us. We are very happy to have you on this platform, and आप इस तरह आते रहिए और अपने जो विचारों से ये जो यूथ है, आज का यूथ है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से दूर हो रहा है, बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहा है। तो जितना वो आपके सानिध्य में रहेंगे, आपसे सुनेंगे बातें, आई एम श्योर उनको भी एक नया रास्ता मिलेगा। और मानवता का, क्योंकि ये समाज में जब तक मानवता नहीं होगी तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ दे विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू उमा जी, एंड ओवर टू चेयरमैन सर। Also, thank you so much. I also take this opportunity of welcoming Umaji. Umaji is an incredible person. If incredible is the right word I can use for him. Amazing, because when he goes on the stage, you suddenly you can see him transform into something different of what he was below the stage. Because we have a very personal relationship with him, and when we meet him outside the light, the focus, he is just another person called Uma. But when he goes up there, something possesses him. इनके अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि ये, जैसा मैम ने ठीक कहा, मधुबाला से लेकर और मतदाता जागरण तक ये पहुंच जाते हैं, और कहाँ से क्या 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 बातें, क्या शब्द आ जाते हैं जो कि मंत्रमुग्ध कर देते हैं. And I am also witness to many of his discourses when he can speak offhand of anything. It's just a 360-degree dive into knowledge. और इनको जितने श्लोक याद हैं या जितने शेर याद हैं, उतने ही शेर याद है जितने श्लोक याद हैं. इसके अतिरिक्त मैं कभी कभी देखता हूँ कि जो काशी का अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें इनका गहरा लगाव है. और उसके साथ साथ जो गंगा जमुनी तहसीब की एक परिकल्पना की जाती है वाराणसी में, काशी में, उससे एक गजब का इनका उसकी नस इन्होंने इनके पास है. ये उसी सेंटेंस में गालिब को कोट करेंगे और उसी सेंटेंस में ये शिव की भक्ति की स्तुति सुनाएंगे.
तो मैं स्वागत करता हूँ उमा जी का और उनको अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे बच्चे भी, हमारे श्रोता भी उनकी तरह एक ऑल प्रिवेसिव सोच के, एक 360 डिग्री सोच के, 3 डायमेंशनल सोच के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम सब कुछ कर सकते हैं। सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने से हम एक ऊंचे स्टेज पे जा सकते हैं। We migrate to a higher level of being. So over to you, Ishan, and over to Umaji. Jai Hind. Swami Oma, we shall not take any more of your time. On with your talk. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में सोचता हूँ। अंग्रेजी समझ में आती है मगर उतनी नहीं आती जिसमें कि मैं उन बातों को कह सकूं जो मेरी आत्मा में या मेरे हृदय में बजते हैं, इसलिए हिंदी में ही अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी संसार की सभी भाषाएं सुंदर हैं और सभी भाषाओं का मैं स्वागत भी करता हूँ और सभी भाषाओं में जो कुछ भी लिखा है सुंदर, वो सब पढ़ने की कोशिश भी मेरी जिंदगी में रहती है मेरी, और आप सबको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब कुछ पढ़ें, सभी भाषाओं में पढ़ें। लेकिन ये भाषाएं केवल वही नहीं होनी चाहिए जो किताबों में छपती हैं और जो सिर्फ इंसानों के दरमियान होती हैं। भाषाएं कुछ और भी होती हैं। कुछ भाषाएं, नदी की भी एक भाषा है, पहाड़ की भी एक भाषा है, हवा की भी एक भाषा है, पंछियों की भी एक भाषा है, सूरज, चांद, सितारे, इनकी भी एक भाषा है। ये सब भाषाएं हैं। दरअसल भगवान को हम अगर पकड़ना चाहते हैं या सत्य को हम पकड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा में भी प्रवेश करना पड़ेगा। वैसे भगवान की भाषा बड़ी अजीब सी है, अगर हम भगवान की भाषा खोजेंगे तो वो मौन की भाषा हो जाती है। मैं आज दरअसल किसी ऐसे विषय पे नहीं बोल रहा हूँ जो जैसे आमतौर पर एक टॉपिक होता है किसी सामाजिक या इस तरह का। मेरा विषय जो है वो बहुत ही सामान्य है, मेरी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, और वो विषय है हमारे अंदर जो एक भावना, मतलब विविधता को चुनने की भावना है, और फिर उसके बाद विविधता के साथ जो हमारे अंदर विभाजन की एक प्रवृत्ति पैदा होती है, उनको लेकर के कुछ बातचीत मुझे करने का मन है। और साथ साथ ये बात करने का मन है कि हम इस संसार को कैसे सुंदर बना सकते हैं। बगैर सुंदर हुए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए शुरुआत यहीं से होगी कि हम कितने सुंदर बन सकते हैं। यदि हम सुंदर नहीं हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी सुंदरता के संदर्भ में 0 ही होगा। तो सबसे पहली बात, मैं भारत में एक उपनिषद के सिद्धांत से अपनी बात शुरू करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक बहुत पुराना वैदिक उद्घोष है। इसमें परमात्मा को पहचानने के 3 लक्षण बताए गए हैं कि अगर तुम परमात्मा, जब मैं बोल रहा हूं तो अगर जो एथिस्ट श्रोता है उनके लिए भी मैं कह दूं कि परमात्मा का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी मंदिर में रखी हुई कोई प्रतिमा या किसी का कोई सिजदे में झुका हुआ जो नमाजी है उसकी आस्था जहां पर है, या किसी चर्च में जो लटका हुआ है क्रूस, मेरा उससे संदर्भ सिर्फ नहीं है, वो भी है लेकिन सिर्फ उससे मेरा नहीं है। मेरा मकसद है परमात्मा मतलब हमारा अल्टीमेट जीवन का जो अल्टीमेट है, इस यूनिवर्स का जो अल्टीमेट सेंटर है, या जो हमारा गंतव्य है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम सब पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हमने उसको परमात्मा माना है। और भारत में उस परमात्मा की व्याख्या करते समय परमात्मा, परमेश्वर या ईश्वर शब्द सब बाद में आते हैं। पहला जो शब्द हमने जो चुना, जो पहला एक वो शब्द मिला के एक वाक्य हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि परमात्मा सत्य है, वो सुंदर है और वो शिव है, यानी वो कल्याणकारी है, दोनों चीजें। तो इसमें हमारे जीवन की सच्चाई छुपी हुई है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। परमात्मा हमसे विलग नहीं है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो ब्राह्मण है अर्थात जो तत्वदर्शी है, वो मुझे यानी परमात्मा को सभी जगह पर एक समान देखता है। क्या कोई ब्राह्मण, क्या कोई विद्वान, कोई महर्षि, या कोई चांडाल अथवा कोई पशु, यहाँ पर कोई भेद नहीं है, यानी परमात्मा का वास हर एक जगह पर है।
तो जब हम परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं तो वस्तुतः हम अपने बारे में चिंतन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की जैसी बात हो रही थी कि अध्यात्म अध्यात्म कुछ और नहीं होता है, ये हमारा अपना ही अध्ययन होता है। यदि हम अपना अध्ययन करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो हम अध्यात्म के निकट पहुंचते हैं। हमारी जो सारी की सारी जो आज तक की जो सिखावन रही है, जिस तरह से हमको समाज ने सिखाया है, मतलब मैं इसे 100 साल 50 साल में नहीं बांटूंगा, ये शायद 2-2.5 हजार साल अब हो जाएगा, या शायद 3,000 साल से लंबा वक्त आ जाएगा। ऐतिहासिक रूप से जब हम्बुराबी कभी कानून लिख रहा होगा पर्शिया में, उस समय से ऐसा चल रहा है कि हमारी सिखावन जो है वो प्राकृतिक कम है और मुस्लिम यानी कि अप्राकृतिक सिंथेटिक ज्यादा है। यानी हम सीखते कम हैं और सिखाए ज्यादा जाते हैं। तो ये जो सीखने और सिखाने के बीच में जो एक भेद होता है, आध्यात्म इसी में कहीं घूमता है। हम सीखने की प्रक्रिया में अगर आ जाते हैं तो हम आध्यात्म की तरफ होते हैं। जब तक हम सिखाए जाने की तरफ हैं, तब तक हम दूसरी दुनिया में खड़े हैं, हम भौतिकता की तरफ होते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज हम सिखाने की कोशिश किसी को करते हैं तो बहुत ही छिछला होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो अनुभव करता हूं या जो मेरी अनुभूति है या जो मैं वस्तुतः मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो डिलीवर करना चाहूंगा, शायद ही वो पूरी तरह से डिलीवर हो, ये संभावना नहीं रह जाएगी। लेकिन उन लोगों तक ये शायद डिलीवर हो जाएगा जो उसी सरफेस पर आकर, उसी सतह पर आकर के मुझे सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये प्रत्येक वक्ता के साथ गुजरा होगा। आप चैट से जब से भी सुन रहे हैं, जितने वक्ताओं को आपने अब तक सुना होगा, अगर आप उनकी ही सरफेस पर, उनकी ही जमीन पर नहीं खड़े हैं, तो फिर उनको समझना या वो जो कहना चाह रहे हैं, जो उनका इंटेंशन है, जो उनका मंतव्य, वहां तक पहुंचना लगभग मुश्किल हो जाता है। फिर वही बातें रह जाती हैं जितनी उन्होंने बोली, जितनी उन्होंने लिखी, जितनी उन्होंने कही। और ये कही हुई बात बहुत छोटी होती है। जैसे कभी कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। तो ये सारी दुनिया में ये समस्या होती है कि पोथी पढ़ पढ़ जन्मुआ। ऐसा समझिएगा कि आप स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको पोथियां नहीं पढ़नी है। पोथी पढ़ना तो बहुत जरूरी है, पोथी बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। कबीर ने भी पोथी पढ़ी थी, भले ही वो पोथी अक्षरों की तरह और हमारी आपकी तरह नहीं आई होगी, लेकिन किसी और माध्यम से, गुरु के माध्यम से आई हो, संगत के माध्यम से आई हो, सत्संग के माध्यम से आई हो, वातावरण के माध्यम से आई हो। लेकिन बिना पोथी पढ़े तो नहीं होता है, पोथी तो पढ़ना है। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ की बात होती है कि सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ करके अगर तुम रह गए, तब तो तुम पंडित नहीं हो सकते हो। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ऐसा कबीर कह रहे हैं कि तुम वो प्रेम के 2.5 अक्षर यदि पढ़ लो तो तुम पंडित हो जाओगे। तो हमारे यहाँ उपनिषद ने उद्घोष किया सत्य का, हमारा जो अंतस है, हमारा जो सत्य है, हमारा जो परमात्मा है, उसको 3 अलग स्वरूपों में खोजने की बात की गई। अच्छा, भारत में किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आप आध्यात्मिक भारत से जाके पूछेंगे, तो कोई भी प्रश्न यदि आप उससे पूछेंगे तो उसका उत्तर हमेशा 3 में मिलेगा। उसका कारण ये होता है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यहाँ पर 3 गुणों के, जिसको सत्य, रज और तम कहते हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। हम या आप पैदा होते हैं, किसी में सत की प्रचुरता होती है, या कोई पूर्णतः सतोगुणी भी हो सकता है। किसी में रज की प्रचुरता होती है, कोई पूरी तरह रजोगुणी हो सकता है, और किसी में तम की प्रचुरता होती है, कोई पूर्णतः तमोगुणी हो सकता है। इसीलिए भारत उत्तर देते समय ये 3 उत्तर खोजता है हर एक प्रश्न के, ताकि तीनों गुणों में से जो भी गुण आपके आसपास हैं, जिस गुण वाले व्यक्ति आप हैं, आप उस माध्यम से उस सत्य तक पहुंच जाएं, उस उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम परमात्मा के विषय में जब कहा गया है, तो दरअसल इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के लोगों के साथ मिलकर के कहा गया है। मैं किसी के गुणों की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा कि किसके पास कौन सा गुण है। आप सब स्वयं अपने अंदर गुण ढूंढ सकते हैं। इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में एक सरल बात समझ लीजिए कि सतोगुणी हमारे यहाँ दैवी गुण कहा जाता है, रजोगुणी मानवीय गुण कहा जाता है, और तमोगुण जो होता है उसको हम दानव या दैत्य आसुरी गुण कहा जाता है। अब इसको और मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। जो अत्यंत भौतिकवादी हैं, जिनके लिए शरीर का सुख और शरीर से जुड़े हुए आनंद, अगर वही सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग तमोगुणी मानते हैं।
भारतीय दर्शन मानता है, जिसके लिए शरीर का सुख और उसकी आत्मा का सुख, चित्त का सुख, वो दोनों कहीं कहीं 50-50 या 40-50 या 30-70 40-60 या 30-70 के रेशियो में कहीं पहुंचता है, उसको रजोगुणी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है, जिसका पूरी तरह से जो रुझान होता है, उसकी जो रुचियां होती हैं वो आत्मिक होती हैं, जो अपने आत्मा के संतोष को सर्वोपरि रखता है, उसको हम सतोगुणी कहते हैं। ये 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार के, अब आप में से कौन क्या है ये आपने खुद सर्च कर लेना है कि आप सतोगुणी हैं, तमोगुणी, रजोगुणी। लेकिन खूबसूरत बात ये है भारतीय दर्शन की, जो सबसे बड़ी सुंदरता है कि भारतीय दर्शन या भारतीय धर्म उदार धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विश्व के दूसरे धर्म, दरअसल सभी धर्म उदार हैं। भारत में उदारता प्रधान हो जाती है। यहाँ पर उदार होना ही धार्मिक होना है। यदि आप उदार नहीं है तो आप कम से कम सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, आप भारतीय धर्म का हिस्सा नहीं है, सही मायनों में आप भारतीय भी नहीं होते हैं। भारतीय होने के लिए आपका उदार चेता होना जरूरी है। आपके अंदर एक उदारता, इस यूनिवर्स को लेकर एक तरह का ग्रेटफुलनेस आपके भीतर हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो 3 गुणों के आधार पर मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन 3 गुणों के लोगों के लिए उपनिषद ने जो उत्तर दिया है कि परमात्मा कौन है, तो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम में वास करता है। अब इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के लोग अपने अपने माध्यम से परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। यहां प्रवेश करने का मतलब समझ के रखिएगा, जैसे तुलसी कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जैसे ही तुम परमात्मा को जानते हो, तुम स्वयं ही परमात्मा हो जाते हो। तो जैसे ही तुम सत्य को जानते हो, तुम सत्य का प्रतीक बन जाते हो। कोई भी सच यदि तुमको पता लग गया है तो तुम उसके प्रमाण हो जाते हो, तुम अपने आप में ही विटनेस होते हो उसके, आप किसी आदमी को नहीं। जैसे अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारे चेहरे पर वो प्रसन्नता लिखी है, तुम विटनेस हो प्रसन्नता की, तुम्हारी मुस्कुराहट बता देगी कि हाँ प्रसन्न हुआ जा सकता है। अगर तुम उदास हो तो तुम्हारी आंखें बता दे, विटनेस है वो बता देगी कि तुम उदास हो। तो दरअसल तुम उदास नहीं होते हो, तुम उस क्षण में पूरी उदासी हो जाते हो। तुम प्रसन्न नहीं होते हो, तुम उस क्षण में पूरी प्रसन्नता हो जाते हो, तुम ही हैप्पीनेस होते हो, तुम ही सारो होते हो। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो दरअसल तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम गुस्से को चले जाते हो, तुम खुद में ही पूरा एंगर होते हो, सिर से पैर तक पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है। तो ठीक यही घटना सत्य के साथ या परमात्मा के साथ भी होती है। जब तुम परमात्मा में प्रवेश करते हो, परमात्मा को पहचानते हो, उसका स्पर्श करते हो, तुम स्वयं परमात्मा होते हो। तुम्हें देख करके पहचाना जा सकता है कि ईश्वर कैसा हो सकता है, परमात्मा कैसा हो सकता है। इसलिए हमने तमाम लोगों को ईश्वर कहा है भारत में। कई बार बहुत लोगों को असमंजस होता है, ये क्या तरीका होता है कि भाई आप किसी को भी, आप तैलम स्वामी को भी परमात्मा कह देते हैं, आप परमहंस को परमात्मा कह देते हैं, और राम और कृष्ण को भी परमात्मा आप कह देते हैं, विष्णु को भी परमात्मा कह रहे हैं। कारण ये है कि जहां से भी सुगंध आती है वहीं पर तो हम कहते हैं कि फूल है, वहीं पर फूल होता है। हो सकता है कि वह एक इत्र के फॉर्म में हो, एक सेंट के फॉर्म में हो, लेकिन फूल तो वहां पर है। तो इसलिए तुम्हारा सत्य को जानना या परमात्मा को जानना इसलिए आवश्यक है किसी मायने में, ताकि तुम परमात्मिक हो सको, तुम्हारे अंदर वो सौंदर्य उतर सके कि प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं वो कहीं कोई सुकून पा सके, क्योंकि आखिरकार परमात्मा हमारे और तुम्हारे लिए सुकून का माध्यम होता है। तो 3 अलग अलग गुण हैं और 3 गुणों को परमात्मा तक जाने के 3 अलग अलग मार्ग हैं, अथवा इन मार्गों से वो परमात्मिक हो सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं, ईश्वरीय गुण उनमें आ सकते हैं। तो सतोगुणी के लिए कहा गया है परमात्मा कौन है, वो सत्य है, सत्यम। जो सतोगुणी है वह सत्य के माध्यम से परमात्मा तक प्रवेश करता है, क्योंकि जिसका चिंतन, जिसका लोभ, जिसकी पिपासा आत्मा है, जो मुमुक्षु है, जिसको मुक्ति चाहिए ही, वो किसी अन्य माध्यम से परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। उसको मंदिर में घंटी बजा करके शायद आनंद नहीं मिलेगा, उसको दान पुण्य करके कोई आराम नहीं मिलेगा, उसको तो सत्य के माध्यम से ही पहुंचना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध जैसा व्यक्ति जब निकलता है अपने घर से, तो सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, या सुकून को पाने के लिए, विश्रांति को पाने के लिए सत्य का मार्ग चुनता है। तो यदि तुम एक दार्शनिक वृत्ति के व्यक्ति हो, यदि तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, यदि ब्रह्म जिज्ञासा है, तो सत्य ही एक माध्यम है जिससे तुम ईश्वर तक पहुंचते हो। यानी अधिकाधिक सत्य बोल करके और अधिक से अधिक सत्य का
स्मरण करके, यानी सत्य को ही जानने की कोशिश करो और सत्य ही बोलने की कोशिश करो। जितना तुम सत्य बोलोगे, जितना सत्य, सत्य चाहे कितना नग्न हो, कितना खराब लगे, लेकिन यदि तुम में सत्य बोलने की हिम्मत आती चली जाएगी तो तुम उस माध्यम से परमात्मा के पास जाओगे जहां परमात्मा का, ईश्वर का, या सत्य जिसको हम कहते हैं अल्टीमेटली, उसका सत्यम रूप दिखाई देगा, यानी वो एक ट्रुथ की तरह तुम्हारे सामने अपीयर होगा। मगर ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो पूर्णतः सतोगुणी है, यानी जिनके लिए संसार बहुत गौण है, जो पृथ्वी पर बस अपना पैर रखते हैं, सिर जिनका आकाश की तरफ उठा रहता है, ये उनके लिए है, ये सूरजमुखी के लिए है, ये कमल के लिए है। ये सबके लिए माध्यम नहीं, लेकिन आप में से जो भी अपने को सतोगुणी समझता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो सत्य के ऊपर अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा अवलंबित करे। जितना उसका अवलंबन सत्य पर होगा, उतनी तेजी से वो महान सत्य की तरफ बढ़ेगा, उतनी तेजी से वो परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। दूसरे जो होते हैं रजोगुणी, जो लोग होते हैं, उन रजोगुणी लोगों के लिए एक दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया, शिवम। हम में से ज्यादातर लोग रजोगुणी हैं, जिनको संसार भी पसंद है और ईश्वर भी पसंद है, उनको खुदा भी है और विसाले सनम भी चाहिए, दोनों ही चीजें उन्हें चाहिए। तो इस माध्यम में जहां पर कि हम एक तरह से ग्रे शेडेड होते हैं, और हम में से सभी ग्रे शेडेड हैं। सतोगुणी मतलब जो पूरी तरह से सफेद है, तमोगुणी जो पूरी तरह से काला है, और हम जो मनुष्य आमतौर पर जिसको मानवीय गुण कहा गया है, उसे ग्रे शेडेड कहा गया है, जो थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा सफेद है। वो शकील बदायूनी के लफ्जों में कि ना मैं शैतान हूं, ना मैं भगवान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं। तो ये जो इंसान जो है, उसके लिए क्या बताया है, उसके लिए बड़ी सुंदर सी चीज उसने कही है। उसने कहा शिवम। इंसान को परमात्मा के दर्शन तब होंगे, उसको शिव के रूप में परमात्मा का दर्शन होता है। ये शिव वो भी शिव है जो शिव की व्याख्या अभी हम नहीं करते हैं, जिसको हम लोग शास्त्रों में और पुराणों में और मंदिरों में देखते हैं, लेकिन शिव की संस्कृत में जो शाब्दिक अर्थ है उस पर हम टिक जाते हैं। तो शिव का अर्थ होता है बेनिफिट, जो बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, जो उपकृत करता है, जो कल्याण करता है, उसको हम शिव कहते हैं। तो दरअसल मनुष्य के लिए जो मार्ग चुना है भारतीय दर्शन ने, वो कल्याण का मार्ग चुना है। यदि तुम रजोगुणी हो, यदि तुम में लोभ भी है और तुम में प्रेम भी है, त्याग भी है, तो तुमको शिव के मार्ग पर आना पड़ेगा। अर्थात जो तुम लोभ द्वारा संचित करो, उसको प्रेम द्वारा बांट दो, उसको बिखरा दो। जो तुम बटोरो, बटोरने को मना नहीं कर रहा है, कह रहा है बटोरो, लेकिन बटोरने के बाद उसे बांट भी दो। बटोर के रख लिया तो सब बेकार हो गया। बटोरना है, बटोर करके बांटना है, ये कल्याण होता है। जैसे कि बादल से उतरा हुआ जो पानी है, उसको जब पहाड़ सहेजता है तो नदियों के द्वारा भेज देता है वापस, और जब वो नदियों के द्वारा वापस भेजता है तो बीच में हजारों कुएं भरते हैं, ताल तलैया भरती है, खेत भरता है, हम खाते हैं, हम नहाते हैं, हमारी भैंसें भी नहाती हैं, सबके लिए वो भेजता है। उसको अंतर नहीं पड़ रहा है कि गुरुजी नहा रहे हैं कि भैंस नहा रही है, नदी चल रही है तो सबके लिए बह रही है। ये उदारता, ये कल्याण भाव पूरी प्रकृति में हमको मिलता है। फूल में सुगंध आई नहीं कि कली खुल जाती है, बिखर जाती है उसकी सारी सुगंध। ऐसा कोई फूल प्रकृति में नहीं हुआ जिसमें सुगंध भर जाए और फिर वो बंद रह जाए। मगर हम ऐसे होते हैं, हमारे पास अक्सर जितना सुगंध बढ़ता है उतना हम अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेते हैं। वो खलील जिब्रान ने एक बार कहा था कि तुम एक सुंदर गीत को सुनने के बाद ताली कैसे बजा सकते हो अगर तुम्हारे दोनों हाथों में सिक्के हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि मस्त होकर के किसी गीत पर ताली बजाना हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या दो मुट्ठी में सिक्के बांध करके मुंह लटकाए हुए बैठे रहना ज्यादा जरूरी है। तो मनुष्य के लिए, यानी रजोगुणी व्यक्तियों के लिए कल्याण के मार्ग से परमात्मा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में जिन लोगों ने कल्याणकारी काम किया है, हम लोगों ने उसको भी परमात्मा के रूप में माना है, हमने उसको भी कहीं ना कहीं भगवत्ता दी दी है। हमने तमाम महान महापुरुष जिनको हम कहते हैं, उनको हम ईश्वर की तरह पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने रजोगुणी होने के बावजूद, यानी संसार से या समाज से प्राप्त करने के बावजूद भी संसार और समाज को उतनी ही मात्रा में लौटा दिया। तो ये कारण जो था, उसकी वजह से उसमें भी परमात्मा का दर्शन हमको हुआ। एक दूसरा गुण है, यानी कल्याण के माध्यम से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है तमोगुणी। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार तेजी से तमोगुण की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी के साथ। आज हम अधिकाधिक
तमोगुणी होते चले जा रहे हैं। हम में प्रमाद, हम में आलस्य, हम में खुदगर्जी, हम में हमारा ही महत्वपूर्ण है, ये हम में बढ़ता चला जा रहा है। भेद तो प्रकृति का नियम है, लेकिन विभेद मनुष्य के अंदर होता है। भेद तो प्रकृति भी करती है, जंगल के सभी जानवर भेद करते हैं, वनस्पतियां भेद करती हैं, नदी और पहाड़ में भी कहीं कोई भेद है, पत्थर पत्थर में भी भेद है। लेकिन मनुष्य में एक और गुण होता है, वो भेद के भीतर विभेद भी करता है। तो भेद तो सुंदर है कि मैं हूं तुम हो, ये भेद तो अच्छी बात है। कोई गोरा है कोई काला है, ये बात भी अच्छी बात है। कोई बहुत सुंदर है कोई नहीं उतना सुंदर, ये भेद भी हमको समझ में आएगा। इससे झूठ बोलना होगा कि हम कह नहीं सारी दुनिया हमें एक बराबर ही सुंदर दिखाई, ये भी झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। गुलशन में आप जाओगे तो सारे फूल एक बार बराबर सुंदर सुगंधित और खिले हुए नहीं मिलेंगे, बहुत सी छुई में मिलेंगी, बहुत कैक्टस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भेद से कोई इनकार नहीं है, पर विभेद से इनकार है। भारतीय दर्शन या धर्म विभेद से इनकार करता है, विभेद नहीं। विभेद का मतलब होता है पूर्वाग्रह द्वारा भेद करना। अपने पूर्वाग्रहों की अभिव्यक्ति करने को हम विभेद कहते हैं। यानी कि मैंने ये मान लिया है कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों की है या लंबे बाल वालों की है, तो छोटे बाल वाले नहीं रह सकते हैं, छोटे बाल वालों को मार दो या उनको गंदा समझ लो। उमा जी क्षमा होता है चाहती विभेद। हूँ, उमा जी क्षमा चाहती हूँ, समय के अभाव के कारण हमारे पास 1 से 1.5 मिनट और है। जी जी बस ये आखिरी वर्ड है। जी जी। तो हमारा विभेद उसमें होता है। तो अंतिम चीज ये है कि चूंकि ये विभेदकारी समाज पूरी दुनिया में आज बढ़ता चला जा रहा है, यानी तमोगुण का हमारे अंदर तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं तमोगुण की तरफ। ऐसे में तमोगुणी वृत्तियों के लिए हमने सुंदरता को रखा है, यानी सौंदर्य। यदि हम सुंदरता अपने अंदर पैदा कर सकें, सुंदरता मतलब हमारी भाषा में सुंदरता, हमारे स्वरूप में सुंदरता, हमारे हृदय में सुंदरता, हमारे व्यवहार में सुंदरता, हमारे कर्म में सुंदरता और हमारी दृष्टि में सुंदरता, यदि हम अपनी दृष्टि में सौंदर्य पैदा कर सकेंगे तो निसंदेह हमको सुंदर परमात्मा का दर्शन होगा। और चूंकि कलयुग को तम का युग कहा जाता है, ऐसे में शायद हम सब के लिए ये सबसे अनिवार्य है कि हम सौंदर्य को जितना हो सके अपने आसपास प्रोत्साहित करें। लेकिन ये सौंदर्य केवल शरीर का नहीं होना चाहिए, ये सौंदर्य मन का भी होना चाहिए, ये सौंदर्य विचार का भी होना चाहिए, व्यवहार का भी होना चाहिए, और सबसे बढ़कर के ये चरित्र का होना चाहिए। तो इस तरह हम सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा को अपने जीवन में उतार करके उस अल्टीमेट ट्रुथ तक जा सकते हैं जो न केवल हमारे लिए हितकारी है बल्कि इस विश्व के लिए भी हितकारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातें आपकी सुनने के लिए समय चाहिए, दिन चाहिए, और इच्छा तो अनंत है कि हम सुनते रहे, लेकिन समय अभाव के कारण हम आज की बातचीत यहीं पर खत्म करने को मजबूर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ईशान, if we can go to the next speaker. Thank you very much, Swami Oma, for that wonderful talk. Our next speaker is Pankuri Dayal. The COVID-19 pandemic disproportionately impacted migrants and minorities, several of whom lost their jobs and were trapped in a foreign land without a livelihood. She grew up in Hong Kong, where she has been working with underprivileged communities at a grassroots level for 5 years now. She's the founder of Modern Migrants, which upskills migrants by organizing online workshops, which are led by industry experts and world-class professors. All of this is impressive enough, ladies and gentlemen, but it becomes simply extraordinary when you consider that Pankuri is just 18 years old and a grade 12 student at Milton Academy in Boston. At an age when students are busy preparing for their college applications, Pankuri is helping thousands. Over to you, Pankuri. Take it away. Albert Einstein, Arnold Schwarzenegger, and Yao Ming. Successful immigrants who changed the course of history, right? But on the other hand, we have poverty, hunger, and exclusion. Unsuccessful immigrants whose lives stand in a limbo. For every immigrant that makes it,
Many more find their lives destroyed. With over 60 million migrants on the move today, migration and minority inclusion are among the biggest issues facing our world in this century. Only 5% of migrants are able to use their education and skill set from back home to find proper employment. Many get lost working as cooks, drivers, gardeners, construction workers. But given a proper skill set and inclusion, migrants can be an asset to any society. They can create billions of dollars for their societies, becoming economic and social powerhouses. Now, these are all great theoretical lessons, things I debated only in the classroom. But all of that changed last year when I started Modern Migrants, an aid organization to digitally upskill migrant and minority professionals. We've had significant success with many graduates from our programs, mentors around the world, and our voice being heard as far as the United Nations. But more importantly, it has helped me reflect on my journey, what I set out to do, and the lessons that I learned along the way. You see, when I was younger, I changed my chosen career path practically every single day. When I was 12, I wanted to be a psychologist. I quickly realized that I didn't even know how to spell that word. When I was 9, I wanted to be an architect. Well, I took a couple math classes and realized that I don't like geometry all that much. And of course, when I was 6, I wanted to be a famous singer. I think you'd all prefer if I didn't demonstrate why I decided against that. But what I certainly did not think was that I would be standing here in front of all of you today as an advocate for migrants and minorities. So that brings me to lesson number 1. Everything is a learning opportunity. You see, I go to a boarding school in the US called Milton Academy. So in March of 2020, when I was sent back home because of COVID, my life changed completely, and I was dismayed, to say the least. Back home, the thought of sharing a room with my irritating brother once again was really not very appealing to me. But as all of my classes started to be on Zoom, I quickly realized that the traditional industries we think of today will never be the same, and in fact, have been changing for a while. Why go to the grocery store to pick up your groceries when you could get them delivered to your home with just the click of a button? When was the last time you saw a major company advertising in a newspaper and not on your Facebook page? How many people do you know currently taking an online class or two, or maybe even attending online college? Everything was going digital, and COVID was only accelerating that. With people getting used to the ease and efficiency of the new normal, I knew that even once COVID was over, entire industries would never again be the same. But coming back to Hong Kong did something else too. It brought back the memories of my childhood. I remember going to the Gurdwara and the Hindu temple every weekend, playing with migrant and minority kids who looked just like me. But when our time together was over, they went back home to far fewer opportunities and far fewer privileges than me. Hong Kong prides itself on being a meritocracy, but even there, growing up as a minority kid with first-generation migrant parents was not easy. Slowly, these two concepts melded together in my head, and Modern Migrants was born. But of course, I couldn't do this alone. I needed advice, and I needed help. So this brings me to lesson number 2. It takes a village. I decided to enlist experienced migrant mentors who were skilled in their field and willing to help us not only with our curriculum, but also to guide our program participants and to help them take flight. We considered which industries were changing the most and decided to retrain our young professionals in 6 key areas: digital marketing, art, education, healthcare, and media. We began by hosting Zoom workshops, each led by a mentor.
We sent hundreds of emails to universities asking for help and received amazing free courses for our participants. We lobbied with employers of the future such as Google, Amazon, and Facebook for internships for our participants. I'm thrilled to say that many students have graduated from our program today, and many of them have even started their own businesses. However, after a few good months, I felt the buzz start to fade. Our program participants were feeling great about themselves, but still not getting any jobs. That's when I realized that there was a deeper issue. I decided to petition the Hong Kong government and ask for policy changes. However, my initial efforts, well, they failed miserably. Busy dealing with COVID, the Hong Kong government refused to take my 17-year-old self seriously. And this setback taught me lesson number 3. Be creative and be persistent. Instead of lobbying directly with the government, I instead organized a walk for migrants. I began cold calling newspapers and telling them about our efforts. To this day, I'm amazed that so many of them took up writing about the cause. And finally, I got a call from the Hong Kong Equal Opportunities Commission. They wanted me to come in and help them draft policy on migrant and minority inclusion in the workforce. Today, I'm honored to call them my friends and even my social media partners. I was amazed to see a full house, waiting to hear my perspective and to dive right in. And from there on, there was no going back for any of us. Which brings me to lesson number 4, go big or go home. I realized that helping migrants and minorities in Hong Kong was wonderful, but there were millions of more migrants who needed our help around the world. Whether in Greece or Mexico or now Afghanistan, migrants around the world are marginalized and excluded. I needed a global network. Last summer, I was invited to speak at the United Nations Youth Assembly. It was amazing to brainstorm my ideas with over 300 delegates from 55 countries. Through this network, I'm proud to say that I've been able to expand the Modern Migrants program far beyond Hong Kong. And this brings me to my final lesson. Find yourself, and you will have nothing to be afraid of. You see, in migrants, I saw my own reflection. In their families, I saw my family struggle. And well, as for my community, today we are well on our way to becoming productive and empowered parts of our society. Our budding journalists know how to self-publish on blogs or start their own writing sites if need be. Our participants going into the creative arts know how to create company logos digitally or how to edit videos for products. Our future educators know how to tailor curriculums for online classes and how to interact with students using apps such as Schoology and Google Classroom. And finally, I love to brag about my own participants instead of them, so I'll share a few examples. Former cook Gopal created a food delivery portal. Painter Abisha set up a digital art gallery where she could sell her own prints and artworks. And my very first participant, Sumitra, is now the owner of a thriving online coaching center. Sometimes, when I look back at my journey, I'm amazed and frankly shocked at how much I've changed as a person. I used to be so shy and quiet, content in my own world of books in middle school. How did I get the courage to take up a cause so explosive, to fight a battle so public? To be honest with you, at the start of my modern migrants journey, I was still terrified. But seeing my participants' successes and knowing that I've been able to help them and to help their families fills me with hope and inspires me to continue fighting this social battle every single day that I wake up. Thank you. Thank you so much, Pankuri, for that lovely and well-presented talk.
You're an unending source of inspiration for all of us. Our final speaker for the day, ladies and gentlemen, is Professor Robin Hanson, who is joining us all the way from the US. Thank you for bearing with us, Professor. We got delayed by a few minutes. Thank you very much. Let's get your audio tested. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you well. All right, audio is tested. Yeah, Can I share, yeah, can I share my screen then? Yeah, sure. I will get this up here to that. Professor, I think you muted yourself. Professor, I'll read out a short intro of you, and then we can launch right into your talk. Professor Robin Hanson is Associate Professor of Economics at George Mason University in Fairfax County in Virginia, and a Research Associate at the Future of Humanity Institute at Oxford University. He's written The Age of M and The Elephant in the Brain with Kenneth Simpler in 2018. Finally, Professor Hanson is a prolific blogger and writes at overcomingbias.com. Professor Hanson's thesis is that our criminal justice system is desperately broken, and he has a radical fix for it. Professor Hanson, the next few minutes are yours. Great. I'm going to use slides here, and the slides have a lot of words on them. So don't be bothered by that, because you don't actually have to pay attention to many of the words. But remember my face, because you're not going to see it, because you're going to see the words. All right, so we're going to talk about law. And the key idea is that law is an industry, just like lots of other industries. And we have some industries that the governments run and do a lot more of, say transportation, education, medicine, military. Law is one of those industries that government tends to do a lot in, but government doesn't have to do all of it, just like with these other industries. Government doesn't have to do all of them. And we want to talk about maybe moving some of the things that government does out of the government sector into the private sector with respect to criminal law. So just, in history, lots of organizations other than governments have provided law, and there's lots of different kinds of law, many of which are not provided by the government today. Say lawyers are often provided privately, investigations are provided privately, and we can do some other things. All right. Now, I want you to think about this analogy. Think of the old Soviet Union or China in ancient times when the government ran the food industry. Government running the food industry means the state decides what's produced and decides how you process that and who gets what. And government running the food industry is not very innovative. It's not very efficient. It doesn't adapt very well to circumstances. Basically, everybody gets the standard government food package, whether that's what you want or not, or whether that what grows well in your region or not, et cetera. And we can make the analogy with the crime industry, the crime law industry. Basically, government mostly just runs crime, and they do it centrally, and therefore they also don't have good incentives to be efficient, to be adapted to circumstances, to innovate. And so the main thing we want to do here is try to find a way to take many of the things government's doing in criminal law and put them in a private hands so they could be more innovative and more efficient and more adapted to individual circumstances. So that's the goal here. All right, so just to review, the most ancient law that we know of basically has a very simple system. There's a judge and there's two parties. There's somebody accusing, somebody being accused, and they're treated equally by the courts. They each have to go collect their evidence. They each make their arguments. They're held to the same standards. And if there's a judgment, the judge says you have to pay them money usually, although there's other judgments too. And this system, worked pretty well for many thousands of years. In the last few centuries, especially at least in Europe, there's more ancient examples, we introduced criminal law. So what's criminal law is where the government more decides the law, say with legislatures and agencies, where it tends to be more about intentional harm. And now there's an asymmetry. There's the state prosecutor and the accused criminal, but the state prosecutor has a lot more money and powers, and the criminal has to cover their own expenses, et cetera, and they're unequal. And sometimes we do some things to maybe reverse the balance by, say, holding the state to a higher standard. Why do we invent criminal law at all in the first place? The idea is that ordinary law works fine for when, say, if your neighbor's tree falls in your yard or something, you have connection to them, you know where to find them, you can find the evidence, they're connected so they don't want to run away. But think about bandits.
bandits are out there hiding away from people. They're hard to catch. They're hard to find. Even if you do find them, it's hard to get their assets. And criminal law was basically designed for things like bandits, and where ordinary law was harder. Now, ordinary law did try to deal with those problems by cranking up punishments like death penalties, selling people into slavery, holding their family clans liable, or dealing with family clan reputations. But we today, in the last few centuries, have been reluctant to use many of these things, which is why we've needed to move forward with criminal law. But some of the big problems widely known in criminal law are the state is very powerful and corruptible. So many actors through the whole system can basically excuse somebody from a crime by basically saying, we're not going to pursue that. The government police can have a big blue wall of silence wherein they each excuse each other from violating laws about how you're supposed to enforce crime. And especially in the United States, plea bargaining threats give enormous power to prosecutors to basically say, we're just going to throw the book at you and do terrible things to you unless you give in and agree with us. We know these are problems, so we have some restrictions, but they tend to be weak and bureaucratic. And the restrictions are enforced by the same people who don't actually have to follow the rules because of the blue wall of silence. So we have this inefficient state-run system. So one of the key things I'm going to propose instead is vouching. So in an ancient society, a stranger came to town, you would be reluctant to interact with this stranger because if they hurt you, they could just run out of town and be not held responsible. So you might stay away from them unless somebody in town says they would vouch for them. So if a stranger comes to town, they need to get somebody in town to vouch for them, and then people will be more safe in interacting with them. So we want to do something like that. And vouching is very common even in the modern world, in computer security with bonded contractors, when you go onto a military base, when you have debt cosigners. And today, in many places, including the United States, you have to get automobile liability insurance to cover the fact if you're on the road that you might hit somebody. And we want to just generalize that to have people required to get liability insurance for all legal liability, not just automobile accidents. That's the key idea here. And we're also going to throw in the idea of bounty hunters, which also have an ancient history and modern analogs. And in fact, in the United States today, places that use private bounty hunters for bail bonds actually more effective and efficient and cost effective than the places that have the state do that. All right, so I want to make clear the scope of my proposal. So it's going to be a big proposal. You're going to think it's crazy, but at least we're going to get thinking about the big issues here. So first of all, we don't want to change everything at once. I need to draw a circle around what I'm changing and what I'm not changing so that you can be clear, but I want to make it a big circle so that you think there's a lot at stake here and we could do a lot. So first of all, what's outside the circle, what I'm not going to change are the laws. What is a crime and what isn't a crime? Second, the courts. How do we decide that any particular person accused of a crime is guilty or not? I'm not going to change that. And third, I'm not going to change priorities, i.e. for each crime, we have a priority on how eager we are going to be, make sure we catch it if it happens, and how much we're going to discourage it so that it doesn't happen. So those are the things I'm not going to change. But within the circle, what I'm going to change are how we decide how much and what type of punishments to give, say fines, torture, prison, exile, etc. Limitations on freedom of movement, freedom of action, privacy rights, the strategy and priorities of investigation. Those are the parts I'm going to change, which is a lot, I think you'll agree. Okay, so now we've got my proposal right on the table. So first of all, the key proposal is everybody has to get liability insurance, a voucher, i.e., to cover all legal liability. That is, anytime you do something and you're convicted of a crime, somebody stands behind you ready to pay on your behalf. And they have to be stuck with you, so it's hard for you to get them to get rid of you. So you always have to have a voucher, so it's a long-term relationship. And once we have a voucher for you for all legal liabilities, now we can basically make all but one crime be punished by fines. That is, there's a dollar amount, and if you're guilty of that, the voucher has to pay that dollar amount fine, except for the one crime of not having a voucher. So we'll have to enforce that another way. And the key idea is your voucher, of course, doesn't want to have to pay these fines. So you and your voucher will write a contract, and we will enforce that contract. And that contract can specify what happens to you when you're found guilty. So if you're found guilty of robbery, the voucher may have to pay a big fine, but then you may be punished in whatever way was specified by your contract with your voucher, which could include exile or could include jail or whatever it is you and they are willing to arrange. And you and your voucher can agree on your privacy rights and on your freedom of movement. Those are all part of your contract with your voucher. And in addition, you and your voucher can agree on co-liability. That is,
which of you, you might have a group of friends, a group of associates, and all of you agree together with the same voucher. If any of us is found guilty, all of us can be punished. And so that we will look out for each other and make sure each of us don't do something here. And in addition, all fines are going to be punished by, everybody has to have a voucher. All crimes are punished by fines, and we're going to use bounty hunters to catch violators. So for every crime, there's a bounty, and the first person to go to court and convince the court that a particular person's guilty, that person's voucher has to pay the fine, but then this person gets the bounty. And that will break the blue wall of silence, because bounty hunters are not willing to not prosecute another bounty hunter just because they're another bounty hunter. Just like today, investigators will investigate other investigators, and lawyers will sue other lawyers in the private sectors. The bounty hunters will not protect their bounty hunters. So the advantage of this system, we're going to cut corruption by breaking the blue wall of silence. We're going to have, an open system. The laws in the books will actually be enforced. We'll no longer have to focus on suing only deep pockets. So today, if something goes wrong, you tend to look for whoever has a lot of money to sue, because the other people don't have money to sue. Why bother? But now everybody's got money to sue because everybody has a voucher. So you will sue whoever's actually responsible. We're going to, again, swap out the centralized government-run system for a competitive industry. So vouchers and clients will compete and search for ways to be cost-effective. What's the best way to discourage you from committing crimes? You and they will both want to figure that out in order to lower your premiums and to make you have a better deal. And you will search in the space of, again, premiums, punishments, ways to monitor, limits on freedom, privacy, co-liability. All of those, we're going to empower this industry to go figure that out. And we're going to use this to replace our official system of jail and parole and probation and restraining orders, because the vouchers will do that instead. And in some sense, instead of having a centralized decision where we all decide who has which constitutional rights, we say, you just buy your constitutional rights. You pick the rights you want and you buy them, and the rest of us will just agree with that. So, sorry. Somehow I jumped a bunch of slides. So, by now, I'm sure you've thought of a bunch of problems. You're worried about this. You're saying, oh, it sounds okay, but what about this? So first of all, aren't I going to let rich people do as many crimes as they want? No, because you can make the fines depend on how rich people are. So if there's a kind of crime like murder that you don't want rich people to feel free to do, then you just make sure the crimes increase with their wealth, so that a very large fine would be due, and they wouldn't want to do that. Might people pick their vouchers badly? They might. We might want to regulate their choices. We might want to make sure they understand what they're doing. Will they collude? We can have antitrust laws against the vouchers if they might collude. How do we make sure everybody is vouched? We want to make sure something like license plates on cars, that we have RFID tags that just can be easily checked to make sure everybody has a voucher. We want courts to be skeptical about claims, of course, just like they always are. Hunters might try to make up evidence, but we don't have to believe them. This, of course, doesn't change whether the criminal laws are good or not. So if you have a system of bad laws, the system will more effectively enforce it, more efficiently enforce it, but that doesn't mean that's good necessarily. So, but this is a modular innovation. Basically, this is a proposal for having more effective enforcement of criminal law, and separately, you'd want to think about having better criminal law. Many people today like the idea that the people enforcing the law, like the police or prosecutors, have discretion, because they tend to believe that they will be favored by this discretion. Of course, on average, they can't all be favored, but they tend to think so anyway. Hopefully, with some trials of the system, they would start to see that, in fact, they're not so favored, that they're, they aren't disfavored, even if the enforcement is fair and even, which it would be more in this system. Here, again, bounty hunters will go after you if they've got evidence to convict you, and your favorite, asking for favors won't get you much of anywhere, because their money's on the line. And if you can pay one bounty hunter off to not enforce something, then there'll be 1,000 others who'd be willing to come in and do it instead. There is going to be the very basic issue that some people will be high risk and be able to not earn that much money, and so their premiums may be very high. And so what will happen to somebody who needs a voucher? The vouchers are demanding a high premium, and this person doesn't have much money. The obvious thing that happens is they negotiate the terms of the contract to lower the premium. So imagine, say, in the United States, you have a high criminal record and you're at risk of committing more crimes, then they might agree to let you work on a logging farm in northern Minnesota
where you stay on the logging camp all week and only leave it on a Saturday night, say on an escorted trip into town, and they get to read your emails and they've got cameras everywhere. Well, under this situation, they can probably offer you a low premium because their risks have been greatly reduced. And so basically people with high risk will have to limit their freedoms more in order to assure people that they can be trusted, which is what we basically do today under parole and probation. That's the key idea of those things, is to limit people's freedom because you're not entirely sure you trust them anymore. And so those are some of the main objections that you might have. And I'm sure that you might think of more, but in conclusion, let me just summarize. Today, we have criminal law, which was designed to deal with some of the problems like bandits that ancient law couldn't deal with as well when we got rid of things like death penalties, selling people into slavery, family clan liability, things like that. But criminal law gives the government a lot of power and discretion, which is often used corruptly. They have the blue wall of silence to protect themselves from breaking their own laws that they're supposed to be enforcing. And how can we deal with that better? What we want is a more competitive system where some private sector actors are profit-oriented and tasked with coming up with better ways to do things. And if they don't, they lose their jobs and they lose their businesses and their investments. And we want to do that for criminal law, just like we like food industry to be competitive so that we can have innovation and adaptation and variety. We want that for criminal world too. And so what we're going to do with that is by taking the tasks, some of the tasks that are now done centrally, out of the government hands. So we're going to privatize the choice of prison, the choice of punishment in general, how much and what type. We're going to privatize co-liability, who's liable with who, privatize privacy rights and curfews and freedoms. All those are now going to be private choices that you make with your voucher. And then we're also going to make sure the laws on the books do actually get enforced by having bounty hunters catch them and authorizing many people to go look for evidence and prosecute if they find it. And together, the idea here is that we could then take these difficult choices out of our collective. So basically, in the United States, at least, most constitutional law issues are regarding criminal law enforcement. That's how difficult it is. That's how awkward it is, that we're just all collectively trying to decide what sort of punishments are okay, what sort of privacy rights are okay, what sort of treatment is okay with this big awkward bureaucratic system, which supposedly guarantees your rights, but it doesn't really actually. So here's a system that might actually give you the rights it says it has and be cost effective in actually discouraging crime. And that's my talk. Thank you very much, Professor Hansen. We see that a few questions have come up, but unfortunately we're running a little behind schedule, as I told you. Professor Hansen is obviously well known for proposing some of the most brilliant ideas that I've ever heard. Prediction markets, the great filter. And we understand, Professor, that you have a blog. So if you'd like to plug that in. Overcomingbias.com if you want to come to my blog. And I have 2 books, as you mentioned, The Age of M, Work, Love, and Life, and Robots Rule the Earth, and The Elephant in the Brain, Hidden Motives in Everyday Life. Thank you very much, Professor, for your time. And we hope to have a much longer talk with you sometime virtually or in person, perhaps, at SunbeamBhagwanpur. Thank you very much for joining us. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of TEDxYouth SunbeamBhagwanpur. These were 28 speakers from 5 different countries around the world. We have been viewed more than 20,000 times until now. Thank you so much for your love and support. Your feedback was taken into consideration. Thank you so much for joining us over these 2 days. Now, for the closing ceremony, I would like to thank, first of all, the chairman, Dr. Deepak Madhok, and the director, Mrs. Bharti Madhok, for their patronage and guidance throughout this event. I would also take this opportunity to thank the senior management, not just at Sunbeam Bhagwanpur, but across the Sunbeam Group of educational institutions. This event would have been simply impossible without them. Finally, we have the organizing committee, the youth body which led this event. You saw only Aditya and I, who were the MCs, speak here. However, there's a whole host of people who are involved with this. I was the licensee and the head of the organizing committee, and also the co-MC. Aditya was the head of the operations, and also that was Aditya unmuted.
He was the head. He was the head of operations and the co-MC. Ishita was the marketing and communications director. Ishita, if you could please come up. Thank you very much. And Ishita, if you would stay here. Ishanvi was the head of event logistics. Ishanvi is unfortunately still logistics thing in our. Oh, I see that she has joined. Ishanvi, if you'd please join us behind. Sanskriti was the head of resource facilitation. Sanskriti, if you would join us. Ishanvi, if you would join us too. Midhat was responsible for technical support. She was the one who got back to you within 1 minute when you had to ask your questions. And Aditi, finally, was the head of event logistics. Aditya is pinned there behind me. If you all could come in and all of you would be visible. And this is a proper picture moment. Right. And Aditi has joined behind Aditya. Thank you very much to the organizing committee. And now I would take this opportunity to hand over to Pratima ma'am, our assistant director, for her final few words. Thank you so much, Ishan. Well, ladies and gentlemen, to me, the sight of these wonderful youngsters standing shoulder to shoulder together and talking to the world from their respective perches in Varanasi is the validation of all the kind of things that TEDx Youth stands for. I'm sure the forum stands for unique voices. I'm sure the forum stands for unique ideas, for brilliance, for innovation, for finding your own voice, and for taking a conviction to the world. So the two-day Odyssey, and I'm almost sad that it has come to an end because there was so much of excitement around planning, around dreaming about the project, and of course, logistically aligning everything. I've had a wonderful team who has been supportive throughout, from right from the management to the staff members, most of all to enthused children. I spoke to you on day one and I talked about change. My takeaway from this two-day saga still remains the same. If the world pauses and learns to listen to voices in an unbiased fashion, if the world allows independent, original, creative ideas to be expressed without drowning them in preconceived notions of what is right, what is wrong, what will work, what will not work, and most importantly, if the world allows the younger generation to come forward, allows the free, the radical, the rebels, the different ones to all take their thoughts to the universe and plant seeds of changes, I'm sure we will all make a better world together. So change and change makers still remains my takeaway from this two-day wonderful saga of listening to people. 28 speakers, 5 different countries, and a host of ignited minds. Thank you, TEDx Youth @SunbeamBhagwanpur, for reaching out to so many and once again reiterating the fact what the Mahatma said holds true even today. Be the change you wish to see in the world. Be a change maker. Thank you. Jai Hind. Stay safe.
Ladies and gentlemen, TEDxYouth at SunbeamBhagwanpur is not a one-off show. It is an annual festival of ideas worth sharing. More importantly, this is a trend that will be taken up by our sister schools, by our sister colleges, and we hope to see you again next year, hopefully in person. Until then, our humble goodbye.